लेकिन जो व्यक्ति रह रहा है उनके आने से लेकर उनके जाने तक की चिंता अगर किसी को करनी है तो वो दीपा को करनी है। फिर चाहे वो रूम में क्लीनिंग की बात हो, चाहे रूम में ब्लैंकेट्स लगाने की बात हो, चाहे उनके लिए पानी खाना अरेंज करने की बात हो, चाहे उनके कंफर्ट की बात हो, या चाहे उनको और कोई असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो, दीपा इज द वन हु इज देयर। शी इज द वन जिनको ऐसा बोला जाए कि यू हैव टू कम एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, शी बी देयर एट 6 o'clock। और अगर उनको बोला जाए कि यू हैव टू बी हियर अंटिल 10 o'clock, शी विल बी देयर। उनको बोला जाए कि सर्टिफिकेट बनाने हैं, शी विल वेरी वेल डू इट। उनको बोला जाए मेंबरशिप बनाने हैं, शी विल वेरी वेल डू इट। शी इज अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी प्रोसीजर ऑफ द ISF। और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए दीपा इज अ बिग फिल्टर। एनीथिंग कमिंग टू मी, इट इज पासिंग थ्रू द दीपा। बहुत सारी बार कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जहां पर उनको ऐसा बोला जाता है कि ये धवल भाई को नहीं बताना, बट शी इज ट्रेन्ड टू टेल ईच एंड एवरीथिंग टू मी। ये बहुत बड़ा सीक्रेट खोल रहा हूं मैं, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीक्रेसी, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रांसपेरेंसी। बहुत सारी बार आप लोगों ने देखा होगा कि we are frequently traveling to the different part of country, और बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं कि I am out of the sector। तो कभी भी ISC की ऑफिस बंद नहीं होती है, because दीपा is there। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि दीपा मैडम रिसेंटली शी हैज कंप्लीटेड 50 years of her life, एंड मुझे ऐसा लगता है कि if someday she will say, सर अब मैं रिटायर होना चाहती हूँ या अब मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ, तो मैं तो निहत्था हो जाऊंगा। शी इज अ लेफ्ट हैंड, शी इज अ राइट हैंड, शी इज अ सोल, शी इज अ पार्टनर, शी इज अ कलीग, एंड मोर देन दैट शी इज अ फैमिली। शी इज वर्किंग लाइक अ फैमिली, नॉट लाइक अ एम्प्लॉय। सो थैंक यू दीपा मैडम फॉर बीइंग विद अस। और अब आगे की प्रोसीडिंग के लिए मैं मानसी को विनती करूंगा कि आगे की प्रोसीडिंग्स वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। Smile morning. I call Mr. Hemant Lodha to I call Mr. Hemant Lodha for Guru Vandana. Smile morning everyone. Just a crisp one. गुरु वंदना जो मैं आज महाराष्ट्र में संतों की जिसे भूमि कहते हैं, उनका एक अभंग है, एकनाथ महाराज का है, गुरु परमात्मा परेशु। ये स्पेशली ये अभंग मैंने आज इसके लिए चुना है कि इसमें बहुत छोटा है, His consciousness, faith and अभंग का मतलब है without interruption, continuous. So very close to our Sujok principles. His consciousness. Dr. Minchell Parks has said, without faith, you cannot achieve anything. So faith is the most important, his consciousness and continuous.
रा आ गुरु परमात्मा परेषु, गुरु परमात्मा परेषु, ऐसा ज्याचा दृढ विश्वासु, ऐसा ज्याचा दृढ विश्वासु, गुरु परमात्मा परेषु, देवतयाचा अंकिला स्वये संचला त्याचे घरा, देवतयाचा अंकिला, देवतयाचा अंकिला, देवतयाचा अंकिला, स्वये संचला त्याचे घरा, स्वये संचला परेषु, परेषु, गुरु परमात्मा परेषु, एका जनार्दनी गुरुदेव तेथे नाही बा संशय, गुरुदेव, गुरुदेव, देव, 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 एका जनार्दनी गुरुदेव तेथे नाही बा संशय, तेथे नाही बा संशय, गुरु परमात्मा परेषु. Dr. Rajesh Bonde for Dhanvantari Sthav. सभी को स्माइल मॉर्निंग। हम सब जानते हैं कि आरोग्य की देवता भगवान धन्वंतरी है। समुद्र मंथन उपरांत जो 16 रत्न उत्पन्न हुए उसमें से 16वां रत्न भगवान धन्वंतरी जी थे, जो अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए, और वो अमृत कुंभ यानी आरोग्य था। तो मैं कोशिश करूंगा भगवान धन्वंतरी स्तवन बोलने की। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुक् भयमृत्युनाशनम् धातारमीशम् विविधौषधीनाम्
शंखं चक्रं जलौकां ददत अमृतघटं चारोदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिवृद्ध्यां शुकपरिविलसन् मौलिम् अम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदो ज्वलाङ्गम् कटितटविलस चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिलगतवनं प्रौढदावाग्निमीडम्। ओम। Without further delay, we start with our schedule. I call Bhupinder ma'am. अगला लेक्चर है उनके रिसोर्स पर्सन है श्रीमती भूपिंदर कौर। भूपिंदर कौर अपने साथ में हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर ये विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। भूपिंदर कौर शी इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन लिटरेचर और उनके बाद में शी स्टार्टेड हर जर्नी एज अ स्कूल टीचर। During her journey, she came across to the Sujok therapy
and then she realized this is my real mission. And then she left the school teacher, and from that journey of school teacher to become a सुजोग ट्यूटर, ऐसी उनकी पूरी जर्नी रही। सुजोग थेरापी के साथ में 2004 से जुड़े हुए हैं। सौभाग्यपूर्ण रूप से प्रोफेसर पार्क के साथ में कार्य करने का भी इनको औचित्य प्राप्त हुआ है। प्रोफेसर पार्क जो से सीखने का भी इनको अवसर मिला है, और प्रोफेसर के संदेश को एज इट इज लोगों तक पहुंचाने के हमारे कार्य में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ISA नॉर्थ जोन के प्रेसिडेंट है, सुजोग गोल्ड क्वालिफाइड है, स्माइल मेडिटेशन और अन्य विषयों के अंदर भी इसी प्रकार का रिकग्निशन प्राप्त है इनको। आज के विषय के ऊपर बात करेंगे भूपिंदर कौर। Smile morning. So it is really with great pleasure and profound gratitude that I stand before you all to share my Sujog journey life, especially in teaching field, from one student to many students. This is my topic today. And actually, for the first time, I will be speaking on this kind of topic because teaching Sujog and Smile meditation subject, this is my routine subject and routine topic, but first time, so I'll share my journey. And first of all, I want to express my sincere gratitude to all our dignitaries of ISA and the global president, Dr. Mitchell Park, for honoring me and giving me the opportunity to address this distinguished gathering. So it is an honor to be part of this great event dedicated to the pursuit of knowledge and the advancement of Sujog therapy. And my humble boast to Professor Park Jae. We are here because of him, because of his Sujog discovery. And my great thanks to all my mentors, my teachers from whom I have learned this beautiful subject. Professor Park Jae, of course, he is our main guru, and then Dr. Park Mitchell, Dr. Park Main Q, and Dr. Mona Selvan, Ashok Ji, Dr. Valenta, and Dr. Mayur Jain. So, actually, this moment So this moment is truly magical as I open my heart to share my remarkable Sujog journey with all of you.
I found myself truly surprised as I gazed upon the beautiful moments in my life. And it all triggered by dear Dhavalji's unwavering encouragement to impart my insight on achieving success as a teacher in this national congress. So as I pondered my path, I dived deep into the strategies that have been my guiding light, pushing me towards the very point. It is incredible how I had never before thought so profoundly into the intricate journey of how and when I arrived at this significant juncture. In an instant, I felt as if time itself had folded, transporting me back to those days, reliving my journey like scenes from a movie, understanding what had brought me success. So, like, I never thought about this journey, and when Dhavalji prompted me to speak about my journey, and I started thinking about how I started my journey, because I never had any planning, I never had any strategy. Yesterday when I saw that some participants were receiving lecturership, TTC lecturership, and once upon a time when I got this opportunity, in that time I was blank. I did not know how to do this, how to go ahead. Of course, I had passion, but I never knew that how I will do this, because I had no plan, no strategies, and how I will continue this journey. So it was actually only in the wisdom of my later years, the key point that I grasped from Professor Park Jae-woo's teaching. His voice echoes in my ears when he said that success follows the smile spirit. The realization serves as a testament to the power of authenticity and dedication. I deeply observe that success often emerges from the genuine pursuit of one's passion and a commitment to one's journey, keeping the smile spirit in all good and bad situations. Life smiles at you when you smile at the obstacles of life. A smiling attitude has the power to bring light in the darkness. So these words were the key words of my life. And even today, even in the darkest situation of my life, I also faced many ups and downs during this journey. But Professor Park Jae-woo's one sentence, success follows the smile spirit. From just one student to reaching out to thousands today, I want to talk about how I reached this level. I will share these steps based on my experiences and insight, hoping they will enrich your own journey in Sujok therapy. In fact, you all have wonderful experience. We are here to share each other's experience. I'm learning from you, and also I'm sharing my insights with you. From a school teacher to Sujok healer, and from a Sujok healer to Sujok instructor, actually it is a chain of series. Initial days after my marriage, I was a school teacher teaching young minds, and one fine day, I got the opportunity to witness the miracle of Sujok therapy in Dr. Mayur Jain's Sujok clinic, which made me curious to learn Sujok. I got a lot of initial motivation and inspiration from Dr. Mayur Jain. I humbly go to him. I'm very thankful to him for inspiring me towards this journey. I came to realize that Sujok is a blend of magic,
divinity and perfect science. While my job as a teacher was very well paid in that time, still it felt insignificant. However, when I witnessed the miraculous effects of Sujok, Trilogen and Smile meditation, it was as if my soul's doors were flung wide open, and I experienced a profound sense of richness, as if I found a Kohinoor diamond. Each new miracle and exploration of Sujok expanded my inner joy, feeling my passion to learn more and more, helping others through this incredible Sujok science. When I dived deep into the world of Sujok, and destiny made me meet our great Professor Park Ji-woo. I attended his seminar where I was enlightened with Sujok and Smile meditation, which highly motivated me to leave school teacher job and give full time to learning and practicing Sujok. I was curious to learn Sujok, and as I studied deep, I simultaneously began practicing on patients, because I was very enthusiastic. As soon as I studied some new step, new technique in Sujok, immediately I want to practice on my patients, because I want to experience what I'm studying. So miraculously, people started experiencing healing, power of Sujok. My passion for Sujok grew each day, and it felt like magic. Every time I learned something new, I couldn't wait to put it into practice. The word of mouth spread, and as patients recovered, they recommended me to their loved ones. As patients continued to recover, news of Sujok healing ability spread to different cities. This led me to travel around the country, visiting various cities to spread the knowledge of Sujok. People became keen to know what is Sujok and how it is working. Then I started conducting Sujok awareness camps along with my healing practices. Introducing Sujok to people once again fueled my passion. With each awareness camp, the gathering grew from just a few individuals to hundreds and even thousands of people. It seemed like the universe was providing me with platform and opportunities, even without the support of media. I never had a smartphone also in that time. I was just busy in doing treatment, but my patients became my hands. One amazing opportunity that emerged was forces, the Army, Navy and Air Force. Within these services, everyone wanted to learn about Sujok or experience its healing power, from one patient to many, from one learner to many. With intense desire, I had to share my Sujok knowledge, combined with the enthusiastic interest of those wanting to learn, ignited a powerful flame of learning and healing. Luckily, I have these pictures. In those times, I was not very much keen to click pictures, but all those Sujok Army photographers, every activity they used to click to present to our Army Association under the banner of AWA. So these activities were published in those times. So that is why I could manage to save these pictures. Along my awareness camps, I attended professional seminars of Professor Park Ji-woo. And then I want to share a very precious moment. My first meeting with Professor Park Ji-woo, and I was very lucky that
that photographer in that time captured in his camera, Dr. Mayur Jain was with me. It was really a wonderful moment. In the break time, Professor Park Jae-woo, when I just met him and after a little chit chat, he asked me, Bhupinder, do you want to teach the job? But when Professor said, do you want to teach? Oh, it was very big responsibility. And I said, yes. I could not say no. Yes. And then Professor said, okay, tomorrow you bring your biodata, your papers and your activity. And that I was happy. At the same time I was scared. And that day when I went home, I prepared all my documents, collecting all my activities, all my official documents, and my husband helped me to organize. You see this file? So very systematically organized, and I also attached photographs, my studies, everything I did, and how I did, which date I did this activity, because for me it was very official time. So next day again in the break time, I went again. This is the small place, this is Jabalpur even, and a small room for Professor Park Jae-woo. In break time he used to sit there. So I was very scared. I went to Professor, I don't know what he will ask, he will take interview, and I was very much scared. So with this file, when I entered his room, I was very, very scared, and I also lost my smile in that moment because I don't know what Professor will ask. So I went, Professor Park Jae-woo, he is very keen to see my file, and this picture is captured. So he is very keen to see my file. He opened the file, but he did not pay attention to all my documents. Quickly he turned all pages, and at one glance he saw all and just few little bit information he gathered from me. Then he said, okay, I'm very glad you can teach, and now you are coming to Jaipur in next level, because in Jaipur you have to come, and there you will meet Ashok Kothari ji, so you have to stay in touch with him. So anyway, journey began, and then I came under the umbrella of Ashok Kothari ji, and under his guidance then I started working, and he guided next procedure. Now, so after all official procedures, I became a lecturer. I faced initial challenges at that time. Till now, I was a healer, but now I had the big responsibility to pass on this knowledge to students as per Professor Park Jae-woo's vision, following the guidelines of International Sujok Association. Teaching in a school was very easy for me because I had pre-existing students, I had very good building, I had very good platform. So, it was so easy to deliver the lecture because everything was available. But now, how to reach students without a school? And this question is definitely a new lecturer also, because no school, and I hope that in future under the banner of International Sujok Association we will see Sujok schools in different cities. And because I faced this challenge, teaching in a school is so easy, and now I don't have any school. How do I go? How do I tell people that I'm a Sujok teacher? So, but now, how to reach students without a school, and who would be interested in Sujok, which is a new science, and there was lack of awareness in my community circle. So, next challenge was, even I collected students then how to ask fees, because at that time money was a big constraint due to lack of awareness about Sujok as official course in that time in my environment. Though they attended these seminars,
They were taking treatment also, but it was not so easy to convince them that Sujok is an official course. Nowadays it is so easy. If people ask anything, I just tell them to go to this our international website and you see, and that association is there and all guidelines are there. So it is so easy for me to guide them and they understand that, oh, this is official course. But now, in that time, I never had that kind of website. How to tell them that this is an official, this is a certified course? This kind of challenge I had. People were ready to attend awareness camp, but not ready to attend Sujok course. And then next challenge came, how to give them opportunity to practice their learning. Even if I have done Sujok course with them, then how to give opportunity so that they can practice their Sujok. So, because also I want to share one thing. Because my husband, he was in the army and we were staying in the government houses, and in government houses we are not supposed to do any commercial activity. So because of this, I had a very tough time in those days. When I was treating my patients, lot of patients used to come in my home. There was a lane of cars, vehicles, because patients come in. And someone spread this news that wife of so-and-so is doing commercial activity in army accommodation. My husband at that time was very strict. One fine day he came from the office, he got a very good big bang scolding from his seniors that your wife is doing commercial activity in home, why she is doing? And he was annoyed and he said, pause, stop everything and you will not do Sujok now. Now these days he is with Sujok and he's supporting a lot. But in those days he said stop all these activities. And it was like a, big bang in my life because I left my school job and now my husband is telling me to stop Sujok. Where do I go? I had tears in my eyes that now I'm blank. I don't have anything to do. Of course, I don't need money in that time because I left my job. My passion was more important, and then all those situations came, and for a few months I stopped all Sujok activities. But then I was a student of Professor Pagchehu. I was listening his lectures. He always said smile. In that time I did not understand deep meaning of smile. And I remember when he used to teach universal trauma, he used to say smile in all situations. Even in the darkest of situations you smile, and very easily he could explain, and it touched my soul. It touched my deeper consciousness that when he said that we are an actor and actress playing a beautiful role on this universal stage. If you really want to change your life, suffering life to smiling life, you have to keep your smile spirits high and you have to smile anyway. So, because I did not have anything to do, I just smiled. Because no option at all, actually I will say like this, I had no option, just smile and waiting. And sometimes I was treating patients silently. When my husband went to the office, my neighbor's friends, okay, come, because my husband was very strict after that even. And quickly before he comes home, I should wind up everything. But anyway, keep smiling, keep smiling. And then, all patients who recovered from Sujok therapy, they stood near me and they approached higher dignitaries of army officials and they told them that this lady, Mrs. Chadha, she is
not doing any commercial activity. She is serving selflessly. We are the biggest proof. We are healed and she has not taken even a penny. So many people, patients, they stood up for me, and that time army official realized that now we should give one platform to her, because doing sujuk at home is not good, not advisable. Otherwise, this kind of scenario can take place again. So, because of this event, that is why there is good. Good is good, bad is also good. I realize this. So, this event took place. Because of this event, I got Sujok Center under the AWA, Army Women Welfare Association. And from that time, wherever my husband was posted, that center was ready for me. They were really waiting more than my husband. They were waiting for me. They were not waiting for my husband, because she will come and she will treat the patient. So my journey started like this. Next, so these were all the challenges, and it was not easy, because being a wife of an army officer, I was also involved in many other AWA activities. While balancing my personal life, family life and social life, I kept going with my burning passion and desire, because I could see a beautiful journey ahead of me. My unwavering commitment and tireless efforts were not in vain, as the universe showered me with recognition, honors and award from a multitude of sources. Former President, respected Pranab Mukherjee, he honored me for my social works in defense, and Professor Parkji graced me with the Smiler Award. I went through the process of gold qualification according to the rules set by Professor Parkji. Got an opportunity to attend Cyprus Smile meditation programs with Dr. Mitchell Park and Dr. Minky Park, attaining master qualification. In this journey, I was very fortunate and grateful that International Sujuk Association recognized me as the best teacher, which pushed me to next level. Each step, I would say that all challenges pushed me to next level, and all beauties, all awards. Actually, I was not waiting for award. I never expected award and any honor. It just came, and I just accepted as I was flowing with the flow of this nature and universe. Defense fraternity recognized my works, and it was a great moment when Army Wives Welfare Association AWA honored me with the AWA Excellence Award, a special distinction presented by wife of Army Chief. These awards beautifully symbolize the acknowledgement of my endeavors in spreading Sujuk awareness and conducting healing camp. Though my destination was not the award, I was just following my burning sensation, Sujuk passion, thanks to the Creator, the Almighty, Professor Parkji, International Sujuk Association, my colleagues, my patients, my students, and my dear family. And one thing I want to mention here, when I received lecturership, I was supposed to conduct official courses. I had to take fees. Oh, that was very challenging time for me, because I was very shy. I'm sharing with you freely. Official course means you have to take fees. And how to take fees? How to say that
Because before this I was just doing free services. So how to take fees? This was a big challenge. Somehow my students managed. They collected fees, they just did all these kind of activities. So students helped me a lot. And secondly, when I opened my center, I could not teach Sujok students official courses because again it was money situation, and in government places we cannot do official courses and paid courses. So we need to know how we have to go ahead still. But then among my students, many of were belonging to defense fraternity, and some of civil students were also there in that group. So I shared, they want to learn Sujok, they asked me. Now people were ready, students were ready, they were ready to pay fees, and they said, okay, we are ready, but where to teach? I have no place, I cannot teach in my home, I cannot teach in my center. So that time, civil students, again, they supported me and they said, okay, in your place it is difficult, so you can come to my home, you can take classes, and you can continue your academic courses. So this is how I was going here and there, working with army, but my civil crowd supported me a lot, and they gave me their home, their places where I started my official paid courses. I was blissfully swimming in the ocean of Sujok healing and Sujok treatment. As I dived deep, my Sujok and smile wings were getting streamlined to swim in the vast ocean. And then the universe silently opened new gates for me to match my passion and deep vast sailing. I embarked on journey that spanned across India and abroad, venturing to places. First I went to USA, Iran, Indonesia, Turkey. And here also, big challenge I want to share with you. When we go outside, especially in abroad, when we are attending their seminars, we are interacting with them, they don't accept Sujok easily. Very frank sharing, because they are followers of TCM and other therapies. But I understood that when we are with them, don't use Sujok word. What happened? In this kind of scenario, you just listen to them. Because they are talking on health subject, they are talking about diseases, and you all know when people are in the group, in the hall, under one roof, definitely, maybe they have cervical, lumbar pain, sciatica pain, though they are speaking very high about their knowledge, but they also have disease. I always keep my treatment kit in my bag, purse, small kit. Without using words Sujok, I'm waiting for the opportunity. Anyone who's saying, talking, I have this pain, that pain, and you know that Meridian Sujok Ki is very quick in giving, in handling all these kind of cases. So I'm just waiting for this opportunity. Without using this word, Sujok, pain, just give me 1 second, may I check your point? May I check your point? He's not aware of Sujok. I'm taking out my probe. I have a needle sometimes, bar magnet, all these things are there, and according to the situation, I'm putting the tools, applying the tools. And then, pain gone, is gone. My sciatica pain, oh, I was having sciatica pain. You all have experience. It is not the matter of result, it is how to enter this world. This is the main story. So, because they will not accept new science.
So after doing treatment, these people, very high in their education and in their field, result coming, my neck can move, my frozen shoulder, I can lift up my arm, and that is the time when you tell them, I did Sujok therapy. So these travels saw the inception of Sujok awareness teaching camps intertwined harmoniously with treatment camps, as I ardently shared the profound wisdom of Sujok given by Professor Park Jae-woo. So means you have to look for a patient. And secondly, I want to say that always enter these kinds of organization. Never speak, never boast about your subject in that moment. Never boast, because they will not give their hand. I've experienced this. They will not listen your subject, but in correct time, attack. So this is how I gathered so many people. This is all because of Sujok, not because of me. This is the great discovery of Professor Park Jae-woo. And you see, these patients, they did not want to listen to Sujok also. This is the incident of Istanbul, where they were not ready to listen to Sujok, but I treated one patient, then second patient, then third patient, live demonstration of Sujok treatment, and when they get the result, they are so happy, and then this time I told them after healing time, after treatment, I said, please say, I did Sujok. This is Sujok. And they accepted this beautiful Sujok, and now we have a lot of students from this place under the IC banner. I went to Iran 4 times. Again, these kinds of international symposiums conducted by various organizations under alternative medicine. Don't miss a chance. If you get opportunity, please go. Sometimes you have to pay from your pocket. Doesn't matter. When I attend these kind of symposium, they don't sponsor my ticket. They don't sponsor. I have to pay from my pocket. But it is again my burning desire. Because I want to tell these people that Sujok is so powerful. And I have to attend. Before I could show or before I could speak about Sujok, I need to attend their seminars. I have to listen their subject also. This is very important. So, all these international symposiums which I keep attending, I keep searching. Oh, here is this acutisium, acupuncture. Though I am not very much interested in learning all those fields, but I keep myself updated on all the subjects and what is happening in India and in abroad. So beautiful, you can see ladies with hijab, and I follow their tradition, wearing hijab, teaching Sujok, and working with their tradition, treating, teaching, and this is how it spreads. Different cities of Indonesia also saw the miracles of Sujok. As time gracefully saw, numerous wings were meticulously crafted to elevate Sujok to unparalleled heights. Patients and students, like powerful extensions of my hand, embraced Sujok with love and zeal, becoming instrument for Sujok knowledge, both in person and using wide range of media. So, still now, I don't know this media, though I try to upgrade myself to know all the strategies in this present era, because we have to, learn to march with present era. We should know all strategies. But in that time, I was just going naturally, as if that this universe was my media. This universe was my
online all activities done by him. So, oh, this is the Indonesian army, because my husband had army background, so he could easily contact them and he could easily make connection with the Indonesian army. And then again, not just teaching Sujok, because I want to show that how Sujok is working in the seminar hall. Anyone has pen? This is my first question. You have pen? Please come. I want to show now. So I used to show first when this anyone getting result, their eyes are widely open and they are ready to listen Sujok. So this is how we touched Indonesian army. And now I want to tell that we have many students from Indonesia under ISA banner. USA, one of my very close friend from India. So she learned Sujok and then she started practicing in USA. She created a very beautiful aura of Sujok healing. But again, USA is not simple country. USA will not, because very strict rules and regulations are there. You have to, really you have to do some legal, you have to, that fulfill legal formalities to do this kind of activity. But somehow, I don't know how it happened. Again, Sujok miracles, Sujok treatment result. I was able to touch again many people, and in those times, I touched Miami, Los Angeles, New York, New Jersey, Boston, Washington, many students from these places, many patients from these places, again because of Sujok miracles. So what I want to say is that don't hesitate that what one person can do. In Sujok, when we are studying a level 1, very beautiful lesson on seed therapy. One seed can create big tree. One seed can create millions of fruits and next generation and next generation. So that is why if you give good environment, when I say good environment means mentally ready. Under this environment, your Sujok burning passion will sprout and whole universe will support you. Life's harsh winds sought to shatter my soul. I stood firm, resolute and unwavering on my journey, a determination and boundless enthusiasm. A world paused by the grip of COVID-19, a turning point emerged, a time when everything seemed shuttered and all activity came to a halt. Yes, deep within, the inner Sujok child, enthusiastic like a curious child, remained eagerly awaiting a fresh opportunity to embark on a miraculous Sujok journey. I held a steadfast belief that the universe had a new plan. But in that time, again, I remembered universal drama. Professor Parkje who said, smile, COVID time, smile, okay, what should I do? Because I was doing so many activities, and this COVID time, it was like pulling chain of a fast running train. What to do? Because if I don't use this fire, I will burn myself. I am full of that fire. I have to do it. And then I started in that COVID time with people were busy with meditations and all. For me, meditation was opening Professor Parkje's notes, reading all notes, writing notes, reading all his books once again and receiving good messages and waiting for my next plan or universal plan. What universe will present to me? Because Professor, I'm smiling.
I'm not sad, so you will give me a new role. I was waiting for this. Smile, smile, smile. Then what happened? Sujok Global online platform. With joyful determination, I delved into mastering the art of, Then, like a beacon of hope and announcement echoed forth from ISA, the inauguration of Sujok Global online platform, and from here, new chapter, a new journey started. With joyful determination, I delved into mastering the art of online engagement, eager to connect with my patients and students in this virtual realm. Almost miraculously, as I introduced, after a big pause because of COVID time, it was a silent zone, and after a big pause when I introduced Sujok online classes for the first time on this platform, maximum student registers, near 80-90, maximum students registered immediately. Seeds sown in the past were now beginning to sprout. It was a wondrous occurrence, a manifestation of what felt like infinite blessing from the universe. I immersed myself in acquiring the latest technique of online teaching and communication. I'm very thankful to Dhavalji. He taught me all techniques again and again. We are calling Dhavalji, please teach me this. This is not, I'm not getting this, what to do, how to do. So all the time he helped, all the time, and also got guidance from Dr. Minchuppa. I learned how to operate this system, and now I'm very friendly with this system. So my workload expanded, and it was during this time, because in this time my husband was retired. My husband, Major General S.S. Shadda, retired from Army, joined me in supporting this monumental endeavor. Through online classes, students from every corner of India joined our Sujok community, our ISA global platform, foregoing connections that transcended geographical boundaries. The ripple effect of our Sujok global online presence extended far beyond our expectations, reaching diverse parts of the world. In this flow, I touched Iraq, Netherlands, Spain, Brazil, Germany, Pakistan, Mauritius, Saudi Arabia, Singapore, UK, Denmark, Mexico, Mauritania, Austria, Holland, New Zealand, France, Switzerland, USA, Iran, Turkey, Indonesia, etc. This expansion was not a momentary phenomenon. It continued to flourish as we shared the profound wisdom and healing power of Sujok with an ever-expanding global audience, and it continues to do so to this day. And I'm very thankful for this beautiful online platform. Today I play, I dance, I enjoy on this platform. It's like I am in my joyful classroom. I don't have fear of government organizations. I don't have, in that time I had a lot of fear because I cannot take class in my government rooms and centers. But now this platform, I'm free. Even in a small place I can teach joyfully. I don't need big place, and just with small place I can touch infinite number of students. So while looking back my real life story, I have outlined all those challenges individual may face, and I want to share all those strategies I learned in my journey in reaching here. These are experiences based on my life journey, but I know that you all have new experiences, new ideas, and collectively we can adopt and we can grow together. So first challenge I faced in teaching journey was that how do you know what kind of audience would be interested in Sujok, and probably they are unaware about its existence. And
along with all our personal endeavors, we need to adopt, like Monisha ji told very beautifully. Yesterday's class was very enlightening. She introduced very beautiful techniques of marketing. So in present era, we need this for sure. It is required. Yes. So now I'm learning this. This field is not, I'm not very active in this field, but yes, I'm highly motivated by Monisha ji. So I will try my best, and maybe next class, when I stand on this dais next time, I will tell you that how I did this marketing, and I want to learn this technique also. So, now, like in today's digital age, as Monisha ji told you, utilizing online platforms such as websites, social media, Facebook, Instagram or Twitter and other forums, share your information, your tips, your success stories related to Sujok therapy. So this helps people learn about it and builds your online presence. So I introduced technology and marketing into my life at this stage now. But I encourage you, because you have, yesterday you received beautiful TTC certificate, but I encourage you to embrace them along with all traditional techniques from now only. In today's fast-paced world, technology is essential, and if you have the passion for it, don't hesitate to learn and incorporate it into your life. At present, I am expanding my knowledge on this aspect by attending various marketing webinars. Ask your satisfied clients to review or testimonials on your website, on social media, positive feedback. This can attract your patients and students. Now, this is my technique. So when students perceive you as a knowledgeable and reliable instructor, they are more likely to enroll in your classes. That is why it is very important to work on practical ground. When people see your practical results, they will get fascinated, and then they will start referring more patients around them, which will further awaken their desire to learn Sujok themselves. This will add credibility to your teachings. So, also, this is for new lecturers. Yes? Don't think that from tomorrow you will get official paid students. We cannot stop. We have to start from now. Whenever you get opportunity, social gatherings, neighbors, friends, family, religious gathering, just find the opportunity. Introduce Sujok. Either by doing treatment, if they are ready to listen, just introduce to them. So whenever there is a conversation about health or disease, jump on the opportunity to introduce Sujok and treat them immediately with whatever resources you have at that moment. This is the main tip, because if we can bring smile on patient face, they will never forget you. And this is like knocking Sujok spirit in them. So that is why Professor used to say that Sujok spirit opens gate towards him. Organize introductory lessons, sessions, or enroll yourself as a speaker in health and wellness seminars happening around you. So as I said, that not always as a speaker. You have to keep very good awareness what is happening around you. I am very much alert that here some health program is going on. Though it is not related with Sujok, but just enter all these kind of forums where there are discussions on health. So even birthday parties, some friends function, anniversary parties, and marriage parties also, just one small opportunity can change your life.
just one, if we miss that, we will miss big blessings. So these kinds of, this is one factory people. They have, that in corporate, that they have wellness related lectures. So try to introduce yourself and try to create your opportunities. You have to enter this world. We have to put our feet in their shoes, and then only we can introduce Sujok. So this is Army establishment under our Army Women Welfare Organization. We have a very special works related to welfare, and because in that time all people have experienced miraculous results of Sujok, and it was very natural that they started inviting me on various occasions related to health and mental fitness. This is the hospital, military hospital. So just went to visit, and just visit, no patient, but more often I keep going to military hospitals and I meet patients. I share music, smile music. I sometimes forward smile mantra music to patient. I tell them few Sujok tips, just simple way, meeting and greeting patients, and then all opportunities are following. And after that, I was invited to many army hospitals, seeing beautiful results, people smiling, patients smiling, and also many. And now when I was practicing in Delhi Camp, Sujok Clinic, my Sujok center was near Army Hospital, the biggest hospital of India, that is RNR Research Center and Base Hospital. So from there, doctors used to recommend, for example, people have sciatica pain or lumbar pain or neck pain, so doctors would recommend that you please go to this Sujok center, and we don't have much time, please go there. And also in their lunch time, all nurses having this is very common problem with nurses, lumbar pain. I don't want they should have pain, but still I wait that they should have pain, not because I want to give pain, because I want to introduce Sujok. So they would all come and they will take treatment. This Sujok also in army campus, within army hospitals, it has become very popular because of this. So these are soldiers. Everyone want to listen now. What is Sujok? What we can do with Sujok? And the best part is, after doing welfare, this kind of lectures, don't leave the stage. Call patient on the stage. And because now you have team, and alone you cannot treat so many people. So with your team, stand on the stage and invite people. You have pain, you have come. So then only this promotional seminar will take new shape. So this is the opportunity. Whenever I get opportunity on health forum, I just go ahead and just introduce. So as an educator, it is also important to actively communicate, impart our wisdom and personal experiences to our students. So it is not just about reading from books, it is also about sharing our real life Sujok practical examples that can help students understand better. So our own life lessons with proof can make what we are teaching more meaningful and relevant to them. So we should create an environment where students feel comfortable providing feedback by actively seeking input and making improvement based on their suggestions. We can demonstrate our commitment to their learning experience. Awaken Sujok and smile spirit in them. Tell stories of professor to them, because I am sure that you must have heard from your teacher about professor said this, professor said that. So underline that
word and without adding your word, never add new word in that sentence even though there is a grammatical mistake. As it is, tell these professors quotes to your students. It is very important. For example, one sentence can change my life. Sujok spirit open gates towards him. Success follows the smile spirit. All these kind of sentences are very precious for us. So when we are learning Sujok, always underline when our teacher says, Dr. Valada says, Ashok Utharji says, Professor said this, underline that. Underline that. And then meditate on this sentence, because Professor Parji's small sentence has big meaning. And when you will grow, you will understand on each level. As per the level of our consciousness, we will understand the depth of that message. One time this message, next year maybe the same sentence, but message is very deep. So, yes, happy and satisfied students can become your best advocates. This is very important again. So we have to teach with joyful spirit, smiling spirit. They should leave the class with smile. When students experience the benefit of Sujok therapy and your effective teaching with smile spirit, they are likely to refer friends, family and colleagues to your classes. Even if you have just one student, give your best in teaching. Go to extra mile, because they can become a way to reach more people through their praise and recommendation. One student can change your life. That is why one seed can create big tree. You never know, among 4 students, among 20 students, or just one student can open new doors. So we are not waiting for 100 students. Initially, if you get one student, please don't compare with that teacher or that teacher. If I get 10 students, then I will teach. If I get 20 students, 50 students, then I will teach. No. Just one student says that I want to study IEC certified course. Just go ahead and teach that one student with your heart and soul. Put all your smiles and encouragement and energy in that student. You never know that can create many. So, till now we were figuring out how to attract students, but now question is how to retain them. This is also important, because after teaching some period of time, we have to make sure that after finishing the classes, you have to stay with students in the form of revision sessions, clearing their doubts, questions. It's not about our showing slide after slide and imparting only theoretical knowledge. It's also about making an interactive sessions and showcasing live practical sessions. And I remember that how Professor Parjevo, after introducing new topic, immediately he will call patient on the stage. Come, anyone has faith? Come. I was just this lectureship, I also implemented the same technique. Come. Once you teach new lesson, invite patient on the stage, and this will give confidence to you, and also this will give confidence to your students. So, Professor Parjevo used to call volunteers on stage to showcase live demonstrations of treatment protocols and give live results, and it was great motivation for us. Treating in front of our students motivates our students and awakens the zeal within. So this is practical. So self-activity. This is for new our lecturers. So
conducting live demonstration during practical sessions. We are boosting students, inspiring them, and this hand-on approach will help them visualize and experience what they are learning. So these are all practical sessions, making interactive learning with materials using technology, notes, or giving them opportunity to discuss within selves, make groups, give them different problems to solve and help them through. So check the task and help them to correct if they did wrong. So as time has progressed and technology has evolved, I've had to adapt to current trends. This means incorporating tools like overhead projectors and professional presentations. I even used pre-recorded videos sometimes to demonstrate Sujok treatment on patients, providing visual aids to help students grasp concept faster. So these methods serve as effective means of retaining knowledge. So I learned all these kind of, using cameras, especially when you're teaching online. It's not just on the screen. So I have all kind, I try to focus when I am purchasing, I try to focus what is the latest technology, how I can show practical demonstration. So all these tools we need to have in these days. Because in online we have to be very particular so that we show correct point on the hand, we show correct drawing on the hand. So, and then along with digital modern technology, do not forget roots of old teaching methods. Use models, dummies in your explanation, demonstrations, which enables to connect with your students. Because on soul level, because you see when you show handmade dummies, they feel very much, they connected with you. So like you see this kind of dummy, I just wanted to explain about chakras when I was teaching 6 key. I wanted to show front chakra, back chakra, left chakra, right chakra. So to give them that visualization, I'm all the time thinking that what dummy I should create, what craft work. I enjoy doing craft work rather than technology, but now I said yes, we need both. So create some dummies and hand models so that your students can feel very close to your teachings. So it is very important to demonstrate practical skills whether we are taking classes online or offline using live hand-on practice or dummies. So this hand-on experience help reinforce our students' learning and understanding of the subject matter. Give opportunity to students to explain Sujok. Now, this is again one event in Indonesia where I was teaching Sujok, and they were very happy to participate in interactive sessions. Yes, better we take out from them. For example, if I say this hand is similar to human body, middle 2 fingers are legs, and now next you tell. Side 2 fingers, they will say, what is this, what is this? So, involve them so that they take maximum participation and also you are not tired. And then, now, not only that we speak on the stage to give confidence to your students, it is also important that you give them opportunity so that they can also speak on the stage. Not always talking about self, or not just you or we or I, just give awareness, conduct awareness camp. When we know that this student, because when we are teaching people, when we have a group of students, while interacting, we know which kind of spark is inside them. Some students can become very effectively push them under the umbrella of ISN TTC, and I feel very proud to see
when TTC lectures, many of my students, I will not say, I see we have to grow collectively. Confidence, and also people should see that your student is very good. In treatment camps, we cannot do big treatment camps, we cannot do with one hand. We need many hands. That is why we have to train our students in such a manner that practically when we hold treatment camps, big treatment camps, they can participate actively. And sometimes when we have big camps, like in army, whenever we have big camps, we have thousands of patients. So we have to give, we are, result oriented. This is result oriented camp. We have to give result for sure. That is why I try to make groups. And that this group is very good for this disease and this group is very good for this disease, so that on the reception when people are signing, patients are signing, they know that they should go to this group, this is cervical expert, this is knee expert, or this is, so this is how we do it, because camp is just for 2 or 3 days. We have to we don't need to just finish the patient. When we finish our camp, the seeds should sprout. So I keep conducting lectures for our students how to treat in the camp. For example, step 1, you know that 5-step treatment is done. Step 1, you know that 5-step treatment is magical treatment. Yes? So when patient comes to you and you have just correspondence knowledge, sometimes one step, first step of 5-step is enough to treat many diseases. But then if you know 5-step, we are firm that with this level 1 knowledge, I know that in this treatment camp, I have to follow 5-step procedure. People, those who are good with meridian Suzuki, we give the task. So idea is that to treat, it is not just teaching. We are teaching students for a purpose that these students should help me when I am doing treatment camps. And they should definitely produce positive results. And then we have to give environment to our students so that they can treat patients in front of you. It is also very important, otherwise they will not get confidence. In home, they will just get 1 or 2 patients. Husband, wife, brother, sister, children. But if you see the spark of healer in them, give them environment, create environment, and so that these students can practice and can do treatment when it is required. We can see without presentation also no problem. So when we are teaching, we have to recognize that students vary in their ability to grasp the material. Some will catch on quickly, while others may need more time. Some will fully absorb the subject, while others may struggle. So encourage and appreciate them in all situations. Acknowledge the diversity of consciousness among your students. Treat each one with respect, love and smile, and above all,
nurture their enthusiasm for learning Sujok so that they remain committed and they don't give up. Because when we are teaching, housewives are there, sometimes people from labor class is also there, doctor field is there, so many kind of people are studying Sujok, and so we have to keep eye on everyone. And continuously expanding our knowledge and for self-improvement, it is also very important that we keep ourselves updated by attending all educative programs under ISA. We have to join sometimes. You know, if you have to really empower yourself, sometimes listening the same subject again and again can help you to raise your consciousness. Like, for example, Dr. Violeta, if she announces any course, even I have done before, I would like to listen again and again. If Ashok ji is announcing any course, I would love to listen him again and again. So it is very important that you continue your studies and don't stop, because every day new research is going on. Every day new research is going on. And here, oh, I want to tell this thing also, because when we are taking programs and teaching, because intellectuality, too much of intellectuality is also sometimes little suffocating. So in mid of the seminar, sometimes I do smile meditation, some twist gymnastics, neck twist like this, so that their energy is uplifted. So many times we have to do this kind of activity, sometimes cracking jokes, clapping, music. So in the break time, even you are studying such complex subject like 6 key, yes? So it is very important to keep this joyful environment. When their energy is uplifted, they are smiling, and in smile energy, they will understand quickly. And then, never hesitate in learning from our colleagues. Students also. Students are our best teacher. When they don't get result, we know where I have to work. So that is why we have to keep our eyes open and ready to receive from all directions. Time is short, but before I end, I want, because from there anyway. So this is friendly relation. We have to keep friendly relation with our students, because if we are friendly with them, then they will interact, they will not hesitate to ask questions, and in this friendly relation we can grow more. This is all friendly relation, and I told you that we have to continue learning, we have to learn also, building a supportive Sujok community, because students, patients, colleagues, we have to stay together, and for this togetherness, we need a roof, we need umbrella, and that is why we are blessed. We are very lucky that we have International Sujok Association. Yes, so under this association, we are very powerful. Now I feel pride in this association. When I go to abroad, I go to different parts of country, I proudly introduce my association. And this is how, you know, because initial days I told you I had a lot of difficulty to introduce Sujok course, because there was no website and no association. And now we have to bring all. If our community is strong, yes, this strength is also your strength, my strength. Publicity in those times, you know, because you see, when you are teaching many people, you will always have one person who is connected to media. So encourage them so that he can participate in this, doing this kind of activity, publicity like this. Listener. Be a very good listener. As you progress in the world of Sujok, it is also very essential to stay informed about other alternative discipline and health related forum. Become an active
active participant, a receptive listener within these communities. Show appreciation for their contribution and demonstrate respect for their respective fields. We have to, Professor Bagdev used to say that we respect all. We respect all. By engaging in these diverse areas, you will have the chance to showcase the miraculous aspect of Sujok and share your expertise. Seize even the smallest opportunity to unveil the wonders of Sujok treatment through live demonstration, allowing Sujok to shine through your actions. Sujok has the potential to become the shining jewel in the crown of healing world. And now, at the end of this session, I want to say a small poem. In the realm of Sujok, let's aspire, aim high, and set your soul on fire. It is not just a lesson, but a journey to explore the power within to heal and restore. Unlock the secrets of this healing art with dedicated and earnest learning to be a part. Guide your students on the healing quest. Let Sujok magic bring out their very best. In hand and feet, Professor's great discovery lies. The power to heal. The Creator's gift in disguise. With each gentle touch and Sujok, grace lies. Word of well-being, you will keep embrace. Teach your students with endless passion. Let your brilliance shine, revealing the wonders of Sujok Divine. Thank you. Thank you, ma'am, for the beautiful ideas and explaining the power of smile. Now I would like to call Sujok therapist Ujjwal Agrawal to greet Bhupinder ma'am. Asha aunty and Shata aunty, please be on stage. Kakak tamu aja kakak. Teaching Sujok in the field, as always, you having a challenge that how you prove yourself, you are authentic, you are about the lecturer, you can teach. Because that we made platform of ISA, and also because that we made platform which is online education platform. When you're teaching your class in ISA online platform, you no need to prove yourself who you are. Who can teach in online platform? Only the lecturer. But see, people don't understand of the what's about you, how you can prove yourself, who you are with together. Please stay with ISA. Probably talking about
I am member of ISA, I am lecturer of the ISA, and then you just teaching in online our Sujok Global Platform, no one will asking you, are you certified? No one, because this is the just automatically proved. Please understand, there is still so many lecturers not practiced in our online platform. We know. We all in the listening from who are teaching in the where and that. But please come. We made that platform for you, not for the ISA. We know ISA support our people. It becoming our value and becoming our brand. Please join our online platform too. Don't spend energy for unnecessary prove yourself you are the lecturer. So that I really appreciate for the Upindaji. She pointed the right point about that, how she approved, and then because that she could reach it to the many other countries. If 10 countries, she need to explain, I am the lecturer, I'm the lecturer, I'm lecturer. But online platform, no need. Then she could expansion for the many other countries who don't know what is Sujok even. So thank you very much again for your work. And then please I request again, don't spend unnecessary energy to prove yourself. Okay? Working in the ISA. Thank you. Our next session is of Ashok Kothari sir, unlocking the potential of Sujok therapy in management of metabolic syndrome. Now I would like to call Sujok therapist Shubha Maheshwari ma'am to introduce Ashok Kothari sir. Smile afternoon. I don't think Ashok sir needs any introduction. Does he? Anyways, in a very small summary, I'll try to. Ashok sir is a Sujok Gold qualified, is highly distinguished and accomplished Sujok lecturer, hailing from Jaipur. With a master's level qualification in Sujok, he stands out as a prominent figure in the field. With an impressive track record of over 2 decades, Sir possesses extensive experience in both Sujok therapy treatment and imparting training in the specialized field. His dedication and expertise have earned him a reputation for excellence in teaching and remarkable public relations skills. I think we all have experienced it. As an invaluable member of the International Sujok Association, Sir serves in several key positions, demonstrating his commitment to advancing the field and contributing to the community. He currently holds the esteemed position of Vice President in ISA India, showcasing his leadership qualities, abilities and dedications to the organization's growth. Furthermore, Sir, at the forefront of the ISA's global initiatives, he leads the publication department of both ISA India and ISA Global, underscoring his passion for knowledge, dissemination and the importance of sharing advancement in Sujok therapy worldwide. Additionally, his involvement in the steering committee of the ISA Global reflects his active participation in shaping the organization's strategic direction and fostering collaborations at an international level.
With an illustrious career spanning numerous achievements and contributions to the field, Ashok sir is undoubtedly an invaluable asset to the world of Sujok therapy, leaving a lasting impact on his students, colleagues, and our entire ISA community. Thank you. I ask sir to take over now. Hello. Ismail Abdul. अभिनंदन मेरा और क्या प्रेफर करेंगे, अंग्रेजी में, हिंदी में या who have applied these all techniques on myself and people around me. So type 2 diabetes and the insulin resistance and everything we can step by step we can discuss how we can practically go through this all aspect in a simpler manner as well as using the advanced techniques of Sujok also. तो सारी बात करें, लेकिन उसके पहले थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग यहाँ पर आए। मैंने तो बोला, आपको हमेशा कहता हूँ, you all are my inspirations. I am not your inspiration, you all are my inspiration. और भूपिंदर ने तो बहुत अच्छी तरीके से बताया, being a good teacher is a journey actually. It is not a starting point and you become one day a great teacher. And in the one day also you cannot, from the first level standard you cannot become a graduate in one day actually. So it is a learning curve actually. So it is learning curve, and Bhupinder has very rightly and very in detail how to go through this learning curve. And this learning curve, the most essential part of this learning curve, आखिरी में मैंने, क्योंकि आपको TTC भी मैंने ही लिया है और बहुत सारे नए टीचर्स भी हैं, उनके बारे में इसके बाद में कुछ कहना चाहूंगा मैं, लेकिन डेफिनेटली है टू मास्टर द सब्जेक्ट, टू बिकम द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट इज द मोस्ट essential ingredient of becoming a good teacher. Until you are master of the subject, whatever technique you use, whatever promotion you do, it will work for the short term, but in the longer term, you will not succeed. So, mastering the subject is the main important ingredient to become a good teacher, and rightly, Bhupinder is a living example before you, all of you. She is a living example before you. So, okay, I told you, this is unlocking the potential of Sujok therapy in management of metabolic syndrome. So before I start, let us all pay tribute to the great master or beloved guru, Professor Pagjo. Because of him, I am here.
Because of him, you all are here, and we, not only today, but we are together as a Sujok fraternity because of only him. So I have been blessed enough, like many of you, to learn directly with him, have his blessings, and to feel his consciousness, and not only at that time, but continuously feeling his consciousness. So only because of his grace, the person of my caliber, मैं तो कुछ आता भी नहीं था सही में, मैं सुजोग में जब आया था मुझे कुछ नहीं आता था, बिल्कुल। आप तो शायद अभी जिन लोगों का आपका लेवल है उससे मेरा लेवल बहुत नीचे था, लेकिन मैंने कहा था ना गुरु का ग्रेस होता है, हमारा तो हिंदुस्तान में कहते भी है, गुरु का ग्रेस है और एक स्पिरिट होना है कि छोड़ना नहीं है, पीछे पड़ जाना किसी चीज के, छोड़ना नहीं, तो उस ग्रेस से हम आगे बढ़ेंगे। So definitely who created this wonderful science of Sujok, not only Sujok, Triverging, Smile meditation, everything created. So we all definitely need to pay our heartfelt tribute to our great master. So metabolic syndrome. You can manage from there also. So मैं जब बोलूँ आगे का तो आप नेक्स्ट कर देते हैं। तो कितने लोगों को मालूम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम? कम लोगों को मालूम है या सबको मालूम है? कम लोगों को मालूम है। तो बात करते मैंने जैसे आपको बताया था, मेटाबॉलिक सिंड्रोम अपने आप में कोई रोग नहीं है, ये बहुत सारे कंडीशंस हैं which cause two certain morbid conditions like heart disease, type 2 diabetes as well as stroke. They create platform. If you do not manage these syndromes, you are bound to suffer from those morbid conditions which are very difficult to treat even and very life-threatening also in those conditions. So metabolic syndrome, अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करती है, तो उसमें सबसे बड़ी जो पहली इंपॉर्टेंट बात है वो है वी कैन से इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपरग्लाइसेमिया, insulin resistance. It is one of the most important conditions thought to be considered by WHO, World Health Organization. They consider the type 2 diabetes या insulin resistance या hyperglycemia is one of the most important condition, precondition to consider that person is suffering from the metabolic disorder. लेकिन over a period of time, last 20 years, this definition has been changed a lot. समय समय के साथ में इन्होंने फर्दर इन्वर्स किया और कोविड के बाद में जो जनरल अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में है, पोस्ट कोविड they again thought that what should be considered the most important aspect for the metabolic syndrome. So one important aspect, they studied about the patient post-COVID conditions and then patient after vaccination dying in even after post-COVID there are several casualties. So all those data they collected, and by this collective data
हेलो collective data, they came to know the one single most important cause of metabolic syndrome might be dyslipidemia, that means obesity. Professor
So metabolic syndrome, जैसे मैंने बताया, it is a cluster of conditions that occur together, increasing risk of heart disease, stroke and type 2 diabetes. That means this is a conditions which lead to those conditions. And if we do not manage those conditions, they can definitely finally turn to these conditions. These conditions include increased blood pressure, hypertension. One condition which is leading to the metabolic syndrome, one is hypertension, high blood sugar, that means hyperglycemia or insulin resistance, excessive body fat around the waist, and I specifically written visceral fat, and finally irregular cholesterol level. Irregular cholesterol level means high triglycerides, high LDL level, low HDL level. यानी अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम है और जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा है। ये कंडीशंस है, क्लस्टर ऑफ कंडीशंस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें से केवल एक हो जाए आपको तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाए। लेकिन अगर एक है तो आप रिस्क जोन में है, और आपको दो कंडीशन है, यू आर मोर इन द रिस्क जोन, एंड इफ यू हैव मोर देन 2 देन यू आर फाइनली डायग्नोज्ड एज ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सो ये डेफिनेशन मेटाबॉलिक सिंड्रोम की है। Having just one of these conditions doesn't mean you have metabolic syndrome, but it does mean you have a greater risk of serious diseases. It does mean you have a greater risk of serious diseases, and if you develop more these conditions, your risk of complications such as type 2 diabetes and heart disease, stroke rises even higher. अब ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट के अंदर समझाने के लिए कर दिया है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज डायग्नोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 कंडीशन। कितनी होनी चाहिए? ये 4 में से 2 कंडीशन होनी जरूरी है। और अब आप खुद भी अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि 4 में से 2 किसको है। अगर 4 में से 2 आपको है, यू शुड बी केयरफुल बिकॉज दीज कंडीशन कैन लीड टू दी मोर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इन योर लाइफ। सो पहली कंडीशन कौन सी है? सेंट्रल ओबेसिटी। ये लेटेस्ट मैंने बोला कि पोस्ट कोविड researchers have found that obesity is one of the most important condition, and apart from the obesity there are more criteria because inflammation chronic inflammation play a major role in the obesity also। लेकिन सबसे जरूरी सरल भाषा में, लेमन भाषा में, नॉन टेक्निकल भाषा में अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम को समझना है तो पहली तो है सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी यानी ओबेसिटी अराउंड दी एब्डोमेन, बिकॉज वो जो एब्डोमेन है के साथ में आपकी ओबेसिटी है वो विसरल फैट बनाती है। सबक्यूटेनियस फैट है, आपका स्किन के नीचे फैट है, इट इज नॉट दैट डेंजरस। लेकिन जो विसरल फैट है, जो आपके ऑर्गन लीवर के चारों तरफ, आंतों के चारों तरफ, वो जो विसरल फैट है वो आपके लिए बहुत डेंजरस है। तो ये सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं उसको। हाई फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, मैंने बोला इंसुलिन रेजिस्टेंस कह दो, लेकिन उसका लिए मेजरमेंट का ये फास्टिंग ग्लूकोज आपका हाई होना चाहिए। अगर फास्टिंग ग्लूकोज आपका ज्यादा आना शुरू हो गया है तो इसका मतलब यू आर मीटिंग वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। फिर हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड लो एचडीएल लेवल, मैंने बताया ना, खराब वाला कोलेस्ट्रॉल तो ज्यादा हो यानी एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो, और एचडीएल यानी अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो, तो ये इसको आपको डिसऑर्डर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल लेवल हम इसको कह सकते हैं। और चौथा एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। ये 4 कंडीशन है, क्लस्टर ऑफ कंडीशन। उसमें से अगर आपको 2 है, यू आर डायग्नोज्ड एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर्सन। इनमें से 2 है। पहली बात मैं आपको समझा दूं, बीइंग थिन इज नो गारंटी दैट यू डोंट हैव मेटाबॉलिक सिंड्रोम, because being thin is one of the criteria, not the only criteria. Being thin, even you can have high cholesterol load. ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो ही सकता है ना आपका। और अनफॉर्चुनेटली एथनिक पॉपुलेशन की बात करें तो साउथ एशियन पीपुल आर प्रीडिस्पोज्ड हैविंग मोर फैट कंटेंट देन एनी अदर एथनिसिटी। हमारे को एशियन लोगों को तो खाने पीने का शौक ही रहा होगा, शुरू से ही रहा होगा, पूर्वजों को मिला, क्या करें। तो साउथ एशियन लोगों का जो बॉडी फैट का जो कंपोजिशन है, ओवरऑल बॉडी फैट कंपोजिशन इन अदर एथनिसिटीज इट इज अराउंड 17%। कितना परसेंट है?
body fat का composition, it is around 17%. And South Asian population, South Asian, not only Indian, South Asian population have average 25% composition of body fat. तो कितना परसेंट ज्यादा है? 8% ज्यादा है. तो 8% ज्यादा है तो हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की रिस्क फैक्टर एज कंपेयर टू ज्यादा है. और आपको तो मालूम ही है, अब तो नॉन फैक्ट है, इंडिया इज बिकमिंग द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट कंडीशन बोथ. और डायबिटीज और हार्ट कंडीशन दोनों के लिए प्लेटफॉर्म कहां से तैयार होता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम से. तो इसलिए जरूरी है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पहले सिग्नल हमारे को मिले, we started to give any of those conditions, we should be alert and start managing those conditions. In summary, the central features of the metabolic syndrome are insulin resistance, visceral adiposity, atherogenic dyslipidemia, and endothelial dysfunction. ये ओबेसिटी वाली मेन ओबेसिटी. सो इसको हम क्या कहते हैं? एप्पल शेप. और दूसरी कौन सी शेप है? ईयर शेप. तो कौन सी खतरनाक ज्यादा है? आपको क्या लगता है? विच इज मोर डेंजरस? एप्पल शेप. एप्पल शेप. एप्पल शेप फैट इज ऑन द एब्डोमिनल एरिया विच कंटेन्स ऑल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. तो ये विस्कल ओबेसिटी है. इसमें सारा फूलों पे या कोई ऑर्गन नहीं है, स्किन है, सबक्यूटेनियस फैट है, तो इसलिए वो ज्यादा इतनी खतरनाक नहीं. तो ये मैंने आपको बताया कि ये कैसी ओबेसिटी है जिसको हम पहचान सके कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली ओबेसिटी है या नॉर्मल ओबेसिटी. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्राइटेरिया. सबसे जरूरी बात, हमको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में ट्रीटमेंट की बात करें उसके पहले उसकी सीरियसनेस के बारे में जानना जरूरी है. वी मस्ट बी वेरी सीरियस अबाउट दोज कंडीशंस because metabolic syndrome is mainly caused by an imbalance between calorie intake and energy expenditure. अगर हम करेंगे तो कैलोरी इनटेक ज्यादा तो अल्टीमेटली वो किसमें कन्वर्ट होने वाला है? फैट में कन्वर्ट होने वाला है. और हम इंडियन लोग तो पहले ही फैट का कंपोजिशन ज्यादा लेके घूम रहे हैं. और पहले से ही अगर फैट का कंपोजिशन ज्यादा लेके घूम रहे हैं और हम फिर हमारी कैलोरी को अगर कंट्रोल ना करें तो और क्या होने वाला है? हमारा फैट का कंपोजिशन एवरेज इंडियन से भी ज्यादा होने वाला है. एवरेज इंडियन से ज्यादा होने वाला तो हमारा रिस्क जोन जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का है वो और बढ़ने वाला है. इट विल गोइंग टू वेरी हाई आल्सो. सो लेकिन ये समझने की बात है, इट इज ए लाइफस्टाइल डिजीज. मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज नॉट ए लाइक ऑर्डिनरी डिजीज विच कॉल्ड पैथोलॉजिक कंडीशंस. इट इज लाइफस्टाइल डिजीज. And lifestyle disease cannot be treated by medicine. And therefore, Sujok plays a very important role because I say Sujok is a lifestyle medicine. तो lifestyle disease है, तो lifestyle medicine से ठीक होगी नहीं होगी. Sujok is not a medicine like normal. We have the criteria for the medicine. Sujok is lifestyle medicine. But of course, हमको यहाँ rational approach है. Whenever, because we are dealing with a medical subject, we are in the field of medicine, so always our approach should be rational and logical. इसका ये मतलब नहीं है कि हम सुजोग पे फुल्ली डिपेंडेंट होकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम को टोटली सुजोग से क्योर कर सकते हैं. नेवर. If you are not changing your lifestyle, if you are not changing your habits, if you are not losing weight, if you are not doing exercising, then not possible. But with your will, with your readiness to change your lifestyle, Sujok can provide additional strong help. Not only additional help, additional strong help to realize your efforts in a more successful manner. ये आपके एफर्ट्स जो आप करते हैं, अगर आप लाइफस्टाइल के चेंज भी करें, सुजोग को भी यूज करें, तो आपको सक्सेस होना मुश्किल नहीं है. और उस केस में मैंने बोला कि सुजोग के साथ में लाइफस्टाइल को चेंज करके हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स कर सकते हैं. अभी आप पे डिपेंड करता है हम कैसे रिवर्स करें, ये बात करेंगे. तो ये मेटाबॉलिक, हाउएवर इट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस मैंने बताई है, इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज द जेनेटिक. दो लाइफस्टाइल कंडीशंस के भी दो फैक्टर है, मैनेजेबल, नॉट मैनेजेबल. We have certain conditions which are manageable
our diet is manageable, our lifestyle, that means activities and exercise and everything, it is manageable. But then there is genetic conditions also causing the metabolic syndrome. So mostly not manageable. So there is a combination of manageable and not manageable condition. But I mean to say that अगर manageable के साथ में अगर सुजोग को अगर हम combine करें तो it can provide a very important tool for. और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको लिखा, however it is also a complex pathophysiological process influenced by factors such as genetic, epigenetic structure of the individual, a lifestyle with lack of movement, that means lack of exercise, a quality and balanced diet, and the most important, intestinal microbiota. आजकल तो बहुत सारी नॉलेज बढ़ी है इसके बारे में. Gut health is the most important criteria to keep metabolic syndrome under control. हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करते हैं तो ओबेसिटी पे ध्यान देते हैं, हम शुगर पे ध्यान देते हैं, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट पे ध्यान देते हैं, लेकिन गट के ऊपर तो कोई सोचता ही नहीं. अगर गट के ऊपर आपने सोचना शुरू नहीं किया और गट पे आपने नहीं सोचा और गट की हेल्थ के ऊपर आपने काम नहीं किया तो आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल में नहीं आने वाली, आपका हाइपरटेंशन भी कंट्रोल में नहीं होने वाला और आपकी ओबेसिटी भी कंट्रोल में होने वाली. सो गट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the management of the metabolic syndrome. ये गट पे तो ध्यान देना जरूरी है. और unfortunately our changes in the diet have caused the maximum damage to our gut. हमारे ट्रेडिशनल फूड थे, हमारे जो पुराने थे उसके अंदर फर्मेंटेड फूड भी था, कभी हम कांजी बनाते थे, कभी बासी रोटी खाते थे, कभी और कुछ खाते थे. अब उसको डिस्कार्डेड, आउट ऑफ फैशन और उसको खाना बंद कर. उससे हुआ क्या है, सबसे ज्यादा डैमेज किसको हुआ, हमारी गट की हेल्थ. तो ये प्रोबायोटिक जो हमारे को ऑटोमेटिकली हमारी फूड कंडीशन से मिलता था, रात के बचे हुए बासी चावल सुबह छो के खा लिए. अब कौन खाता है, कोई खाता है क्या? पहले खाते नहीं खाते थे, रात की बची हुई पराठा या रोटी सुबह आपने खा ली. और इडली या डोसा वगैरह जो बनाते थे वो फर्मेंट करके बनाते थे. जलेबी बनती तो किससे बनती थी, फर्मेंट करके बनती थी. अब तो सादा वो इनो मिला दो और हो गया फर्मेंटेशन. वो इडली तो बन गई लेकिन इडली के न्यूट्रिएंट उसमें नहीं बचे. प्रोबायोटिक का है. सो विदाउट हैविंग प्रोबायोटिक फूड यू कैन नॉट गारंटी दी गुड हेल्थ. प्रोबायोटिक तो नेसेसरी, प्रोबायोटिक नेसेसरी है. तो गट हेल्थ के बारे में बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट के अंदर हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं. लेकिन ये ट्रस्ट है जो बात मैं कहना चाहता हूं. अगर आप आपकी गट की हेल्थ को, आपके वेट को अगर मैनेज नहीं कर पाते, अब वेट को मैनेज करने के लिए गट को हेल्थ को मैनेज करना पड़ेगा. आप कितना भी दौड़ लगा लो, कितनी भी भाग कर लो, आपका गट ही आपके साथ नहीं देता है. गट साथ नहीं देता तो ब्रेन साथ नहीं देता है. ब्रेन गट एक्सिस पढ़ते हो ना आजकल, ब्रेन गट एक्सिस कितना इंपॉर्टेंट काम है कि गट की हेल्थ के बिना ब्रेन की हेल्थ नहीं मैनेज कर सकते. गट की हेल्थ के बिना पेनक्रियास को आप मैनेज नहीं कर सकते. तो ये गट की हेल्थ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करें और मैंने बताया मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल बात है. और सबसे जरूरी बात है जो ओबेसिटी की बात है. ओबेसिटी इज द सेंट्रल टू द मेटाबॉलिक सिंड्रोम. ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सबसे जो मुख्य कारणों में से एक है वो ओबेसिटी है. और नॉट ऑल ओबेसिटीज आई टोल्ड यू, बट ओबेसिटी इन एनी केस इट इज डेंजरस. आई एक्सपीरियंस. सब लोग मुझे रोज कह रहे हैं आप तो सिगरेट जा रहे हो, सिगरेट जा रहे हो. आई रियलाइज दैट इट इज सो डेंजरस. अर्लियर आई यूज्ड टू एंजॉय माय ओबेसिटी एक्चुअली. खूब खाओ पियो मस्त हो, बिकॉज आई हैव नो प्रॉब्लम फिजिकली, नो हाइपरटेंशन, नो डायबिटीज, सो आई थॉट टू टेक इट इजी. मैंने सोचा बिल्कुल इजी रहो, क्या फर्क पड़ता है, वेट बढ़ता बढ़ने तो क्या फर्क है. आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ with the greater weight, but over a period of time I realized that when I speak from the stage over here I should demonstrate what I speak. जो बोलूं उसको डेमोस्ट्रेट भी करना जरूरी है ना, करना जरूरी नहीं करना. और मैं आपको ओबेसिटी के बारे में लेक्चर दूं और मैं खुद, तो मेरे लेक्चर की कोई वैल्यू है क्या उसके अंदर? If I cannot control my obesity, then how can I preach you to control your obesity? Not possible. तो मैंने मेरी obesity को खुद को कंट्रोल किया ही आपके सामने एग्जांपल है. Still my journey is going on
because I still lost only 24 kgs, only. And yes, with the help of lifestyle changes and Sujok, not alone lifestyle changes, not alone Sujok, lifestyle changes coupled with Sujok, I lost 24. And maybe when we will next time 10 kilo निकालने की इच्छा है, 10 kilos, 10 kg more. ये क्या रुक जाओ, मोनिशा कहती है बहुत है. Anyways, I mean to say that it is working. I mean to say it is working. ये काम करता है और ओबेसिटी सबसे ज्यादा खतरनाक है. मेटाबॉलिक सिंड्रोम को तो मारोगे नहीं. आप इस टर्म को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन ओबेसिटी से होने वाले नुकसान से कोई ऐसा है क्या जो वाकिफ नहीं हो इस क्लास के अंदर? सबको पता है, उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं. मैं अगर आपको पता है कि ओबेसिटी इतनी नुकसानदायक है, आई रियली वांट टू टेल यू, विद ओबेसिटी यू कैनॉट एंजॉय द लाइफ. You simply cannot enjoy the life. अगर लाइफ को एंजॉय करना, जितने भी लोग प्रीवियस अशोक की कैटेगरी के यहाँ बैठे, पहले वाले अशोक की कैटेगरी के यहाँ बैठे, just pay attention. It is not difficult. You have to challenge with yourself. आपको अपने आप से चैलेंज लेना है, ये करके दिखा देना है और हो जाता है ऐसी बात. तो ओबेसिटी की बात करें, और ओबेसिटी मैंने बोला कि ओबेसिटी को कंट्रोल कैसे करें पहली बात, और मैंने शुरू में कह दिया it is mathematics. Obesity is mathematics. If your calorie intake is higher than calorie output, तो वो क्या होने वाला है? डिपोजिट ही होने वाला है. और डिपोजिट किस फॉर्म में डिपोजिट होगा बॉडी में? डेफिनेटली गोइंग टू बी डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ फैट. तो फैट को अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको कैलोरी कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा. कैलोरी कंट्रोल डज नॉट मीन स्टार्वेशन. इसका मतलब नहीं कि भूखे मरना है. इसका मतलब ये नहीं कि डाइटिंग करनी है. हाउ टू ईट, व्हाट टू ईट, इसके बारे में हम चर्चा भी नहीं करेंगे. कभी अलग बात होगी, खाली ओबेसिटी की बात करेंगे तो करेंगे, लेकिन पेट भर के खाना, क्योंकि भूखे कितने दिन रह जाओगे? 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 4 महीने, अल्टीमेटली तो खाना पड़ेगा. तो यू कैन नॉट स्टार्व फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट इज ओनली हाउ यू मैनेज योर डाइट. आपको पेट भर के खाना है, लेकिन कैलोरी के साथ में ध्यान रखना है. तो कैलोरी कंपाउंड को ध्यान रखना है सबसे बड़ी बात. अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के बारे में ओबेसिटी कैन लीड टू सेवरल कंडीशन, और हमको ये मालूम है कि ओबेसिटी के लिए एनर्जी की बात करें तो कौन सी एनर्जी ओबेसिटी है? आप सब लोगों को पता ह्यूमिडिटी है. अब ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने वाली कौन सी एनर्जी है? विंड है. तो ऑर्गन कौन से हुए? ह्यूमिडिटी का ऑर्गन कौन सा हुआ? स्प्लीन हुआ. और विंड का ऑर्गन कौन सा हुआ? लीवर हुआ. तो अगर कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम अलोन से अगर आपको ओबेसिटी पे काम करना है तो कौन से एरिया पे आपको काम करना है? स्प्लीन एंड स्टमक कॉर्स्पोंडेंस एरिया विदाउट कंसिडरिंग एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड को, क्योंकि ओबेसिटी कैन बी कॉल्ड बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, और दूसरे कारण भी है, तो इसके साथ भी हो सकता है पीसीओडी. इट कैन ऑल्सो लीड टू ओबेसिटी. बहुत सारी कंडीशंस है, लेकिन अगर सरल तरीके से बात करें, स्प्लीन एंड स्टमक कॉर्स्पोंडेंस एरिया विदाउट कंसिडरिंग एंडोक्राइन ग्लैंड. बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स थायराइड, पिट्यूटरी, समटाइम्स ओवरीज एंड एड्रिनल आल्सो इंपॉर्टेंट. तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. सप्रेसिंग एपेटाइट बाय डायरेक्शनल यूज ऑफ, समटाइम ओबेसिटी इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड एपेटाइट. बहुत लोगों को होता है बहुत अनकंट्रोल्ड एपेटाइट. तो आपने कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम में कोर्सेज किए हुई है, हम टेक्निक बताते ना, नीचे से चालू कर दो, ऊपर से बंद कर दो, मुंह पे ताला लगा दो, नीचे का रास्ता खोल दो. टेक्निक है नहीं अपने पास में कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम में. लॉकिंग द माउथ, यानी सप्रेस कैसे करना, ओबेसिटी को कैसे सप्रेस करना, कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम से इजीली कर सकते हैं. प्रोमोटिंग बाउल मूवमेंट, कॉलन एक्टिविटी बाय डायरेक्शनल यूज ऑफ सीड्स. ग्रीन कलर के सीड्स को आप कॉलन की डायरेक्शन में लगाएं, ग्रीन सीड्स को, तो ग्रीन विंड एनर्जी, एंड यू कैन अप्लाई ग्रीन कलर सीड्स ऑन द एंटायर कोर्स ऑफ द कॉलन. तो वो आपका मूवमेंट, बाउल मूवमेंट को इंप्रूवमेंट करने वाला है. इंप्रूविंग मेटाबॉलिज्म, वो अलग से बात करेंगे कैसे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना है. कंट्रोलिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये अलग से बात करेंगे, बिकॉज इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रीकर्सर फॉर द ओबेसिटी. ये मैं आपको एक ही बात करता हूं, यू कैन हैव thousands name of the diseases, thousands of the name of the disease medically, but if you want one cause of all those thousands of diseases, it is only and only one. We call it chronic inflammation.
सारे रोगों की जड़ कौन सी है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। सो इफ यू वांट टू ओबेसिटी एंड स्टेबल, जो जिद्दी नेचर की कोई ओबेसिटी है, तो डेफिनेटली यू नीड टू पे अटेंशन ऑन दी इन्फ्लेमेटरी मार्कर ऑफ योर ओन। अगर आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, टेस्ट करवा के देख सकते हैं, अगर वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर अगर बढ़े हुए हैं तो यू नीड टू वर्क अपॉन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आल्सो, दैट मींस टू कंट्रोल क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। यू आर सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, और ये सब रोगों की जड़ है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। आप एग्री करेंगे भी करेंगे, मेडिकल वाले फील्ड जो भी है वो एग्री करेंगे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कितना है। एक्चुअली इन्फ्लेमेशन हैज बीन आवर फ्रेंड, इन्फ्लेमेशन इज आवर फ्रेंड because this is protecting from the all this outer attack or dangers to the body. But ये जब हमारा जो फ्रेंड है वही हमारा एनिमी बन जाए, वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। हमारा फ्रेंड हमारा प्रोटेक्टर है, हमारा प्रोटेक्ट करने वाला हमारा एनिमी बन जाए तो वो क्या हो गया? वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। उसकी भी बाद में बात करेंगे, और 6P के अंदर तो बहुत जरूरी नहीं। The biocoordination system we know how to use control obesity, and see all this knowledge is not created by my own, my teachers, Dr. Violeta, or my great master Professor Tajo, who have given those indications during their lecture. I am only copying them. आपने सुना होगा, क्लास में भी मैं हमेशा बोलता हूँ, I am just delivering in the inverted commas of my teacher. I am not adulterating anything from my side. मेरी तरफ से इसके अंदर कोई एडिशन नहीं। Out of experience, I will share my experiences with you, but knowledge is pure carried forward. ये प्योरली कैरिड फॉरवर्ड है। तो कॉर्स्पॉन्डेंस सिस्टम से हम वो ऑर्गन्स के ऊपर, ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो इसमें इन्वॉल्व है, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन 6P डेफिनेटली प्लेज ए मेजर इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल दी ओबेसिटी, एडिपोज टिश्यूज जो हमारे हैं, उसके कंट्रोल के बिना आप काम चलेंगे नहीं। अब उसके बारे में बहुत सारे आपको अप्रोचेज है, ब्रांच लेवल अप्रोच है, इंडिविजुअल लेवल अप्रोच है, और यूनिफाइड अप्रोच है। If you are suffering only from, for example, your body fat composition is not high, only you are suffering from the cholesterol, high cholesterol level, that means you have problem on the lipid level, on the blood lipid level. So blood lipid level पे आपको काम करना है तो ब्रांच लेवल पे काम करना पड़ेगा, और ब्रांच लेवल पे क्या काम करना पड़ेगा? कौन सी ब्रांच में काम करना पड़ेगा? कौन सी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा आपको? आर हीट पे काम करना पड़ेगा। आर हीट के ऊपर काम करके ह्यूमिडिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वेट को बढ़ा सकते हैं। ह्यूमिडिटी मोस्ट डोमिनेटिंग एनर्जी है ही है ओबेसिटी का। ये ब्रांच की बात हुई, अगर ब्रांच लेवल के ऊपर है, कभी कभी यू नीड टू कंबाइन ब्रांच लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल, समटाइम यू नीड टू कंबाइन ब्रांच लेवल एंड यूनिफाइड लेवल ऑल्सो। लेकिन कहने का मतलब है आपको काम करना पड़ेगा, और इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट का निकालना पड़ेगा, बिकॉज देयर कैन बी different constitution. There can be constitution heat, hotness, humidity, that means hotness constitution, it can be hotness, humidity, dryness, that means humidity constitution, it can be humidity, dryness, coldness, that means dryness constitution. Individually आपको analyze करना पड़ेगा जो supporting लोग साथ में, but definitely in each case humidity is involved, humidity समय involved। तो ह्यूमिडिटी पे आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स दिस सॉर्ट ऑफ हॉटनेस लेवल कैन आल्सो कॉज ओबेसिटी, हॉटनेस कैन आल्सो कॉज ओबेसिटी। तो हॉटनेस की ओबेसिटी, ह्यूमिडिटी की ओबेसिटी, लेकिन ओबेसिटी में एक जो कॉमन फैक्टर है वो ह्यूमिडिटी है। तो 6P के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? ह्यूमिडिटी एनर्जी जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस डोमिनेटिंग एनर्जी के साथ में जो आपका स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट का बनता है, ह्यूमिडिटी सेडेशन, विंड टोनिफिकेशन, अगर एक्सेस मेथड से कर रहे हैं, very simple, you can do humidity sedation, wind tonification, hotness sedation। अगर दोनों को आप एक साथ करना चाहते हैं तो दोनों को आप कंबाइंड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। So you can apply 6P treatment along with corresponding treatment to control obesity। तो मैंने बोला कि अगर आपने obesity को कंट्रोल कर लिया, so I think you have done 50% to control metabolic syndrome। ये आगे काम, आपने obesity को कंट्रोल कर लिया, आपका हाइपरटेंशन ऑटोमेटिक कम आ गया। आप जिसको भी हाइपरटेंशन हो, मेरे कहने से बाकी कुछ करो ही मत, 5 किलो वजन कम कर लो, यू रिड्यूस योर वेट 5 kg, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है विदाउट एनी मेडिकेशन पॉसिबल। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी,
लेकिन आप पतले हो और ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, देन देयर इज अनदर क्राइटेरिया, इट इज अनदर क्राइटेरिया। लेकिन ओबेसिटी के साथ में अगर हाइपरटेंशन है तो खाली ओबेसिटी को कंट्रोल करने से आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो दे आर ऑल कोरिलेटेड विद ईच अदर। ओबेसिटी को आपने कम कर दिया तो आपका फैटी लिवर ठीक होना शुरू हो जाता है, आपका फैटी लिवर ठीक होना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी को कम कर दिया तो फैटी लिवर ठीक होना शुरू हो जाता है, तो आपका शुगर मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें इंटरविंड है, तो यू कैन ट्रीट एनीथिंग लाइक दैट। सो अगेन एवरीथिंग सेड, obesity is lifestyle disorder, so necessary to adopt healthy life। ये तो बहुत जरूरी है। अब कोई भी ट्रीटमेंट, any treatment, whether it is Sujok treatment or any other treatment, it is not working if you are not changing your lifestyle। अब lifestyle change में क्या करना है? You need to move। आप दौड़ लगाओ, आप जॉगिंग करो, आप स्कीपिंग करो, आप कुछ करो, आपको मूव करना है। आप बैठे बैठे अगर काम करना चाहते हैं तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस बनेगी। तो मूव मोर एंड डू एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज करें, दूसरी एक्सरसाइज मसल्स एक्सरसाइज करें। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाउ टू इंप्रूव मेटाबॉलिज्म। मैंने कहा मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम से ही मेटाबॉलिज्म सकर है आपका, योर मेटाबॉलिज्म इज नॉट परफेक्टली वर्किंग, इट इज वन ऑफ द कॉज फॉर द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सो लिवर, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, अभी बताएंगे मुझे सारा कैसा कोरिलेशन है आपस के साथ में। अप्लाई बेथी सीड्स ऑन लिवर एंड इंटेस्टाइन, so this improving the health of liver and your gut, it is very important to control the metabolism. Treating inflammation, we will discuss later how to treat the inflammation. Whenever inflammation is also one of the cause for the metabolic syndrome or the obesity or any other condition, तो inflammation तो बहुत जरूरी है। बेसिक एनर्जी ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। अप्लाई कैनरी सीड्स ऑन लिवर कॉस्मेटिक्स एरिया, बहुत यूजफुल है। प्रोमोटिंग क्लींजिंग ऑफ द लिवर, लिवर की हेल्थ के लिए जरूरी है। अप्लाई डेंडेलियन प्लांट रूट लीव्स ऑन लिवर, ये वो सीड्स है ना जो सीड्स यूज होते हैं थेरेपेटिकली। सीड थेरेपी का यूज है ना, कौन सा सीड किस डिजीज में यूजफुल है उसी ऑर्गन के ऊपर उसका सीड लगा दो। तो ये डेंडेलियन प्लांट रूट और लीव्स ऑन लिवर, हेल्दी लाइफस्टाइल। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये मैंने आपको बताया था शुरू में, बोला कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बिना हमारा कोई भी गाड़ी नहीं चलने वाली। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हर बीमारी की जड़ है। कितनी भी बीमारी नाम ले लो मेडिकली उसकी जड़ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। ये chronic leads to several diseases that collectively represent the leading causes of disability and mortality worldwide, such as cardiovascular disease, cancer, diabetes, chronic kidney disease, non-alcoholic fatty liver disease and autoimmune neurodegenerative disorder। ये इन्फ्लेमेशन की वजह से सारा। कितनी कोई डिजीज होती है क्या उसके अंदर? सारी खतरनाक बीमारियां आ गई उसके अंदर। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी आपको मालूम है, इट इज कॉल्ड पैराडेमिक। वर्ल्ड वाइड मेटाबॉलिक सिंड्रोम को पैराडेमिक की कैटेगरी में रखा है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में इसका प्रेवलेंस और ज्यादा है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में। और ये सबसे आज की तारीख के अंदर सबसे मैटर ऑफ कंसर्न है मेडिकल फर्टिलिटी के लिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एड्रेस करना। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। One of the most important medical discoveries has been that the immune system and inflammatory processes are involved in not just a true select disorder, but a wide variety of mental and physical health problems, including metabolic syndrome. ये रिसर्च की बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये सारी रिसर्च की बात है। ये रिसर्च की बात है कि किस तरीके से ये इन्फ्लेमेशन और इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन से इम्यून सिस्टम भी कंट्रोल हो रहा है आपका, वो भी उससे कनेक्टेड है। तो इन्फ्लेमेशन और इम्यून सिस्टम कलेक्टिवली दे कैन आल्सो डेमेज योर मेटाबॉलिज्म। Therefore, controlling inflammation is of utmost importance to protect from the threatening conditions and leading a healthy life. तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, तो अब इन्फ्लेमेशन को कैसे करना? पहले ओबेसिटी की बात करी, अब इन्फ्लेमेशन को देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन को कैसे कंट्रोल करें? पहले तो ऑर्गन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। अगर वो लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन है, लीवर में अगर इन्फ्लेमेशन है तो आपको मालूम है लीवर का सिस्टम कैसे बनाए, इन्फ्लेमेशन यानी हीट, तो उसकी तरफ से उसके ऊपर काम करें लोकल लेवल पे कॉस्मोलस एरिया। इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द सिस्टी और एडवांस मेथड ट्रीटमेंट, नथिंग टू बी वरीड अबाउट दैट। उसके बारे में चिंता करने की बात ही नहीं है। क्यों? मैंने तो बोला एक बात कॉस्मोलस, आपको प्रोफेसर प्रावु के एलिवेटर का बोलता हूं कि कॉस्मोलस सिस्टम नेवर फेल्स। कॉस्मोलस सिस्टम नेवर फेल्स, ये प्रोफेसर प्रावु के वर्ड्स है, ये हमारे वर्ड्स नहीं है। The most majority of the diseases can be simply treated by the use of the cosmosis system, लेकिन अच्छी तरीके से।
अच्छी तरीके से यूज करेंगे, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट यूज करेंगे, स्पेशली यूज करेंगे तो उसमें कर सकते हैं ऑर्गेनिक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, स्प्लीन थाइमस कॉस्पेंडेंस एरिया, लीवर ब्रेन कॉस्पेंडेंस एरिया, then bathe the seeds on the abdominal cavity, entire abdominal cavity. Sabja seeds, very good, very good. Sabja seeds, they are anti-inflammatory. Sabja seeds are considered anti-inflammatory. So sabja seeds can be applied on the cosmetic area of the intestine. अब यहाँ पर एक important बात है. Inflammation is technically heat energy. But actually, if we are talking about the chronic inflammation, if we deep inside the chronic inflammation, pathogenesis of the chronic inflammation, it becomes sometimes destructive, so it is more of the dryness energy. वो cause क्या है? Cause is inflammation, लेकिन result is what? Dryness energy. So inducing heat, आपको मैं I need your attention. I am talking some contradictory. People think inducing heat is contradictory to the inflammation, but for chronic inflammation, inducing mild heat is reducing the inflammation. तो इसीलिए उसके लिए सबसे सरल तरीका कौन सा है? आपको क्या लगता है? How to induce heat in the body to improve the entire level of the inflammation in the body? सबको कोई ध्यान आता है कौन सा सबसे सरल तरीका है? Basic energy treatment. Basic energy treatment. So basic energy treatment, you need to think about the organ. You need to think about any pathology condition. It is improving on the inflammation all over the body. So पूरी body के अंदर inflammatory marker का है, तो ये इसको आप कहेंगे. तो applying crushed massage of hand and foot correspondence area है, general hand and foot massage and everything we can use. So ये inflammation को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बारे में थोड़ी और आगे बात करेंगे. हाइपरग्लाइसेमिया में इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये तो अपना मेन कारण है, ये वन ऑफ द मेन कारण है. अब इसको कारण करने के लिए जब हम इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, डायबिटीज और प्री डायबिटीज की बात करते हैं, तो हमारा सारा फोकस किस पे आ जाता है? पैनक्रियास पे. लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि पैनक्रियास अकेली कुछ भी नहीं कर सकती. पैनक्रियास के अकेले ट्रीटमेंट करने से कभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं होता. सबसे पहले तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मेन कारण क्या है? एडिपोज टिश्यूज. उसकी वजह से सेल्स के अंदर आपकी शुगर लेवल, शुगर जो सेल्स को एब्जॉर्ब करना है वो नहीं करता है इंफ्लेमेटरी मार्कर की वजह से, और ब्लड का शुगर लेवल आपका बढ़ता है. तो आपको इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करेंगे, ओबेसिटी कंट्रोल करेंगे, तो डेफिनेटली इंसुलिन के ऊपर इंसुलिन रेजिस्टेंस उसका फर्क पड़ने ही पड़ेगा. लेकिन इनडायरेक्टली ऑल्सो इफ यू नीड टू वर्क अपॉन इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, यू नीड टू वर्क अपॉन सेवरल लेवल्स. किस किस पे काम करना पड़ेगा? ब्रेन आइसोलेट. ये देखो किससे, ये जो इंसुलिन की ये जो आइसोलेट्स है, जो इंसुलिन का जो टेल पार्ट है जहाँ पर फिंगर एंड आइलैंड्स जो हमारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड्स यहाँ पर मौजूद है, सेल्स यहाँ पर मौजूद है, इसका इंटरेक्शन बॉडी में किस किस ऑर्गन के साथ? ये ब्रेन आइसोलेट एक्सिस. So you can see just as insulin exerts its effects on other organs and tissues, other organs interact with the pancreas to moderate insulin secretion. One of these interaction organ is the brain, which comprises the mutual brain axis that interacts with the pancreas and vice versa. तो पैनक्रियास को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन को आपको ट्रीटमेंट करना इंक्लूड करना पड़ता है. सेम वे लीवर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वो तो हम जानते हैं लीवर का और पैनक्रियास का इसका ज्यादा इंटरेक्शन है, और मैंने शुरू में बताया गट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. गट आइसोलेट एक्सिस, यानी इफ यू वांट टू वर्क अपॉन इंसुलिन रेजिस्टेंस, you need to work upon 3 organs: pancreas itself, then liver, then gut, and then finally the brain. तो 5 स्टेप ट्रीटमेंट के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं कॉस्मेटिक सिस्टम में. इन कॉस्मेटिक सिस्टम भी कैन इंक्लूड इन दी 5 स्टेप ट्रीटमेंट को. और 6 के हिसाब से भी 6 के हिसाब से आप पैनक्रियास पे जाकर, पैनक्रियास से जाकर आप पैनक्रियास में आप जा सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू. यू कैन रीच टू द पैनक्रियास, और या हॉटनेस एनर्जी के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू भी यू कैन रीच टू
unity. Then finally you go to the Langeran Iceland, and then you can treat their dryness sedation, heat tonification, humidity sedation, wind tonification, whatever constitution you wear, and at the 6 key level also you can treat. पर मैंने कहा कि 6 key level को ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं if you are aware with the 6 key. If you are not aware with the 6 key, even then you can treat by cosmetic system alone all those conditions. Very simple. ये देखो यार, ये सारा जो है how to control diabetes, diabetes exercises हम क्लास में सिखाते हैं आप लोगों को. Correspondence area of pancreas, especially iceberg part and liver adrenaline massage. Apply fresh turmeric slice first right relic on pancreas and liver correspondence area. ये वो जो किस तरीके से ब्रेन और पेंक्रियास और गट आपस में किस तरह से उनका आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो बहुत जरूरी बात है. ये तो बहुत जरूरी बात है कि उसको कंट्रोल करना. आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सेट, मैंने नाम ही इसका कर दिया सेट. It makes people sad. सबको उदास कर देता ये. तो stress is also causing inflammation in the body. Anxiety, stress, and all these conditions they lead to the inflammation. और inflammation से मैंने बोला chain of the disease is caused by the inflammation. Chronic stress can wreak havoc on your mind and the body. The long-term activation of the stress response system and too much exposure to cortisol and other stress hormones can disrupt almost all body processes, including metabolism. तो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए सिंपल टेक्निक आप लोग जानते ही हैं. और जो टेक्निक सुजोग के अंदर हमारे पास सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है. हाउ टू स्ट्रेस का आप कॉस्मेटिक सिस्टम की बात करें, लेकिन स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने का दूसरा तरीका है नहीं हमारे पास. कौन सा तरीका है? स्माइल मेडिटेशन. सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम आप लोगों ने कभी, मैंने कहा अभी दूसरी बातें बताई, कॉस्मेटिक सिस्टम की बात की, हमने 6 की बात की, अभी एक मुद्रा के बारे में बात और करेंगे इसके बारे में. लेकिन जो जरूरी बात है, अगर 3 चीजों का अगर आप कॉम्बिनेशन कर दे, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन कर दे तो थिंग्स कैन बिकम मच सिंपलर देन यू थॉट. और वो कौन सी 3 चीजें? इट कवर्स लाइफ स्टाइल ऑल्सो. आपकी लाइफ स्टाइल भी उसमें कवर होगी. फर्स्ट, यूज दी सुजोग कॉस्मेटिक सिस्टम और व्हाटएवर थिंग यू वांट. नंबर 2, सेम एंड डॉ. तो आपकी लाइफ स्टाइल की चेंजेस वाली जो मेरी एक्सपेक्टेशन आ गई थी अभी, यू आर मूविंग द बॉडी, you are moving the and the smile meditation. So combination of sujok, combination of Samendong and combination of smile meditation is your short for controlling metabolic syndrome. ये आपका short है metabolic syndrome को कंट्रोल करने का. तो जिन लोगों ने Samendong नहीं सीखा है वो Samendong सीखो. It will also control your obesity. It will also control your stress, anxiety and everything. So you can make combination of Samendong, sujok and smile meditation. ये जो जरूरी बात है मैं इसके बारे में बात करता हूँ, वेगस नर्व के बारे में. ये तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर ये लेटेस्ट जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में मेटाबॉलिक सिंड्रोम में. ये पहले इसके बारे में नहीं माना गया. अब तो वेगस नर्व के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं एवरी डे वी गेट न्यू इंफॉर्मेशन एंड वेगस नर्व प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम. यू सी दिस इज लाइक वी कैन सी इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस इंपॉर्टेंट. So conclude करने के पहले मैं यही बताता हूँ, vagus nerve functions as a major communication. Vagus nerve is a two-way communication between brain and gut. ये हमारे के बीच में 2-वे ट्रैफिक है. ये वहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ से इंफॉर्मेशन वहाँ, और उसके बीच में पूरा बॉडी, उसके बीच में लीवर है, हार्ट है, सारा कम्युनिकेशन चैनल है. It is a major communication channel between brain and the gut. ब्रेन और गट के बीच में. तो मैंने अभी आपको शुरू में बोला मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन और गट को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा. और ब्रेन और गट के बीच का ये जो कम्युनिकेशन है, 2-वे कम्युनिकेशन है, इट इज पासिंग थ्रू अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आल्सो. उसके दूसरे डाइजेस्टिव ऑर्गन के साथ भी है. तो वेगस नर्व के कम्युनिकेशन, सी मेनी डिसऑर्डर्स आर नाउ सपोज्ड टू बी कॉज्ड बिकॉज़ ऑफ डिसऑर्डर ऑफ vagus nerve. So medically also they are now giving vagus nerve stimulation, electronic stimulation. They give stimulation. So vagus nerve functions as a major communication channel between brain and periphery and regulates feeding behavior and metabolism. There is a relationship between apparent vagus nerve activity and impaired metabolic and immune regulatory obesity. The vagus nerve intervene
innervating the gut plays an important role in controlling metabolism. It communicates peripheral information about the volume and type of nutrient between the gut and the brain. So ये वेगस नर्व को आपको कंट्रोल करना, उसके बहुत सारे तरीके हैं और वेगस नर्व को मैं एक तरीके से आपको बता सकता हूँ कि वेगस नर्व एक पूरा लंबा पाथवे और कॉम्प्लेक्स पाथवे। आपको जब तक एनाटॉमिकली अंडरस्टैंडिंग पूरी बॉडी की अच्छी नहीं हो, वी कैन नॉट नो दी हाउ द वेगस नर्व इज ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग एट व्हाट प्लेस, बट डेफिनेटली वी नो इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो मेडुला का कौन सबको मालूम है, कॉस्मोनिक सिस्टम है, एंड देन थ्रू नेक इट इज पासिंग डाउनवर्ड्स, it is reaching up. So you can give massage to your neck area and including medulla oblongata to stimulate the vagus nerve by cosmotic system. Cosmotic system से कैसे stimulate कर सकते हैं? Medulla oblongata and then move down to the neck area, especially this lateral part of the neck, and you give a deep massage every day and you stimulate vagus nerve. Vagus nerve was stimulated. Even you are not having metabolic syndrome. I started lately stimulation of vagus nerve, and I can feel change definitely. So you can also, even without having any disease, you can give this try to vagus nerve stimulation by the cosmotic system. And of course we can use Siski also. You know this classification, Siski classification of vagus nervous system, and then peripheral nerves is hotness, and then another this somatic and motor fibers, and then we have this classification of the cerebral nerves, craniocerebral nerves, and it is like here it is dryness. So dryness. So short formula. This is short formula. Siski short formula. Dryness in hotness of hotness. ये short formula है vagus nerve by Siski. Dryness in hotness of hotness. So now what you do? Disorder of vagus nerve is what? Either it is dryness excessive or it is coldness excessive. So you can do heat excessive dryness sedation. Heat tonification dryness sedation by Axis method in vagus nerve by Siski method, or you can do hotness tonification if you are thinking that your vagus nerve is not very healthy, it is very sick. In that condition, hotness energy is to be worked upon. So you can do hotness tonification, coldness sedation in dryness, in hotness or hotness. This is 6 key chain of the vagus nerve. So ये vagus nerve के through, finally, out of all this, if one point I need to emphasize about controlling the metabolic syndrome, there is one is vagus nerve and another is your gut health. One is vagus nerve and another is your gut health. So therefore, you need to pay attention on the this condition of the vagus nerve by Siski treatment. Or I told you, even you don't know Siski, not to be worried about it. अगर आपको आता है अच्छी बात है, आप कर सकते हैं. तो Siski treatment के लिए सबसे जरूरी बात है Siski not simply applying the treatment. It is consciousness. उस consciousness के साथ में treatment करें तो आपको रिजल्ट आता है. नहीं तो कई बार आपको वो भी वैसा ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं भी ऐसा ट्रीटमेंट करूँ, आप भी ऐसा ट्रीटमेंट करें, आपसे तो पेशेंट ठीक हो रहा है, मुझसे हो ही नहीं रहा. सेम फार्मूला, सेम कंडीशन, एक व्यक्ति से काम करता है, दूसरे से नहीं करता है, क्योंकि इट इज मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस. ये कॉन्शियसनेस का इन्वॉल्वमेंट इसमें थोड़ा होना जरूरी है. तो इसलिए अगर आपका कॉन्शियसनेस आपको अलाउ करता है, इफ यू हैव दैट टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, यू कैन रीच बाय दिस मेथड. लेकिन उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है. मैंने ये अप्लाई किया है और मैं आपके एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ हाउ टू स्टिमुलेट वेगस नर्व बाय कॉस्मोनिक सिस्टम. वेगस नर्व का स्टिमुलेशन आप कॉस्मोनिक सिस्टम से भी आप आराम से कर सकते हैं. इसमें किसी तरह की कोई तरह की मुश्किल नहीं है. तो ये हमारा ड्राइनेस इन हॉटनेस ऑफ हॉटनेस वेगस नर्व के बारे में प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन. आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ऑलरेडी है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी. आप चाहते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है तो और भी सरल है, उसको यूज करने के लिए तो हमारे पास में इतनी तरीके टेक्निक है. अनफॉर्चुनेटली वी प्रीच अ लॉट, प्रैक्टिस से लेके हम बहुत भाषण देते हैं, सुजोग की तारीफ भी बहुत करते हैं, सुजोग के बारे में बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन खुद पे सुजोग का एप्लीकेशन करने की बात हो एज ए प्रिवेंटिव मेथड बहुत कम यूज करते हैं. तो ज्यादा नहीं 5 मिनट तो हम सुजोग के लिए दे सकते नहीं दे सकते.
24 घंटे में 5 घंटे दे सकते नहीं दे सकते। तो ये 5 मिनट की ये टेक्निक है, 5 मिनट की टेक्निक है। इट विल नॉट ओनली सपोर्ट योर ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम बट इट विल ऑल्सो सपोर्ट योर गुड हेल्थ। ये प्रोफाइलेटिक हैंड एंड मसाज आप लोग कितने लोग करते हैं? सुबह उठने बिस्तर में नीचे उतरने से पहले ये काम कर लेना, उसके बाद में तो काम में लग जाने सारे, सभी काम में लग जाने वाले अपने अपने काम में। बिस्तर से नीचे उतरना ही नहीं है, पहले बिस्तर पर बैठे बैठे ही सारा काम कर लेना है। बिस्तर पर बैठे बैठे ही काम कर लेना। प्रोफाइलेटिक मसाज आप लोग जानते ही हैं, ये जानते ही नहीं जानते, ये सारी मसाज पूरी अच्छी तरीके से बिल्कुल डायफ्राम से शुरू करते हैं। ये डायफ्राम सेंट्रल लाइन को अच्छी अलग से करो, ये सेंट्रल लाइन को अलग से करो, पूरा करो, एक एक फिंगर को करो, एंड लाइक ए वेरी डीप मसाज। और आपको मालूम है कि सुजोग के अंदर एनी मसाज, व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट दिस मसाज इज थ्योरेटिकली वर्किंग और नॉट? क्या क्राइटेरिया उसके लिए आपको अगर आइडिया किसने? ये कोई भी मसाज है वो आपके लिए रियली वर्क करती है या नहीं करती है, उसका क्राइटेरिया क्या है? कितनी देर करना चाहिए, 5 मिनट या 1 मिनट? क्राइटेरिया आपके पास कोई क्राइटेरिया है इसका? कितनी देर करना चाहिए अगर ये करें अपन कोई, कितनी देर करना चाहिए आपको क्या लगता है? Yes, very good. Until this become red and warm. खाली लाल भी नहीं, खाली वार्म भी नहीं। तो कितनी देर करा, ये आपकी मर्जी है, ये आपके पर्सनल इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि 5 मिनट में होगा या 2 मिनट में होगा। जब आपकी हथेलियां लाल और गर्म हो जाए तब तक के लिए आपको ये करना है, ये करना है। इसकी थोड़ी थोड़ी दूसरी टैपिंग एक्सरसाइज भी है, ये मैंने ट्राई की है, ये डेवलप, यू कैन डू टैपिंग, जस्ट आपको लीवर जस्ट डू टैपिंग, लीवर टैपिंग, जस्ट मेकिंग अप, और प्यार से थपथपाना है, मारना नहीं है। जो वो टैपिंग करता है, चाटा भी मारना है, कभी चाटा मारना तो अलग तरीके से मारना है, टैपिंग करना तो अलग तरीके से। तो दोनों कभी कभी बच्चों को सिलाई करना पड़ता है, कभी प्यार से सहलाना पड़ता है। तो टैपिंग इज लाइक मेडिटेशन, आप आंख बंद करके बैठे ओनली दिस स्मॉल मेडिटेशन, स्मॉल मेडिटेशन की स्टेट में आ जाओ, टैपिंग करो, ओनली टैपिंग, जस्ट डू टैपिंग, क्लैपिंग, टैपिंग, क्लैपिंग, टैपिंग, क्लैपिंग, टैपिंग, क्लैपिंग, टैपिंग, क्लैपिंग, इस तरीके से। तो ये प्रिवेंटिव है, ये कहने का मतलब छोटी छोटी टेक्निक्स है, बड़े रिजल्ट है। स्मॉल थिंग्स डन रेगुलरली ब्रिंग्स ग्रेट रिजल्ट्स। छोटी छोटी चीजें अगर नियमित रूप से करें, डेडिकेशन से करें, तो कैसे रिजल्ट ला सकते हैं? बड़े रिजल्ट ला सकते हैं। तो मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई है और उम्मीद करता हूँ कि बड़े बड़े रिजल्ट आपको जरूर लेके आएगी। तो आप इसको यूज कर पाएंगे प्रैक्टिकली। और ये मैं कंक्लूड करूँ तो 2 मिनट ले, हाँ क्वेश्चन आंसर भी लूंगा मैं आपको। हाँ पहले क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, एक पहली क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं तो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा मैं चूंकि नए टीचर्स भी हैं उनके बारे में मेरे थोड़े मन के कुछ जो भाव है वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा मैं आपको। तो और जरूरी है कि आपको अच्छा टीचर बनने के लिए एक मेरी ड्यूटी भी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छा टीचर बने। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो अकॉर्डिंग स्लाइड पे लाए थे, इसकी मैंने आपके सामने छोटी चेन बना के दे दी आपको, वैसे इसकी चेन थोड़ी सी बड़ी है, मैं आपको वापस आज सारे सीनियर जे देन अगेन रैंक हॉटनेस ऑन जे। उसके बाद में हमारे को में जाना है। हम काम किस पे कर रहे हैं? आहा पे कर रहे हैं, आहा हॉटनेस पे कर रहे हैं। आई मेरिडियन के हॉस्पिटल ड्रिल पे लगाओ और वापस ड्राइनेस मेरिडियन पे चले जाओ, यानी बी पर, और बी के ऊपर आप जो काम करेंगे वो ड्राइनेस का काम करेंगे, क्योंकि ड्राइनेस में जाना है। बी तो आहा ड्राइनेस है, आहा ड्राइनेस का आहा ड्राइनेस में ड्राइनेस का लॉक खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
आई के थ्रू जा सकते हैं। पहला आई के थ्रू, आई के अंदर जाएंगे और उसके इंटेंशन पॉइंट करेंगे। Music, yes, not only actually gives the treats the hyperglycemia, but also protects the heart. So yes, definitely. Kidney is very important. Yes. And second thing, biggest thing what you told is we have medicine of bromocriptine, which we have used in previously. Now they are concentrating on this drug because first they thought that treating with insulin, diabetes is cure. Yes. Then they understood diabetes is not only insulin, it is alpha cells, beta cells, somatostatin, delta cells, and so many things. There are 8 organs are involved in controlling the sugar. Yes. So the muscles are very important when you are doing exercise. Most of the sugar is consumed by the muscles. So liver and muscle, alpha cells, beta cells, their ingredients from the intestines, the kidney, gluconeogenesis, all these factors they use. So what I wanted to just suggest, the kidney is addition of Yes, thank you very much. I really acknowledge, and I definitely should have included it. Yeah. And when he says that, I clearly understand and acknowledge that it is very important, because it is not only important for the functioning of the sugar metabolism. This is also important, as well as this is also important for the heart health. Yeah. Most of the people of kidney disease, they die of heart. They died of the heart attack. Yes. So kidney is very important. Very important. Right. Yes. In conclusion. Thank you. Thank you very much. And definitely I will improve my this presentation also immediately. सर इसका ट्रायोरीजन क्लासिफिकेशन है क्या? ट्रायोरीजन क्लासिफिकेशन है जरूर, लेकिन आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट, बिकॉज मैंने उसको पढ़ा नहीं, बीच में टाइम भी नहीं मिला, उसकी पूरी चेयर बनानी पड़ती है। लेकिन देयर इज वन क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस नर्व बाय ट्रायोरीजन, but I am not very sure. But definitely I can show you one mudra, because metabolic syndrome is a homo condition. कौन सी कंडीशन है? होमो कंडीशन है, जानते हैं तो हम होमोसिडेशन, हेट्रोटोनिफिकेशन, न्यूट्रोटोनिफिकेशन. I think this is one of the most simple triogen mudra for metabolic syndrome. Homosedation, hetero, neutro-tonification. But this chain, I am not very sure now. But I think that there is. I remember that this classification somewhere. I know this classification. लेकिन कभी मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में, और मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा इसको. ये जो क्लासिफिकेशन है, बता रहा हूँ, डॉक्टर जौहर यागिल ने ये एक केस किया था, आई थिंक नर्वस सिस्टम का, उसमें ये क्लासिफिकेशन है पूरा. हाँ, वो मेरे को ऐसा याद है, पर मेरे को अभी एग्जैक्टली आई कैन नॉट रिकॉल इट, बिकॉज आपको किसी तरह गलत जानकारी नहीं देना जो मुझे पता है. ऐसा वैसे भी आपका लेक्चर हम इसमें इंक्लूड नहीं कर पाए हैं. हाँ. जब भी आपको टाइम मिले आप एक लेक्चर इसके ऊपर आर्टिकल बनाइएगा. हाँ. ये मेरी गलती है, इन्होंने तो मेरे को लास्ट मोमेंट में बहुत कुछ किया था सर, किसी तरह से पीपीटी शेयर कर दो आप, आर्टिकल तो मैं बना लूंगा. मेरा पीपीटी है ना मेरे पास शेयर करने के लिए, पीपीटी नहीं है. अरे माइक दे दो, माइक दो, अरे माइक. Hello. This chronic inflammation, we can actually control CRP, C-reactive protein. Yes, CRP. I told you market is one of the important markers. Acute inflammation with ESR. Yes. Now this big heat hotness is acute. Humidity dryness, coolness is chronic. Yes. Chronic, if you want to actually diagnose, you have to go for CRP. Yes. CRP, why it is? Because it's a coldness condition. From humidity we come down. Humidity, dryness, coldness. Yes. So it is chronic inflammation, humidity, and dryness, and not your heat and hotness. Yes. I already explained that chronic inflammation is considered like heat excessive, but actually it is not heat excessive. It is homo condition. So either it is humidity is involved. In the most of cases, which chronic inflammation is quite long, it is dryness there. So therefore, inducing heat, that means basic energy treatment, is helping in the chronic inflammation. Yes. और ये सही बात बताइए आपने,
हम कौन से मार्कर हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं एक्यूट है या क्रोनिक है। तो एक्यूट के लिए ESR लेवल है, ब्लड का ESR जो टेस्ट है वो इट शोज एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और CRP जो टेस्ट है इट शोज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और कोई क्वेश्चन? सबको समझ में आया इसका मतलब या नहीं आया, क्या मालूम? दोनों मतलब हो सकते हैं ना, कि अगर क्वेश्चन नहीं है तो समझ में नहीं आया, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो इसका समझ में आ भी गया। तो क्या मालूम है आपके बारे में? ठीक है, एनीवेज अभी हमने TTC किया है, और आई अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स को कुछ कंप्लेंट होने वाली है, और मेरे से लेके आप लोगों को कुछ शिकायत भी हो सकती है मेरी शक्ति के बारे में, थोड़ा बिकॉज when I am teaching, I am totally different person. So I don't remain Ashok Kothari at that time. जब टीचर हूं तो मैं अशोक कोठारी नहीं हूं, और उस वक्त I remain totally non-prejudice. वो सामने वाला कौन है, कैसा है, मेरा अपना रिलेटिव है, मेरा नोन है या अननोन है, इट डज नॉट मैटर टू बी एट ऑल. टीचर्स मीन टीचर, और स्पेशली व्हेन आई एम कंडक्टिंग TTC आई बिकम मोर स्ट्रिक्ट. आपने देखा भी होगा, आई बिकम अनॉयड ऑल्सो. आई पुश यू टू हार्ड समटाइम्स. अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे तो मैं आपको बार बार मैसेज डालता हूं. आप होमवर्क गलत कर रहे हैं तो पहले 2-3 दिन तो मैं आपको करेक्शन करके बताता रहता हूं कि ये गलत है. तीसरे दिन से मैं कुछ वर्ड्स भी यूज करने लगता हूं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, या ये टू बिकम ए गुड टीचर इट इज यू आर नॉट ग्रोइंग. ऐसी मैं आपको शक्ति भाषा यूज करता हूं, मुझे मालूम है, और मुझे नहीं लगता कि आपको कितना हर्ट करता है, बट आई एम हर्ट मोर देन यू व्हेन आई यूज दोज लैंग्वेजेस. मुझे बाद में बड़ी दिक्कत होती है उससे बाद में. आई रियली फील वेरी बैड, लेकिन एज ए टीचर आई मस्ट डू इट, क्योंकि टीचर इज नॉट ए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट. TTC इज नॉट ए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट. आप आके बैठ गए, आपने क्लास अटेंड कर लिया, 20 घंटे का, 24 घंटे का, 30 घंटे का ट्रेनिंग कर लिया, और आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि TTC हो गया. I want to make this TTC more tough than this. आपके सामने जो मैंने TTC किया है, मेरी इच्छा तो है कि ये इससे और ज्यादा टफ होना चाहिए, ये ज्यादा टफ होना चाहिए. लेकिन अभी चूंकि स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे कर सकते हैं, सो वी आर नॉट गोइंग दैट टफ. लेकिन बिकॉज टीचर हैज द अटमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्पार्ट द एजुकेशन इन द राइट मैनर, इन द राइट वे, without any impurity, without any adulteration. मैंने आज तक throughout my life, I never adulterate this subject. I kept as pure as possible, without involving my own ego or any my aspirations. तो जब मैं TTC पढ़ाता हूँ आपको, तो मेरी आपकी एक्सपेक्टेशन वही रहती है. आपको पता है मैं I go very deep in my minor things. माइन्यूट से माइन्यूट. एवरी डे आपकी क्लास का अगर 3 घंटे का शेड्यूल है, आई एम टेकिंग मोर देन 4 आवर्स एवरी डे. 4 डेज की क्लास है, आई एक्सटेंडेड अप टू 10 डेज. आपको मालूम है मैंने कितना एक्सटेंड किया है. संडे आई टुक 8 आवर्स क्लास, जस्ट दैट यू कम एंड यू गेट अपग्रेडेड टू द लेवल विच इज एक्सपेक्टेड बाय आईएएस. क्योंकि आपकी एक गलती वो मल्टीप्लाई होकर कितनी गलती बनेगी, इट विल कीप मल्टीप्लाई, बिकॉज यू मेक मिस्टेक, योर स्टूडेंट विल मेक मिस्टेक, एंड देन अगेन इट इज चेन ऑफ मिस्टेक्स. और आपने देखा होगा समटाइम इवन आई स्टॉप ड्यूरिंग टीचिंग, बिकॉज समटाइम आई गेट कंफ्यूज वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग. स्टिल आफ्टर सो मेनी ईयर्स सब कोई क्वेश्चन है तो आप आई विल कम बैक, मैं वापस बताऊंगा, लेकिन आई नेवर से दैट इट इज लाइक दैट. I do not allow my ego to come. तो आप लोगों को मुझसे नाराजगी हो सकती है, लेकिन मैंने बताया टीचर्स बनना लाइक कीपिंग ऑन द फ्लाइंग पैन. आप बिल्कुल तवे के ऊपर हो. टीचर बनना इज नॉट जोक, इट इज नॉट जोक.
इट इज बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ISA का अगर अच्छा काम करना है दुनिया के अंदर, ISA one day it will be recognized by the government. If you don't have good faculty, how we can protect ourselves? How we can compare from others? तो अपना अच्छा टीचर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने 3 असेसमेंट का प्रोसेस रखा। ये आप टीचर के लिए तो थोड़ा ज्यादा सख्त है, मैं मेरे स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही करता हूं, मेरी ओन क्लास के साथ भी। विदाउट क्लियरिंग द टेस्ट आई नेवर गिव सर्टिफिकेट। आपको पास करना ही पड़ेगा टेस्ट, रिटन टेस्ट, इवन इफ इट इज माय ब्रदर और माय सन, आई डोंट गिव सर्टिफिकेट। यू हैव टू पास द टेस्ट। तो कई लोगों को ये शिकायत है कि we attended the class, we paid the fees, but didn't get the certificate. जबकि मैं फर्स्ट डे अनाउंस करता हूँ, attending the class is no guarantee of receiving the certificate. ये गारंटी नहीं है, ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट नहीं, इज नॉट पार्टिसिपेट। और PTC में तो ज्यादा ही है। तो मैंने 3 पार्ट प्रोसेस किया। एक एवरीडे टास्क आई एम गिविंग यू, चेकिंग द टास्क एंड गिविंग फीडबैक। और मैंने बोला कि आई विल कंसीडर इट फॉर द असेसमेंट आल्सो। Second is your written test taken by the ISA. Third was Viva. And Viva really, in spite of my such a hard work, I spent more than 100 hours for this class. आपको पता है सबको, including Viva, 100 hours से ज्यादा क्लास किया। For basic course, scheduled time is 24 hours. मैंने तो 100 hours से ज्यादा आपको पढ़ाया है। लेकिन during the Viva, I was not much satisfied. I was a disappointed person. And you can see, receiving 50% marks is not a honor. Not a honor. Even you got the certificate, but it is not honor. It is indication that you still need to upgrade. आपको भी अपग्रेडेशन की जरूरत है। अगर 30 और 35 के आसपास ही मार्क है, आपको अपग्रेड होने की जरूरत है। और इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि वाइवा के अंदर जो सबसे ज्यादा क्रूशियल बातें हैं, आपको मैंने सब बताई। क्लास के वक्त में मैंने जितना जरूरी चीजें हैं TTC के आपको स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, मैंने उसको बोला था कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर क्लास, विच शुड बी डिलीवर्ड टू आवर स्टूडेंट इन ए वेरी इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंसिंग वे। ये बताया था आपको एक बार, ये लेक्चर जरूरी है। एंड आई रिपीटेड सेवरल टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। When I touch the similarity criteria, I take more than 1 hour to explain the similarity criteria. And every day in the beginning of the class, 10 minutes I am giving revision. Similarity, then again third day, similarity, then again fourth day, similarity. Because similarity is the essence of correspondence system. Or in Viva, I take one common question for all the students. Please explain the similarity of hand and the body. And I put 3 marks for that. If you say all the similarity criteria, I will give 3 marks. If you cannot say anything, I will give 0 mark. Otherwise, depending upon performance. And I am really disappointed. No one could get 3 out of 3. किसी को भी 3 में से 3 नहीं मिले. Which was most important, most essential. ये हमारा ओपनिंग लेक्चर है क्लास का, और ओपनिंग लेक्चर तो इंप्रेसिव होना चाहिए, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वो भी अगर नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है। सो इट इज नॉट टू डिसअपॉइंट यू एक्चुअली। मैंने तो बोला भी धवल को कि वी नीड टू कंसीडर अबाउट ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द टीचर्स। ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द टीचर्स। Teachers level should be much better than the ordinary practitioner. Teachers level should be much better. I put minimum passing marks 60% for this area. Actually, I wanted to keep it 70% plus. And because your first assessment, we have 3 levels of assessment: everyday task, written test, Viva. But if I would have considered first part, majority of students would have failed. Because individually you have to succeed in all 3. But our homework, 10%, 15% students didn't bother to submit the homework even. They thought they know everything. But those submitted I considered qualified. विलिंगनेस तो है कम से कम सीखने के लिए, तो मैं करेक्शन करके बताया, आपको गाइड किया। और जिन लोगों को चेक नहीं किया, मैंने अभी प्रॉमिस किया आप लोगों को कि जिनके होमवर्क चेक करना अभी भी रह गए, I will find time, I will check and I will respond.
मैंने रखा अभी तक, आपका सबका करेक्शन कर करके भेजूंगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो कहने का मतलब है डोंट बी डिसअपॉइंटेड। थोड़ी अगर आपको लोगों को से इसके प्रति मेरी नाराजगी है तो आई विल स्माइल अपॉलॉजी फॉर दैट। तो कोई बात नहीं है, नाराजगी चलेगी, लेकिन एज ए अशोक टोटली डिफरेंट, एज ए टीचर टोटली डिफरेंट। सो आई वांट ऑल यू टू बी बिकम great teacher, so that everybody says, आपने कहाँ से सीखा? IAS से सीखा। कौन से टीचर से सीखा? अशोक कोठारी से सीखा। तो मेरे लिए इससे बड़ी तो तारीफ क्या हो सकती है? तो ये तारीफ है। So thank you very much for the time. Thank you IAS, thank you Dr. Vijay Park and Kawal ji and Dr. Mohan Selvan for keeping me inspiring and keeping faith in me and no words about that. So, heartfelt thanks for it. Thank you, sir, for the amazing knowledge you have given to us. I'd like to call Madhuri aunty and Varsha ma'am to present moment to Ashok Kothari sir. ऐसे मैंने धवल को बोला था ये अब हमारे को इस कैटेगरी से बाहर निकाल देना चाहिए, मोमेंटो और एवरीथिंग। अब दूसरे लोगों को मिलना चाहिए, हमको नहीं मिलना चाहिए। Thank you, sir. Now it's time for the next session to understand and जिन लोगों को भी फूड पैकेट्स चाहिए प्लीज दीपा दीदी को इन्फॉर्म कर दीजिए, सो प्रिपेयर करने में इजी होएगा। So now it is lunch time. Enjoy your meal, and I would request to finish off your lunch as हमें किस मोड़ पे ले आया।
चालू हो गया हाँ मैं एक बार नेट पे चालू कर दिया नेट पे ना Smile afternoon, everybody. Smile afternoon, sir. You know, this session is very, very appropriate. Okay? Generally in school, when a child doesn't listen to the teacher, what does the teacher do? So when the students talk, the teacher goes and presses the loudly. Stop talking. Stop talking. Attention. Good. The auricle has enormous amount of potential. The ear has enormous amount of potential. And it first starts by this itself. This. Okay? But somehow, you know, I think Dhaval अगर अगली बार धवल मुझे कॉन्फ्रेंस में बुलाएगा तो मैं नहीं आने वाला और हर गलती का माफी मांगता है। सो पहला गलती है कि अच्छा खाना देता है वन। दूसरा गलती खाने के बाद मेरा सेशन रखता है। और ये तकलीफ है कि आप लोग खा रहे हैं और मैं देख रहा हूं, क्योंकि आप लोग सो सकते हैं, मैं सो नहीं सकता। अगर मैं सो गया तो इसीलिए मैं नेक्स्ट टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम वो खाना पार्सल करके देगा। गुड। How many of you have seen this book? How many of you have this book? ये किताब कितने लोगों के पास है? और हिंदी, इंग्लिश और मिक्सचर? हाँ? Okay. So,
हम ये कितने लोगों के पास ये किताब है, हाथ ऊपर उठाइए, कम से कम थोड़ा नींद तो भागेगा। किसने इसको खोल के देखा है? हम ओपन इट एंड सीन दिस बुक। ठीक है, देख मतलब एक या दो लोगों ने देखा है। How many of you have read this book? You are out, disqualified. Both of you disqualified, all three of you. You are celestial beings, we are ordinary human beings. Okay? How many of you have read this book at least once? This is such a beautiful book. So nicely written. And I fell in love with this book. It's so easy. It took me 1.5 years to understand this book. Okay? The first time I read it, I said, what is written here? It was very difficult for me. I literally took the book and threw it out. I said, 250 rupees is a waste. But the professor had signed on my books. So I brought it back and I said, ठीक है, और एक बार पढ़ता हूँ, पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तो 1.5 साल लगा मुझे ये किताब समझने में। लेकिन अभी आपको बता सकता हूँ कि इससे सरल किताब नहीं है। आप लोगों ने कभी ऑरिकुलर थेरेपी प्रैक्टिस किया है? नहीं? यस? रिजल्ट्स कैसा है? वंडरफुल। किस तरीके का ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर आपने प्रैक्टिस किया है? Which type of auricular therapy have you practiced? Dhawan, PPT? Which type? I have 1 hour and I want this to be the best 1 hour of your life. Okay? And that one after lunch. And that too when you're going back home today. So, good. We start. I'm yours for the next 1 hour and you belong to me for the next 1 hour. And he belongs to all of us. Okay? Do you know what his name was? Before we all of us call him Professor Park Jehu, but what was he known before that? Anybody? No, you're disqualified. हम लोग उनको प्रोफेसर पार्क बुलाते थे, लेकिन उससे पहले क्या था? Open your eyes. That was his name before he changed it. Okay? And he was an intelligent person. Now my question to you is, how would you like to remember him? How would you like to remember him? I want you to speak, please. How would you like to remember him? Yes? How? As a guru? Okay, as a teacher. Then? Devdut. ठीक है, और? How else? हाँ? सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है मैडम। शब्द का इस्तेमाल कीजिए। आप उनको कैसे याद रखना चाहते हैं? How would you like to remember Professor Park? Zero power. Zero power. Saint for a Saint. Smile. No. What? How would you like to remember? Always smiling? He never smiled at me. I used to be very afraid when he used to look at me. universal energy. Universal energy. We can remember Professor, if you ask me, we can remember him as a saint or as a scientist. You agree with me? How you like to remember him is up to you. Because for me, I would like to remember him as a scientist. Because it is from this science he reached that saintlyhood. The advantage of being a saint is the minute you say something, it is recorded as dictum. Can you question the Quran? No. Can you question the Bible? Can you question the Gita? These are words of God. These are dictum. You cannot challenge it.
But when a scientist says something, you can challenge it. I prefer my professor to be a scientist, so I can fight with him. झगड़ा कर सकता हूँ उनके साथ, बात कर सकता हूँ. And every time Dr. Mohan Selvan, Ashok ji used to have a seminar, they would say, Prabhu, please come. I used to go. And my biggest problem was, they would put me in the first bench, first chair. And I would sleep. Beautifully. I learned the art of sleeping with my eyes awake sitting in Professor's seminar. So when Dhaval asked me, when did you learn? I said, Sika kahan? I don't know anything. I still don't know. Okay? And with whatever little I have, I'm going to give it to you. Okay? So, this is something that you know. I don't know how many years back I was sleeping at 10 o'clock in the morning and I get one call, and that was from Dr. Mohan Selvan. He tells me, Dr. Prabhu, will you organize a seminar in Karnataka? I said, okay, thank you. He keeps the phone down. After 10 minutes, I realized that somebody has called me and given me some work. I asked my mother, somebody from Chennai called. That's when I go back to Dr. Mohan Selvan. I said, did you call me? Yeah, you just agreed to organize a seminar of Dr. Violeta in Bangalore. Did I? So, yes, I'll send you all the details. Okay. That's when he pulled me into Sujok, and ever since it's been a roller coaster ride. But believe me, it's a very, very, very beautiful journey. Ab tak ke anubhav jo hai, probably that's the reason I'm here. And I want to share this blessing with you. So then I requested him, sir, kuch special milega? I asked Dr. Mohan Selvan, sir, rozi roti ke liye kuch karna chahta hu. आप लोग सब बोलते हैं Sujok spread करना है. मैंने बोला सर रोजी रोटी कमाना है. 35% of the population around the globe suffers from some kind of pain or the other, and I said Sujok is very, very important. I will start. I will relieve pain. So I told him, sir, I want to start a clinic. Hey, that's me, young and handsome. I'm old now. How was your handsome? Remember that. We go out on a date the next time I come to Nagpur. So I was one of the fortunate people whose unit was inaugurated by Professor Park. And according to the Hindu tradition, I follow a spiritual pathway wherein they say that a student has a right to only hold the thumb of the teacher and worship the big toe of the teacher, and we never knew why. एक शिष्य को अपने गुरु के सिर्फ अंगूठे ये पकड़ने का हक है और सिर्फ बिग टो पाद पूजा करने का हक है, और किसी जगह शरीर का छूने का हक नहीं है. क्यों? क्योंकि हम गुरु से सिर्फ ज्ञान, we want knowledge from him. And what is this? Head. So we have a right on the teacher's head, not on his wallet, not on his clothes. So there is a deeper significance for Sujok, probably 3,000, 5,000 other ancient rishis, when they said, just hold this, and I could do Path Puja to him. So that's my blessing. And he's the culprit. He has filed a police complaint against me many, many years back, because one day I went into his home and took away all his notes on acupuncture. So he was telling me that I filed a police complaint. The police is yet to find me. Okay? So let's come back. Please believe me that whatever I'm going to tell you is based on my experience. And I'm a very, very, very ruthless person when it comes to evaluation. जब तोल-मोल करने की मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, अगर कुछ गलती करता हूँ तो करेक्ट कर दीजिए. जब डिसीजन लेने की कोई चांस आता है
तो मैं बहुत रूथलेस हूँ, मैं इतना जल्दी कुछ स्वीकार नहीं करता हूँ। तो जो भी आपके साथ शेयर करूँगा, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं। और ऑरिकुलर थेरेपी इतना स्पेसिफिक है, लेकिन प्रोफेसर पार्क ने जो दिया है, शायद बहुत लोगों ने या किसी ने भी ये किताब पढ़ के to read, to understand, to build up, I don't think anybody has done that effort. Okay? So let's go into the history. Do you know this person? This is Dr. Paul Noguier. He was a French physician. What? Yeah, he's supposed to be the father of auricular therapy. And why do we call him the father of auricular therapy? It was a chance discovery. आज USA में हर जगह जो एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करते हैं वो बिना ऑरिकुलर थेरेपी के कोई कंप्लीट एक्यूपंक्चरिस्ट नहीं बनता है, और सिर्फ इनके डिस्कवरी। इनका कहानी क्या है? फ्रांस में बहुत ठंडी रहती है, इनके घर में एक मेड थी, उनके पति थे, पति का साइटिका था, और साइटिका कोई ट्रीटमेंट है, सुजोक अभी मत लाना, ये सुजोक के पहले, एक्यूपंक्चर के पहले, राइट? क्या करते हैं हम लोग? पेन किलर, इंजेक्शन, टैबलेट, उसी में मैनेज करते हो। जब ठंडी ज्यादा बढ़ती है और दर्द ज्यादा होता है, तो दिस मेड हर विंटर उसके हस्बैंड को लेके आती थी। पॉल नोगियर एक इंजेक्शन पेन किलर देते थे, विंटर मैनेज हो जाता है। तो ऐसे चलता गया। Suddenly one winter, the husband of the maid doesn't come back, and out of curiosity he says, "क्या हुआ? What happened? He's cured." What do you mean he's cured? I cannot cure it, and you're telling me he's cured. So to cut the story short, there was a Chinese Mandarin, एक चीनी आदमी था जो wander कर रहा था, और he was offering cures. मैं आपको ये ठीक कर सकता हूँ। आप जब हाईवे पर जाते हैं तो टेंट लगा के कोई माइक लगा के बोलता है कि ये बीमारी के लिए ये दवाई है मेरे पास। बहुत बार वो काम करते हैं, लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो चाइनीज मैंडरिन ने बोला, आ जाओ मैं उसको क्योर कर देता हूँ, और आउट ऑफ डेस्परेशन वो गया उस चाइनीज मैंडरिन के पास, और उसने कुछ किया एंड पेन चला गया। ओके, that incident triggered him, and he went there, and that was the genesis of auricular acupuncture. He built it up, और उसको अमेरिका ने पकड़ लिया, तो आज बहुत कमर्शियल हो गया, उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। जो भी रिसर्च हुआ, जितना भी हुआ है, इस किताब, believe me, there are a million times better. If you can master these 3 books, you will never have to look at anybody else for any help. This will make you a complete honorary auricular therapist. इतना power है इसमें। Okay? तो एडवांटेज क्या है? सिंपल है। मुझे 1.5 साल लगा। सिंपल, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। एक बार समझ में आता है। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज, इजी टू मास्टर। एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, और ये आप जब यूज करते हैं तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। Only if you eat that jalebi, you know how tasty it is. Otherwise, it's of no use. Okay? And that's one subject which you cannot stop falling in love with. मोहब्बत हो जाती है इससे। Okay? और साइंस के हिसाब से आप बात करेंगे तो बोलते हैं कि इट्स वेरी प्रॉक्सिमल टू द ब्रेन। मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस 1 घंटे इस सेशन में मेरा क्या काम होगा? I will orient you towards Professor's version of auricular acupuncture. एक झलक दिखाऊंगा, लेकिन वो झलक आप पकड़ेंगे, वो एक glimpse आप पकड़ेंगे। This journey will become very, very interesting because I cannot do justice to the subject like how Ashokji said. I cannot do justice, but I will be just and fair with whatever I'm going to give you. So even if you listen to what I'm telling you and take it with you, you will be able to use it tomorrow morning straight away, because you have all your foundations are already set. So I'm going to make it like that. So please don't sleep. Anybody wants to sleep? Yes? Good. Okay. Okay. Now, I have one
question for you. All of you have been looking at, we speak about correspondence. लेकिन किसी ने सवाल किया है कि ये correspondence system का basis क्या है? ये head क्यों है? ये neck क्यों है? Why is it head? The head is here, head is here, head is here. Head is everywhere. Head, neck, chest, abdomen, 2 hands, 2 legs. What's the evidence? What's the proof? Have you asked anybody? Have you asked your teachers? How do you explain? Similarity. Or somebody said similarity, you believed it? Sir, where is this similar? You are correlating it in your head. Law of resonance? Okay? So why learn a correspondence system? Put a needle anywhere. Everything will resonate. Come on, think. This is where you have to leave your science and go beyond, thinking out of the box. हर चीज अगर आपको प्रूव करना है तो हम हर एक साइंस का प्रूफ मैथमेटिक्स में ढूंढ सकते हैं. मैथमेटिक्स एक प्योर साइंस है और मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल साइंस है. एंड प्रोफेसर ने इसके बारे में रिसर्च किया है. इफ यू हैव रेड you will see that he has talked about what is called as the fractal field theory. Fractal field theory अगर आप समझते हैं कि हर चीज में है. आप मोबाइल यूज करते हैं बिना फ्रैक्टल फील्ड थियरी, मैं इसके बारे में ज्यादा भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये शब्द आपको दे रहा हूं फ्रैक्टल फील्ड थियरी. इसको आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और इसके ऊपर आप दुनिया में कहीं जाएंगे और आपको कोई सवाल करेगा कि ये हेड है और यहां पर भी हेड है और यहां पर भी हेड है, क्या आधार है, उसको तुम कैसे साबित कर सकते हो. अगर आप ये फ्रैक्टल फील्ड थियरी में निपुणता पाएंगे तो जो भी हो उसको फ्रैक्टल फील्ड थियरी के हिसाब से एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डेंस सिस्टम आप उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे. तो शायद इफ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट अगेन we will really discuss about it क्योंकि ये mathematics में है. Okay, so this is one way where you can explain the existence of the correspondence system. And fractal field theory says the amount of correspondence systems are unlimited. एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, करोड़. For example, every cell in the human body is a correspondence system. हम लोग बोलते हैं consciousness. एक कॉन्शियसनेस बहुत हल्का शब्द हो गया है, हर कोई बोलता है. रास्ते पर आने जाने वाला कॉन्शियसनेस बोलता है. लेकिन अगर हमको दम चाहिए, कोई बैठा है सरकार में, कॉन्शियसनेस हर किसी के पास है, तो हर किसी का मान्यता दे दूं. मैथमेटिक्स निकालो, लिखो इक्वेशन, फॉर्मूला, किसी भी साइंटिस्ट कहीं से भी लेके और बोलो ये फॉर्मूला में इक्वेशन डालो, तुमको करस्पॉन्डेंस सिस्टम मिलेगा ही मिलेगा. रिकग्निशन वो खुद आके मुझे देगा. I don't have to go. So you have to read. अगर मेडिसिन में आपको जिंदा रहना है, if you want to live in medicine, then you have to study. तो मेडिकल कॉलेज में बोलते थे कि your books will serve you better than your wife. पत्नी से ज्यादा आपकी किताब आपके ख्याल रखेंगे. शायद सही बोला था क्योंकि हर 6 महीने 1 साल में किताब का नया एडिशन आता है. बीबी का एडिशन चेंज नहीं होता है. खैर कोई बात नहीं, किताब से हम लोग संतुष्ट है. So unless you read, please understand that there's no point. Now everybody says you can take the horse to the water but you can't make it drink. That's the management philosophy, right? तो इसीलिए हम लोग जब यहाँ टीचर बन के आते बोलते हैं प्रयत्न करता हूँ, मैं सिखाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ. ऐसा स्टूडेंट सीखते नहीं. आई कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट आई कैन नॉट मेक इट ड्रिंक. और कोई थियरी आप सोच सकते हैं? हाउ कैन यू इंस्पायर योर स्टूडेंट टू लर्न? टेक द स्टूडेंट टू द वाटर, कांट मेक हिम अंडरस्टैंड. पुराना हो गया. I don't take anybody anywhere. I create a thirst in the horse. घोड़ा अपने आप पानी ढूंढेगा. और पानी कहां पर है? इत्थे. तो आएगा, किताब पकड़ेगा. I would create the thirst in you for this knowledge. And this thirst will come when you understand it in a logical fashion. Okay?
Right. So, fractal field theory gives you undisputed proof about the existence of the correspondence system. It gives you mathematical evidence also. Okay? And here is the head. Now, what Dr. Paul Noguer, what did he see? What did he observe? He went to the Chinese Mandarin and said, what did you do? The Chinese fellow said, look, there was a hot rod, garam rod tha. I just cauterized certain points, and after that the pain didn't come back. So he sat studying. When he looked at it, he could see that the points which the Chinese person had taught Dr. Paul Noguer represented an inverted embryo. And this inverted embryo was superimposed on the ear. What is it? It's a correspondence system. The whole human body is superimposed on the human hand. The whole human body is superimposed on the human foot. The whole human body is superimposed on the scalp. Scalp acupuncture, trunk acupuncture, limb acupuncture. हो गया? सिर्फ एक representation से दुनिया चल रही है. बिल्ली में बहुत पैसा बनाते हैं, क्योंकि काम भी करता है, इफेक्टिव भी है, और सिर्फ इतने में उनका जिंदगी चल जाता है. इसके आगे कुछ नहीं है. And that is the reason why I prefer Professor Park to be a scientist. उनकी बात कर सकता हूं, उनसे पूछ सकता हूं. वो जब हर कदम चलते थे, जब मुझे समझ आता है, I can feel the same feeling he went. Maybe no, but each time I understand what he says in that book, I get the same feeling, and this is a million times much better than all this. ये तो एक ही presentation है, head, neck, इसको याद रखना पड़ता है. हम लोग बोलते हैं cervical spondylitis यहाँ पर नहीं लगा, काम करता है, करेगा. पर प्रोफेसर ने एक नहीं, हजार नहीं, लाखों करोड़ों पॉइंट्स ऐसे दिए हैं कि एक मिस हो गया तो दूसरे में कर सकते हैं. इतना थियरी लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर बना के उन्होंने दिया है, और वो आप लेयर्स यूज करेंगे तो अंधा आदमी भी ऑर्डिनरी एडिकुलर थेरेपी कर सकता है और पेशेंट को ट्रीट कर सकता है. इतना गारंटी मैं दे सकता हूँ. सो दिस इज वन रिप्रेजेंटेशन that the whole world follows. Okay? And you will see that the French, क्योंकि डॉक्टर पॉल नोगियर फ्रांस में थे, तो the French developed it. Then Chinese वालों ने बोला कि हमारे ट्रेडिशन में था, ट्रेडिशन चाइनीज एक्यूपंक्चर में था, नीचिंग में था, सुवेन लिंगशिंग में था, तो हमारा है, पहले हमसे लिया था. तो वो कंट्रोवर्सी बहुत साल चलता था, और इसके बाद बहुत वेस्टर्न और अमेरिकन ऑथर जैसे टेरी ऑल्सन, कास्टेल लैंड्री, बहुत लोगों ने इसके ऊपर किताब लिखा है, और सब ने डॉक्टर पॉल नोगियर और रफाएल नोगियर की किताब, उनकी डिस्कवरी के ऊपर अपना किताब लिखा है. इतना ही है. बहुत सारे साइंटिफिक, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेके आए हैं, क्योंकि अमेरिकन है तो हर बार कमर्शियल चीज ही सोचते हैं. लेकिन ओनली प्रोफेसर पार्क हैज लुक्ड एट डेवलपिंग the academic part of the theory of auricular acupuncture. उन्होंने 3 बुक लिखा, 2 अंग्रेजी में है, तीसरा रशियन में है. ठीक है? और जब समय मिलेगा तो रशियन में इंग्लिश में आ जाएगा. तो पहला है एम्ब्रियोनिक सिस्टम. एम्ब्रियोनिक मतलब क्या? व्हाट इज दिस वर्ड एम्ब्रियोनिक का मतलब क्या है? इन विट्रो. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एम्ब्रियोनिक? हाँ, ओरिजिन. हाँ, कहां से? एम्ब्रियो कहां पर है? इन द मदर्स रूम, या मां के पेट में है. तो एम्ब्रियोनिक सिस्टम जो जेनेसिस बोलते हैं, वो पहला वॉल्यूम में उसको एक्सप्लेन किया, दूसरे वॉल्यूम में उन्होंने इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सप्लेन किया, और तीसरे वॉल्यूम में एनर्जी सिस्टम्स के बारे में बताया, जहां से आपको 8 ऑरिजिन वगैरह जो डायमंड वगैरह है वो इस बुक से शुरुआत किया था उन्होंने. और इसी किताब में मैंने जब पहली बार पढ़ा था, इन्हीं 2 किताब में होमो और हेट्रो का ब्राइटनेस, लाइटनेस और डार्कनेस बोलते हैं, ये 2 शब्द उन्होंने वहां पर लिखे हैं. तो आज मैं आपको एक किताब का उन्होंने जैसे फॉर्मुलेट किया है
वो स्टेप्स बताऊंगा और शायद एक सिस्टम बताऊंगा जिसको अगर आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अपने आप मिल जाएगा। ओके, तो उन्होंने थियरी अपना कैसे बिल्ड किया? हाउ डिड प्रोफेसर पार्क बिल्ड अप द थियरी ऑफ ऑर्डिनरी ऑरिकुलर थेरेपी? पहले उन्होंने बोला करस्पॉन्डेंस सिस्टम है, एक तो पोजीशन स्टैंडर्ड सिस्टम है योगा सिस्टम में, फिर दूसरा है शेप एंड साइज। ये आप जानते हैं, यू नो दिस इज, यू नो ऑल दिस राइट? आप what heart and kidney, you can have a representation of the heart in the human hand, है कि नहीं? Yes, because the correspondence system is based on the shape and size. Then the correspondence system is based on the division, the three divisions, insect system, head, abdomen, trunk. Head, chest and trunk. 3 divisions. Okay. Then it is vertical. आगे. This is vertical. Then you have horizontal. Then you have diagonal. तो प्रोफेसर पार्क ने मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस दिया है, ओके, एंड इट इज ऑन दिस बेसिस दैट you have the representation of the whole human body on the particular palm, on the particular area. You have the micro correspondence system. Micro is small. A large area of the human body is projected onto a smaller area. It's micro. You are miniaturizing it. Yes or no? Yes. Then we have the macro. A smaller area, a small part is projected on a big whole. There is Sujok iridiology. सुना है आपने? Eye can be represented, or for example, you can take a breast and probably put it on the whole of the trunk and superimpose it. Advantages क्या हैं? हम लोग आएंगे इसके ऊपर. We'll look at the advantages. Okay, ISO is similar. For example, everybody says the heart and the kidney, you know, and you know, they say it's relatively the size of your heart, and probably even your kidney can fit on your foot. So this is the ISO, the similar in size. So for that, the examples are the kidney and the heart. Okay. Now, what is the beauty? Professor साहब confuse करते हैं. एक संभालना मुश्किल है, 1000 देते थे. Yes, you have one you can eat. You know, I was just walking there. He has got 1 dal, 2 dal, ye paneer, wo kadai. What do I eat? I don't even know. It's very confusing. Actually, sir, which one to use? Insect, standard? इसको mnemonics बोलते हैं. The monosyllable is laughing. I know, sir, it makes you very young. Sir? Sir, आप आ जाइए यहाँ पर. हाँ सर. Crying of uterus or loss of fetus. It's a crying of uterus or loss of fetus. सुना आपने? Okay. What is menstruation? Menstruation में क्या होता है? Bleeding. Hey, अगर आपको medicine, you want to know medicine, you have to speak. You cannot be shy. It's a basic fundamental function. There is bleeding. There is loss of blood. So menstruation is the weeping of a disappointed vagina. Okay? What is the function? What is the role of woman? Nature has made a woman to bear a baby. And every month there is an ovulation, the egg is being produced. It has to be fertilized. You have to carry that for 9 months and then deliver the baby. Now this month it didn't happen, so what do you do with the egg? You keep it? You throw it out. So is the vagina not disappointed? मुझे नहीं मिला. I'm not able to carry it. So इतना जब सब build-up हुआ है, उसको मैं क्या करूँगा? आपके कोई बोलता है घर में कि मैं आ रहा हूँ आज खाने के लिए. So you will cook 10 dishes and the guest doesn't come. What will you do? Will you eat it for the next 20 days? You will not. You'll throw it out.
So won't you be disappointed when you throw it out? As simple as that. This is what gives you the fun in medicine. Not learning about the corpus luteum, about this cycle and that cycle. ऐसे पढ़ाई करेंगे तो मजा और आएगा. मुझे तो आया. I don't know about you. So we will study about the female reproductive system. We will study about menstruation, and we will also study about embryology. What happens? The egg is produced. The egg is thrown out. The egg becomes fertilized. Yes? And it grows. It is embedded. Then from there, 1 cell, 2 cell, 4 cell, 8 cell, it becomes an organism from here till here. It builds up. And you will see in vitro, in the womb, there are 2 stages. One is the head up and one is the head down. You know that? तो हम लोग मजाक करते हैं. अगर किसी को गाली देना है तो हम लोग पूछते हैं यार तो सीधा पैदा हुआ तो उल्टा पैदा हुआ. सवाल जवाब चाहिए. मेरा सबसे आशीष सर, I know him, so I can take the liberty. आशीष को सीधा पैदा होता है या उल्टा पैदा होता है? So what will he say? सोचो. नहीं सर, मैं सिजेरियन से पैदा हुआ. Okay, so there is a head up and there is a head down. The head up is the initial stage where there is a lot of growth in the body, and then the head takes a turn. Then that's the embryo, and then you take a turn, and the entire organogenesis happens, and that's when you have a full-term baby. Okay, so this is. So you will see, this is how it is. ये हम सब लोग जानते हैं. लेकिन इसके पहले, I don't have, इसके पहले मिलेगा. So what professor has done is he has looked at embryology 1 and he has superimposed it in the ear. ठीक है? एम्ब्रियोलॉजी का थियरी जो भी है उसको कान में उन्होंने सुपरिम्पोज किया, और उनका इंटेलिजेंस ये है कि उन्होंने जब सुपरिम्पोज किया और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट का जो स्पैन है उसको उन्होंने 6 की में डिवाइड कर दिया और 8 की में डिवाइड कर दिया. Are you getting this? Yes or no? No? Yes? Okay. This correlation nobody has done. Everybody looked at the outer part of the ear, inverted fetus, and stuck to that. But it's a genius who thinks out of the box. Appreciate him for this. Nobody looks at it like that. Okay? That's the real beauty. I think he deserves a much louder applause than this. So what he did, he looked at the theory of embryology, he put it into the theory of, he combined that with the theory of the 6 key, and then he found out 2 more structures which he called darkness and brightness, or darkness and the homo and the hetero. Homo is what? What is homo? Darkness, absolute darkness. अंधेरे में कुछ दिखता है आपको? नहीं. ये क्या है? What is this? This is the auricle. This is the middle ear. यहाँ पर tympanic membrane है. यहाँ पर कान का पर्दा है. तो ये आपको दिख रहा है?
हे भाई, तुम लोग बात करते बैठोगे तो गुस्सा आ जाएगा। फोकस करो, मुझे शिफ्ट चाहिए, फट 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 करेंगे। चलो पीपीटी दे दो मुझे, चाय में पिलाता हूं बाद में, पीपीटी दे दो। गुड। Okay. Are you seeing this? This is the egg. यहाँ पर sperm आ रहा है और इसको fertilize कर रहा है और बाकी सब मर रहा है। और जब ये एक सिंगल सेल, ये देखिए क्या है? So बाहर निकल के ओवम, जाइगोट, ये अंदर आ गया, ये अंदर आ गया और फिर मल्टीप्लिकेशन 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल। यस, और इसका हम अगर देखेंगे तो ये फिगर है। कैन यू कोरिलेट इट नाउ? इट्स अ सिंगल सेल। यू सी द स्पर्म दैट इट इज कमिंग इनसाइड, इट इज फर्टिलाइजिंग, देन 4 सेल, 8 सेल। So what he did was, this is the state of darkness because this is not visible. Visible है और इसको सीक्रेट उन्होंने हाइड कर दिया, बाहर दिखता नहीं। It's a very, do you do any homo activity outside? No, why? That's the very nature of homo. Homo is shy, है कि नहीं? तो see, understand this. He put it deep inside the in the middle ear, in the auditory canal. And this is a structure nobody notices. So he starts from darkness and then coldness. After coldness, ulta kya hai? Dryness. Okay? So you will see dryness में थोड़ा बड़ा हो जाता है. It is at the entrance. Are you getting this? ये एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से भी सही है और 60 के हिसाब से भी सही है। डार्कनेस, कोल्डनेस, ड्राइनेस। यस, प्लीज बेयर विथ मी विथ दिस, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, ओके। तो एक डार्कनेस, कोल्डनेस हो गया, फिर ये ड्राइनेस का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ड्राइनेस के बाद क्या आता है? ह्यूमिडिटी। अभी तो आप आंख बंद करके मेरा क्लास दे सकते हैं, ठीक है? मत करो यार, किताब है। मोनसलन सर को पकड़ो, प्रिंचुल सर को पकड़ो, धवल को पकड़ो और बोलो किताब प्रिंट कराओ, राइट? ये सब फिगर जो है ये किताब में, बट इतना तकलीफ करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो इसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। Front of the body is present in the front of the auricle, back of the body is present on back of the auricle. इसके बाद क्या आता है? विंड। आप देख रहे हैं एनर्जी जैसा जैसा एग्रेसिव और एक्टिव हो रहा है, हमारा करस्पॉन्डेंस सिस्टम भी उतना रोबस्ट बन रहा है कि नहीं? यहाँ पर क्या था? कोल्डनेस में कुछ कर, ठंडी के मौसम में कुछ करेंगे आप? विंटर आता तो क्या करेंगे? कंबल ओढ़ के सो जाएंगे, राइट? बीबी को बोलेंगे चाय बना के लाओ, बोलते तुम उठते हो या मारो। ओके, मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा। सो कोल्डनेस इज कंस्ट्रिक्टेड, देयर इज नो मूवमेंट हियर, सो इट्स वेरी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट। फिर आता है ड्राइनेस, थोड़ा सा मूवमेंट होता है, राइट? ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्रीकिंग साउंड आता है, फ्रिक्शन रहता है। It's still not free, it's still not lubricated. Lubrication चला गया, it's dryness, brittle. पत्ता जब रोबस्ट होता है ऐसे हरा भरा रहता है, जब ड्राई होता है ऐसे सिकुड़ जाता है, राइट? हम लोग सिकुड़ते हैं, तो ड्राइनेस। लुक एट द रिवर्स सर्कुलेशन, या? तो ये ड्राइनेस हो गया। फिर ह्यूमिडिटी, इसमें विस्कोसिटी, फ्लूइड्स आ जाते हैं। हम लोग सिर्फ एक सर्कुलेशन देखते हैं, wind, heat, hotness, humidity, लेकिन दुनिया में अभी आप लोगों को बताया है कि 4 सर्कुलेशन है। एंड यू नो, इन रेट्रोस्पेक्ट व्हेन आई थिंक, where did Professor Dr. Minchell said, Dr. Prabhu, every time there are 4 answers, 4 answers, 4 answers. हम लोगों ने सीखा है कि सिर्फ wind, hotness, wind, heat, hotness, humidity, सिर्फ वो साइकिल जानते हैं। हम लोग
darkness, coldness, dryness, humidity, wind, ये साइकिल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और लॉजिकली सही है कि नहीं है? सही है, क्योंकि ये क्रिएशन साइकिल है, ये पैदाइश ऐसा होती है। फ्रॉम नथिंग एवरीथिंग, फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक सेल से कैसे 1000 सेल आ सकते हैं? तो बॉडी में हो रहा है भाई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको सिर्फ हम नाम दे रहे हैं। एंड यू सी ह्यूमिडिटी में और थोड़ा बढ़ गया, ओके? फिर उसके बाद आता है विंड, जहां पर मोमेंट ज्यादा है, जहां पर एरिया ज्यादा है, राइट? एसी डालेंगे, फैन डालेंगे, सिर्फ मेरे ऊपर फैन यहां तक गिरेगा या इससे आगे भी जाएगा? उसका एरिया रहता है, एरिया ऑफ कवरेज। तो विंड इज लिटिल मोर। और क्यों मैंने इनिशियली आपको एनाटॉमी ऑफ द ईयर बताया था, क्योंकि हर एक जगह इसका एक एक नाम है, ये आपको याद रखना जरूरी है। कोई आपको पूछेगा कि हेड डाउन, इस जगह को क्या बोलते हैं? लॉब्यूल। तो हमें कान के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो कोई सवाल करता है कि ट्रेगस किधर है, एंटी ट्रेगस किधर है, हीलिक्स किधर है, तो वी कैन टेल माय फ्रेंड। रेफरल के लिए हमें कॉमन टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है। डॉक्टर साहब हेडेक है या कौन सा इंफ्लेमेटरी स्टेज है? इंफ्लेमेटरी स्टेज किधर आता है? लॉब्यूल के ऊपर आता है। The minute he tells you lobule, you know where it is. Where ये lobule क्या होता है? You should not wink. So that is the reason why I told you initially we study the structure, anatomy, physiology. वो कहाँ पर है, क्या काम करता है? तो इसलिए एनाटॉमी जरूरी है, क्योंकि जब ये फीटस ग्रो करता रहता है तो हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन सा एरिया में बैठा है। और हर बार this line, middle line, no. Use a terminology which is universal. And how do you learn the universal terminology? When you understand the structure. Are you getting the importance now? हम लोगों को ठोसते थे एनाटॉमी पढ़ो, अभी पता चलता है एनाटॉमी क्यों जरूरी है। Okay? So this is the wind, और थोड़ा बढ़ गया, okay? फिर आ गया हीट और रोबस्ट, लास्ट में आता है हॉटनेस। Easy? Yes or no? Okay? Now wait. This is only the head up. आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ head up है. This is a fast growing. Okay? ये बहुत जल्दी होता है। तो इसको प्रोफेसर ने क्या बोला था? Who came first? पहले कौन आया था? Hetero. So this is the hetero stage, and this is called the head up stage. And you'll also see here that this is a 26-week fetus. 28 हफ्ते का fetus है। ये structure आ जाता है। This is the head up stage. Next, what he said was there is a rotation. It goes to the head down, where the entire organogenesis happens. This actually happens. जिसे मुड़ रहा है. Yes or no? So this is what happens. And where does this happen? Again, he takes you back into the auditory canal. Now, if you understand anatomy, you will understand the beauty of Professor's innovation, his imagination. ये वापस अंदर लगा दिया. Okay? So this is the second stage, and the baby is ready for the head down stage. It's ready to come out. Final क्या बोलते हैं? Final touch-up के लिए बेबी बच्चा तैयार हो रहा है. तो एकदम से inverted fetus. फिर inverted fetus में उन्होंने फिर 6 की अप्लाई की, फिर बोला ये coldness stage है. This is imagination. I will come. For everything that he has done, if you read this book 1,000,000 times, I'll bet you can get 1 reason, 10 reasons out of this. I wish I had enough time to convert 1 book into 100 books. But then, एक अकेला ज्यादा दूर नहीं जा सकता है.
तो अगर साथ मिलेंगे तो 1 का 1000 कर सकते हैं। और सिर्फ एक सुपर इम्पोजिशन जो डॉक्टर पॉल नोगियर ने किया था उससे दुनिया चल रहा है। हमें यहाँ पर कितना इंटरप्रिटेशन मिल रहा है? हमें सुजाक का रिकग्निशन के लिए उनके पास जाने की जरूरत नहीं। हम अपने आप को इतना काबिल बनाएंगे तो वो खुद हमारे पास आएगा, बोलेगा मालिक मैं तुमको रिकग्नाइज करना चाहता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ। अगर हक है तो तू आके देना, मैं बैठा हूँ। मेरा काम क्या है? इसके अलावा मुझे और कुछ आता नहीं। तुझे चाहिए यू कम टू मी। And this is saying the truth is when the student is ready, the master arrives. And when the master is ready, the student also arrives. So I want to be ready, whether for you or for me, I don't know, for my patient. I feel happy. मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ. I do it because I feel happy. Okay, so मैं स्वार्थी हूँ. I do it because I get my happiness in this. If your Sujak is going to be established, that's good for you. For me, I'm happy. And जो मुझे खुशी देता है मैं वही करता हूँ. So let's come back and this is again coldness. यहाँ पर फिर आ गया dryness, पूरा invert हो गया. Okay? फिर humidity और बढ़ रहा है. Same principle, humidity. फिर wind. ठीक है? फिर आता है heat और hotness. And this hotness, ये एक representation से ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर का पोटेंसी दुनिया में एस्टैब्लिश हुआ है। और हमारे पास कितना है? अब तक जो हमने सीखा कितना है? 12. And each of these 12 is dependent on each of the energy. Yes? विंड का कोई पावर है? 6 की में जब आप मैनिपुलेट करते हैं, is there any advantage of the energy of wind? Yes or no, or is it a useless term? Any spasm, what do you do? What do you do? Suppose somebody has a stiff neck, what do you do? What is excessive? I can't hear you. Okay, then, ऐसे क्या पकड़ गया? What do you call that? It's a spasm. Spasm is what? What is a spasm? 6 key में excessive wind is a spasm, right? नहीं, आपका 6 के टीचर में मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? स्पैज़म को excessive wind बोलते हैं ना? Yes or no? तो हम लोग उसको कहाँ पर ट्रीट करते हैं? गॉलब्लैडर में ट्रीट करते हैं, लिवर एंड गॉलब्लैडर में, राइट? क्रॉनिक है तो यिन होता है, एक्यूट है तो यांग होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग होमो और हेटेरो के टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं. If it is acute, then it is hetero. If it is chronic, homo. Let us say I have a spasm in the neck. It is a homo condition. So which representation will I take? This is homo. Head down, homo. Yes? तो neck कहाँ पर आता है? Neck will come here. Okay? Neck will come here. अभी किसी का कान पकड़ के 4 सुई डालना, इसमें कॉमन सेंस से ज्यादा और कुछ चाहिए? Which is more easier? Asking Dr. Mohan sir, what is the formula for torticollis, or finding out this point and pat, and the patient immediately gives you a response. Which is more better? Being dependent on, not that you shouldn't give him a call, give him a call. Okay? Give him a call. Okay? So give him a call, no problem. But what is more easier? You're very, very confident that this is the area of the neck, this is the wind representation, this is a condition, this is a homo condition. You treat that and you will see the minute you break the correspondence ball, what do you get? Relief. That is magic. But that's not magic, it's science. They think वो magic है, लेकिन हमको पता है कि ये science है.
So let them live in that illusion of magic. Let us live in the world of science. Are you getting it? Yes or no? Okay, that's fun. अभी आपको समझ में आ रहा है कि एम्ब्रियोलॉजी के साथ में 6 की ऐड कर दिया. Clear? Yes or no? Yes. Good. Okay, ये hotness हो गया. Yeah, this is how it is. Darkness, coldness, dryness, फिर humidity, फिर wind, फिर heat और hotness. इतना समझ में आ गया? ठीक है. अभी शायद आपको प्रोफेसर के ऊपर गुस्सा आएगा क्योंकि वो चुप नहीं बैठते. He's a very restless person. The minute you achieve something, you should keep quiet, no? He will not keep quiet. He'll build more and more and more and more. He'll build the pack of cards so big that you look at it and believe me, there'll be 10 cards, 5, 4, 1 card will be there and कितना भी तेज हवा है, वो एक कार्ड गिरेगा ना, इतना स्टेबल थियरी लेके जाते हैं. Okay? Okay. So you will see, एम्ब्रियोलॉजी में आप देखेंगे ये सब जो स्ट्रक्चर, जो बेबी, जो बच्चा पैदा होता है वो जिस शेप में है, उस शेप को उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है. These are actual shapes. Professor Park did this many years ago, and if my knowledge is correct, these are line drawings that he has done by himself. Some of them were done in the seminar and they were brought into the book. These are his own handwriting. I mean, today, this is good memory. But if I'm going to reach out to a scientific community, I have to be more specific than this. I'll come to what we are doing and what ISA has to offer to you after that. But this, I suppose, is clear. Now we have 2 ears, right? So don't you think we can have the same representation of the right ear and the left ear? हो सकता है? 2 ears, 2 representation. Anybody has 4 ears? Anybody has 4 ears? Huh? No. I thought the women have 4 ears. Everything. Hey, ये आप लाइव दिखा रहे YouTube में? हाँ सर. Okay, probably a diamond ring will do the job. Okay. Now what we're doing is, हम लोग बोलते हैं team. I have a very close person called Dr. Firdaus, who is a doctor and who is also a medical artist, and this is what we're doing. Do you see this? We want to redraw the book so that when we come to you to teach you, okay, you understand this better. And Professor just didn't stop there. We will come to this later on. Okay? Okay? Which is interesting. The book or this is more interesting. We are in the process of redrawing the entire auricular therapy book so that we can give you information. हर चीज, मुझे जो 1.5 साल लगा ये किताब समझने में, आपको शायद अगर आप 1.5 महीना देंगे, मुझसे 1000 गुना ज्यादा आप समझ पाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे. और अगर इसको पोटेंट बनाना है तो आपको समझने की जरूरत है और मुझे समझाने की जरूरत है. तो इसलिए हम लोग रीड्रॉ कर रहे हैं. ये क्लियर है? यस? ऐसे बहुत सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हम लोग इसको मेडिकली भी सही कर रहे हैं क्योंकि C1, C2 ये हम लोग कैलकुलेट करके मेजर करके डाल रहे हैं. ये आर्बिट्रली नहीं डाल रहे हैं. We sit, we apply our medical knowledge, we look at the energy point of it, and then we are recreating it. Not that professor is wrong. क्योंकि अगर आप कोई बोलेगा कि probably, there is a lung condition here, so this is the lung. This pointer doesn't work. It works. Okay. Can't see. So suppose somebody tells you lung, suppose somebody tells you heart, you will be able to identify this, and all you have to do is do the treatment in the ear the way you do it in the corresponding system. Apply a needle.
इससे easy कुछ है? No? The area is small. It's easily accessible. I will come to that. 2:35 शुरू किया था? नहीं. What time did I start? How much time do I have? Okay, so let me rush it up. So these are the figures. All you have to do here is understand it step by step. First, find out the structure of the ear, anatomy, function of the ear, physiology. Third is diseases of the ear, pathology. Then look at the female reproductive organs. Okay? Understand that. Look at the menstrual cycle. Don't be disappointed. Look at the menstrual cycle. Then look at embryology, from the single cells to the whole of the organism, और उसको हम लोग ईयर में लगाएंगे, और 6 की तो हम लोग जानते ही, और इस 6 की के सर्कुलेशन में हम लोग जब एनाटॉमी के रियलिस्टिक फिगर्स जब डालेंगे, लर्निंग विल बी इंटरेस्टिंग. Our job is to make sure that learning becomes interesting. And there's multiple representations there. This is the head down, and you will see this is the arch of the aorta. मेडिसिन, एटलस ऑफ मेडिसिन में जैसे पिक्चर्स दिया जाता है, हम लोग ऐसे ही रियलिस्टिक एनाटॉमिकल फिगर्स ईयर में डालना चाहते हैं, ताकि ये अगर आपको एक्सेस, इसका अगर आपको एक्सेस मिल जाए, दिस इज विच इज मोर बेटर. आई मीन आई एम नॉट कंडेमिंग इट, बट समझ ये आप समझ सकते हैं क्या है, फॉरगेट इट. बट दिस इज मोर ईजियर, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग. यू विल पिक अप द बुक एट 12 o'clock in the night. And you'll keep looking at this figure. For example, this is the knee joint. Put a needle there, you will have relief from pain. There are multiple scientific theories. Let's not go into that. I just want you to be aware of how this book is built. Because everybody buys the book, it is there on the shelf. It's 20 years later also it is brand new. Why? Because you don't understand it. Are you understanding it now? Yes. Okay. Okay? Okay. This is another. These are just representations, and I've given you the ladder. कैसे चढ़ना है मैंने आपको बताया है, और ये फिगर्स. अगर ऐसे फिगर आपको मिलते हैं, तो आपका ट्रीटमेंट बहुत खाना बढ़िया था, देखा. ओके? अगर ऐसे फिगर आपको मिल जाते हैं, तो दिस इज समथिंग लाइक सोने पर सुहागा. You will see the whole representation is there. Do you see this is the elbow, this is a trochanter here? Can you understand how beautiful it was made to represent anatomy? This is the elbow part of it. There is a notch there. Even that we want to project so that you will get a reality image. हम लोग आपको 5 years med school नहीं भेज सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे, हम आपको फील देंगे, और वो फील आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा, आपका कॉम्पिटेंस 100 गुना इंक्रीज करेगा. We want you to keep asking us for more. You push ISA, ISA will drop. You don't push us, we will do it in our own fashion. भूख लगा तो खाना मांगो भाई, गला पकड़ो, कॉलर पकड़ो, जो करना है करो. भूख लगा है, मुझे चाहिए खाना, ये ना आपका काम. हम लोग यही कोशिश में ये काम कर रहे हैं. These are the multiple representations that we have had, and this is the work that we are doing. As simple as that. And the minute we come in, I don't know, but I cannot give back to Professor Park. But come se kam, I'll have a happiness that I understood something that he did, and I gave it some shape, some respectability. ये हमारा फिगर्स है, और ये सब 6 की हेड अप हेड डाउन में आता है. ओके? इट्स इन द प्रोसेस. इंटरेस्टिंग? इजी? Yeah? Okay. Yeah. This is what I said. The intrauterine growth, stages of growth from the embryo to the fetus, head up, head down, circulation types. Okay. यहाँ तक तो ठीक है. Okay. I will take some. What do I do? Okay, before the roller coaster. Now, this is with regards to the first volume. Part of the first volume deals with this.
Now let us look at the second volume, which talks about the internal organs. The principles are the same. एक बार आपने ईयर का एनाटॉमी सीख लिया तो उसको याद रखना जरूरी है. 6 की तो आता है. 6 की में when you talk about the 5 elements, कितने organs, कितने meridians हैं? हाँ? 12 meridians. तो मेरिडियन के corresponding organ कौन से है? मेरिडियंस के ऑर्गन कौन से? 12 ऑर्गन्स. तो सेकेंड वॉल्यूम में उन्होंने हर ऑर्गन का रिप्रेजेंटेशन ऑरिकल में किया है. सिर्फ उतना ही है. ये होल ह्यूमन बॉडी है. ओके, या व्हाट इज दिस? दिस इज द हेड. दिस इज द फेस. फेस को उन्होंने ऐसा डाइसेक्ट किया है. ये समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन है? डिफिकल्ट? ओके, we'll come. Okay, you will, before we get into this, we'll come to this. How do I take it forward? I want to give this to you. Head, neck, chest, abdomen, 2 hands, 2 legs. इसको क्या बोलते हैं हम? Which corresponding system is this? Standard. Yes? इसको हम लोग standard individually बोलते हैं. ठीक है. तो कितने हाथ है? 2. ये दोनों ऐसे ज्वाइन कर दिया. इसको क्या बोलते हैं? United. फिर हो गया closed. Okay? और फिर आ गया open. ठीक है? So 4 individual, united, open, closed. इसको हम लोग 6 की के साथ डालते हैं. Look at the possibility now. 6 individual, 6 united, 6 closed, 6 open. कितने हो गए? Right? Then इसके बाद आता है हेड अप. तो कितने हो गए? हेड अप, विंड इंडिविजुअल. हेड अप, हीट इंडिविजुअल. मैथमेटिशियन कौन है भाई? मुझे भाई मैथमेटिशियन को आना चाहिए. Are you looking at the quantum jump? Initially there were 4. Individual, united, closed, open. Clear? इसके बाद 6 की आ गया. तो इंडिविजुअल का 6, यूनाइटेड का 6, क्लोज्ड का 6, ओपन का 6, 24 हो गया. हर 24 का हेड अप और हेड डाउन करेंगे तो कितना आएगा? हाँ? हर हेड अप, हेड डाउन 96 सर. कितना आएगा? 96. 96. I don't know. I was poor in mathematics. I still am poor. But I'll believe you on that. So you get 96. Yes? Now what is the advantage of united? Shift. What is the advantage of united? You see this? This is united. Okay? So you will see that it is like this. Now suppose you want to open up the body, internally अगर हमको देखना है तो क्या करेंगे हम? सर्जरी करेंगे, right? Medially divide करेंगे, तो ऐसे खुल जाता है. तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा? Yes? तो यही एडवांटेज है क्लोज्ड और यूनाइटेड का. Do you get it? Okay? तो यूटिलिटी के हिसाब से
United, sorry, closed, open. Done? Okay. Now, यही थियोरी लेके उन्होंने इंटरनल ऑर्गन्स में डाल दिया. ओके? ये पूरा जो ब्रेन है ये काम में लगाते हैं. इसका एडवांटेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू माई क्लिनिकल प्रैक्टिस. जैसे जैसे आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ता जाता है, पेशेंट्स के भरोसे आपके ऊपर ज्यादा होते हैं, और पहले तो आप रेफर्ड केसेस देखते हैं, आपको रिपोर्ट्स मिलते हैं, तो बिल्डअप करने में आसानी होती है. लेकिन एक ऐसे समय भी आएगा जब आप प्राइमरी केयर बन जाएंगे. किसी को कुछ हो गया, आपने किसी के फादर को, मदर को, अंकल को, आंट को, ब्रदर को, जो प्रॉब्लम था सब ठीक कर दिया. उसके दोस्त को एक स्ट्रोक हो गया, बोलते जाओ डॉक्टर प्रभु के पास जाओ, प्रभु के पास जाओ, या धवल के पास. धवल ना नहीं बोल सकता है. धवल ने इतना मुश्किल चीज सब ठीक करते सडनली एक फोन आता, बोलते सर, धवल सर, मेरा एक फ्रेंड है, उसको स्ट्रोक लग गया. अभी धवल हिल रहा है, स्ट्रोक क्या है, इसको तो हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है कि नहीं? स्ट्रोक अगर किसी को होता है, आप सुजाक में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे? कॉमन सेंस, हॉस्पिटल. बट दे हैव सो मच ऑफ फेथ ऑन मी, ही विल गिव यू अ कॉल एंड से दैट समबडी हैज गॉट अ स्ट्रोक, एंड यू नो दैट देयर इज अ ब्रेन करेस्पॉन्डेंस पॉइंट, एंड समबडी हैज टोल्ड यू find the correspondence point, treat the correspondence point, and there's also a book called Sujok in Emergency. Now, where is your data and where is your evidence, and how will you proceed? This is where medicine comes. This is where knowledge comes. Brain to hai. Okay? Hematoma. What is hematoma? Hem kya hai? Blood. Which energy? हीट. ओके, एक तो हीट आ गया. दूसरा, क्वांटिटी, टेक्सचर ऑफ द ब्लड क्या है? विस्कोसिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी. हेमेटोमा एक कलेक्शन हो गया. तो हेमेटोमा, ब्लड क्लॉट इन द ब्रेन क्या होता है? कैपिलरी. सी, डोंट आस्क मी, एक आंसर नहीं होता है. पहले हेमेटोमा का हीट आ गया, फिर ह्यूमिडिटी आ गया, फिर कैपिलरी बर्स्ट हो गया. क्यों होता है? Somebody, please don't murmur. Hotness is one there. Can it be coldness also, dryness also? Yes, because they become brittle, atherosclerotic plaques, dryness. So you find out what is the cause for that, whether it is wind, whether it is heat, whether it is hotness, whether it is humidity, dryness or coldness. Find out the representation on the brain like this. This is an actual representation of the brain on the ear. ये कान है. ओके? फिर कोई MRI लेके आएगा. MRI में बताएगा कि इंटरपैराइटल सल्कस में या सेंट्रल सल्कस में या इंफीरियर फोकल सल्कस में एक हेमेटोमा है. आपको क्या करना है? आपको पहले से ही ब्रेन का एनाटॉमी पता होना चाहिए. भले ही आपको MRI पढ़ना आता हो ना आता हो, छोड़ दो, वो हमारा काम है आपको सिखाना. लेकिन आपको ये शब्द तो पता है क्योंकि आपने सीखा है, और आपको ये भी पता है कि ड्राइनेस से हुआ है, ह्यूमिडिटी से हुआ है, कोल्डनेस से हुआ है. वो इंटरप्रिटेशन आपको बुक से मिल गया, और उस पॉइंट के ऊपर आपने नीडल डाल दिया. तो काम करेगा या नहीं करेगा? हाँ, इसका बाप भी करेगा. I'll give you an example. You know, I become very arrogant when I see this. मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. Probably double, can I take 10 minutes now? 5 minutes? I'll finish with this. I used to work in a government hospital, and there was a class 4 person who had severe appendicitis, acute appendicitis. उसका इलाज क्या है? Acute appendicitis अगर रप्चर हो गया तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? एक्यूट एपेंडिसाइटिस, सर्जरी. यस. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भारत अभी का पता नहीं, लेकिन बहुत साल पहले, दिस वर्क आई हैड डन इन 2004, so I was very new. I was working in government hospital Harihar.
It's a small town near Davangere in Harihar, after Davangere. So this guy was admitted to the hospital. The surgeon said, give me 5,000 rupees. उसका महीने का तनख्वाह 5,000 नहीं है, प्योर का काम करता है. सर्जन बोल रहा है 5,000 रुपया दे दो, नहीं तो सर्जरी नहीं करूंगा. तो सर 2 दिन दो, एडमिट हो जाओ, आई फ्लूइड्स लगा दिया, बेचारा सो रहा है. किसी ने बोला डॉक्टर प्रभु के पास जाओ. यार मैं सर्जन नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन कीड़ा कट चुका है. बोलते सर आप कुछ करो, आप बहुत लोग के लिए कुछ करते हैं, आप भी कुछ करो. और मेरे पास यही किताब है, what I did. It is an acute inflammation. Looked at the internal organ, large intestine is also an organ. Found out the point, put the needle. The student lifted his hand like this because it's so painful. इतना sensitive है, तो भाई लेट जाता. Intravenous fluids हैं, acupuncture डाल दिया. By evening the pain subsided. The fellow lives even without a surgery today. उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया, inflammation नहीं है. ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा. This is a calculated risk. I took that risk. Somebody will say it's negligence, somebody will say it's an offense. लेकिन what's life without a few risks? वो रिस्क के लिए, वो सिचुएशन के लिए तैयार करना ISA का काम है. और आपको ISA को पकड़ना चाहिए. ऐसे ऐसे कोर्स तैयार करके दो जो हमें इतना कॉम्पिटेंट बनाए कि हम तलवार के जितने भी एज हो कंफर्टेबली बैरफुट चल सके. So this book, so very simple. These are multiple representations of the human organ on the human ear. Okay? Now the problem is you have only see the brain in one dimension. Right? For example, what is this? What is this? Can't see, sir. Heart. Suppose I hold it like this. Right now everybody knows this is a heart. But if I hold it like this, some of you may know, some of you might not know. Okay? If I cut it open, maybe half of a quarter of you will know. Why? Because most of us have seen the figure of the heart. But if I give you a figure like this, you will not know what it is. ये कौन सा jelly दिखा दिया भाई? Unless you know that there is a posterior sulcus, central sulcus, longitudinal fissure क्या है, then you will be able to find out that this is the brain. Interpretation क्या है? इसको ऊपर से देख रहे superior view, ऐसे देख रहे inferior view, lateral view, right lateral, या medial. तो प्रोफेसर ने हर दिशा में देख के ऐसा इंटरप्रिटेशन डाल दिया. ये क्या है? अरे पता नहीं यार, ये कौन सा जीव जंतु है, ये कहाँ से उन्होंने देखा, व्हाट क्रीचर इज दिस? दिस इज जस्ट द इंफीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन. ब्रेन को हम लोग नीचे देख रहे हैं, ये क्या है? ऑक्सीपिटल लोब है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड नो एनाटॉमी एट द टिप ऑफ द फिंगर्स. ठीक है? दिस इज द इंफीरियर व्यू. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन मोर केस. And I'll stop at this because he will get angry. He will not feed me in the evening. There's one, how easy it is to treat trigeminal neuralgia. How easy it is to treat trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia. मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है. Not easy. But you will see that the root of the trigeminal nerve is here. आंख बंद करके वहां पर ईयरप्लस नीडल डाल दो. वापस पेशेंट रोएगा नहीं. एक बार रोएगा क्योंकि दर्द करेगा when you insert the needle. After the fellow will do whatever it is that you want to. The trigeminal neuralgia will be gone. The advantage of auricular therapy is you don't have to call in every day. नीडल लगाओ, embedded needle आता है, बहुत किस्म के needle हैं, बहुत type of equipments are there. Press it, put it on the ear, tell your patient to take care of it. Ask him to go back home and keep pressing it. Correspondence is a pressure point. It will work. It will be effective. Very progressively, his pains will come down. Now, I have 3 instruments here which I use. This is an auricular probe. इसका आप dimension देख रहे हैं? Can somebody? Oh yeah.
हाँ, ये देख रहे हैं? ओके, इसको हम लोग, ये अगर ऑडिटरी कैनाल है तो हम इसको अंदर डाल के ऐसे ऐसे देख सकते हैं। और एक लाइट सोर्स है, दिस इज अ लाइट सोर्स। This is what I do. I keep innovating. I want to make life easier. Okay, so light source is in here. Okay, so I get my focus. Now you also have a loupe, a magnifying glass. ये चश्मा है ना, इसी टाइप का एक magnifying glass आता है। Illuminate करो, देखो ये इतना बड़ा दिखेगा। तो यहां पर जितना छोटा पॉइंट है 4 गुना 10 गुना ज्यादा दिखेगा, आपका एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा। एंड द मिनट यू आर एक्यूरेट, you will press it like this. Then I have another, ये मेडिकल डिवाइस है, इसको आर्टरी फॉर्सेप्स बोलते हैं। एक नीडल निकालो, यहां पर उसको एम्बेड कर दो, एक स्पैचुला है क्योंकि छू नहीं सकते हैं, नीडल डालने के बाद ऐसे कर दो, हो गया, थेरेपी खत्म। जितना सेंसिटिव पॉइंट है उतना नीडल डाल दो, और एक माइक्रोपोर टेप विद प्लास्टर भी आता है, विदाउट प्लास्टर भी आता है, वैकेरिया सीट्स भी आता है, मेटल बॉल्स भी आता है, मैग्नेट्स भी आता है, जो मर्जी लगाओ लेकिन पॉइंट सही लगाओ। 1 + 1 equals 1 + 1 equals 1 + 1. 1 + 1 is 2, but we make it 11. Dr. Mohan says 2, that means 2. So if you find the right point and if you put the needle there, your result is sure to come. This is my experience. I just want to badal dina diya. I just want to show you, and these are all the internal organs. इसको समझाते समझाते समझाते, इसको केस बाय केस कोरिलेट करते करते जिंदगी गुजर जाएगी। Okay? This is the lung. This is a different view. These are 2 cases. Yeah. And these are my confirmative cases. There is a wedge compression fracture of the vertebrae here, given up by doctors in 4 states. The lady comes to me. I'm shivering here क्योंकि medicine में बताया गया, I mean I don't know what I can do for this, but then I take a risk. जाएगा तब क्या जाएगा, 4 पैसे का इज्जत ही जाएगा ना, एक पेशेंट झुकेगा, राइट? तो चलो रिस्क लेते हैं। लेकिन you know, as a doctor you have to convince, you have to talk to your patient and also be genuine. Ma, I don't know, but I'll try. I'll give you my best shot. You don't pay me. If it works, pay me. Okay? I worked with this patient for 3 months. At that time I didn't have ear plus needles. He was selling it at 250 rupees. I didn't have the money, so I would buy 1 rupee needle from him. I put it in the, I had one 6 key. He said, don't use the 6 key needle inserter to press. Use the gravity. I used to use the 6 key inserter, press, pat, 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 pat. 90 days on the auricle, different representation. That patient, even after 23 years, is walking, trekking, cooking, living a more than normal life. The second case, this is one case which I saw 3 years back. This is a case of paraplegia. Have you heard of Superman? Yes, no? Yes. Who's the original Superman? Huh? Christopher Reeve. मेरे ज़माने के आदमी। Yeah, Christopher Reeve fell down from the horse and he was quadriplegic. He was confined to the wheelchair. Why? Because he had an injury in the cervical area. He was paralyzed neck below. This is the same case, paralyzed neck below. Believe me, this patient was lying on the bed. Now what this patient is able to do is, with help, he is able to get up. He has bladder control to an extent. With acupuncture and moxibustion. Have you heard of thread moxa? Have you seen thread moxa? Yes. Huh?
So please catch Ashok Kothari and Dr. Minchul and ask them to get thread moxa for you and ask Dr. Mohanan to produce the micro. Everybody is used to cigar moxa and moxa with the sticker. Zindagi आसान बना देता है, लेकिन thread moxa आप उनको पकड़ के मंगाओ. Point के ऊपर रख दो, जला देना, heat देगा. This is probably a dryness coldness condition. Dryness coldness is subjugated, anti-subjugated by what? What? Hey, I can't hear you. Heat. Heat is what? Relief from pain. Heat is what? Growth. Heat is what? Sensation. काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और क्या चाहिए? चाय. Thank you very much. Thank you, Prabhu sir. You have explained honorary auricular system in a very simplest form and it's very interesting. Is there any question? During lecture by Dr. Wajida, she narrated that professor has said that you should not do auricular and you should not tell the neutral. Please talk to Dr. Minchul Park. Skirt. Okay. Here also. Those not here. It was auricular, sir. I second the statement of class. Earlier, Professor Park used to promote scalp acupuncture as well as auricle, and then finally, in one of the seminars, he told that those cosmetic systems which do not have borderline, that means diaphragm and borderline, they are left for the divine, not to be the human influence, because they are closed. So I was also part of that, and since then I stopped reading auricle actually. Earlier I was interested in the auricle also. Since then, when I heard this lecture of Professor Kaju, he clearly said that those systems like scalp also same, because no borderline, here also no borderline, so they are left for the divine influence, not for human influence. It might be very powerful. In the same time, might be very dangerous. So when we're using for this one, as Dr. Prabhu said, there's so much detail we need to catch up exactly. Might be we need to more develop the instrument to catching this small, a lot of homework. And I love you because I found him. You know, in study medicine, the Hippocratic Oath says, I will treat the sons of my teachers as my brothers. Doctors, yes? The children of my teachers are my brothers. I'll share the healing art with them. I have nothing to share. We'll differentiate. Next question, please. Anything else? No? I would like to call. Okay. Thank you. I would like to call Vanna ma'am and Manisha ma'am to present memento.
ये लेक्चर का उद्देश्य खाली ओवरव्यू देने का था कि ये भी है. Right now it is not on any decision कि आगे क्या करना है. जस्ट बहुत सारे सालों से इस विषय के ऊपर बात नहीं हुई थी, तो ये प्रोफेसर ने क्या ऑरिकुलर एज ही मेंशन ऑलरेडी somebody has already developed, बट उसमें प्रोफेसर ने क्या कंट्रीब्यूट किया एंड हाउ दैट इज मोर रिलेवेंट, दैट इज व्हाट द इंटेंशन टू शेयर. So I hope this message is delivered very well to the audience and will be appreciated in the future. Thank you, Dr. Prabhu. We are running short of time और अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए है. Due to short of time, now we jump into the paper presentation session. First we do the paper presentation and post to that we are organizing one quiz game. ओके, जहां थोड़ा एंटरटेनमेंट, लर्निंग, ये सारी चीजें हो सके, है ना. उसके बाद में टाइम रहा तो मैं एक सेशन लेने वाला हूं, एक्टिविटी एट अ ग्लांस ऑफ ISA. पिछले 10 साल में हमने क्या किया उसके ऊपर. इफ टाइम परमिट्स, इफ टाइम डज नॉट परमिट, आप लोगों को जो सोविनियर दिया गया है उसके अंदर 20 पेज लिखे हुए हैं, है ना. रीड योरसेल्फ. और कहीं पर क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अवेलेबल हूं. ओके, सो विथ योर परमिट वी विल हैव अवर नेक्स्ट सेशन एंड आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन डॉक्टर सुरेश आचार्य जी फॉर हिज केस प्रेजेंटेशन. आफ्टर डॉक्टर सुरेश आचार्य, I request Tapan Pandya to be ready. You have to vacate this place for 10 to 15 minutes, strictly 10 to 15 minutes for us to rearrange for the quiz. Okay, so you may be freshen up at that time and within 10-15 minutes we will gather again. We also have to do the closing ceremony for the program. So now Dr. Suresh Acharya, please. Dr. Suresh Acharya passed his MBBS in 1982. He passed his diploma in industrial medicine and occupational disease from Mumbai, diploma in diabetes from UK, and done her TCM and practicing TCM since 1990. Certified courses in asthma, COPD, diabetes, heart disease, hypertension, neuropathy, diabetes, retinopathy, food management, and certified course in endocrinology, practicing Sujok therapy since 1994. Sir, do लगा दे लगा. Hello. Smile evening हो गया अभी. Before I start my lecture, I just have some suggestions to your practitioners. If you are using needles, be careful, because one day the Sujok will be recognized by the government and you will come under the law. So the needles which we are using should be disposable at any cost. Don't reuse the needles, or they should be sterilized. Now why I am telling this? Because putting the needle is a danger to you also. Now patient has got hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C. These 3 viruses, they are on the point of where they are relaxed. Virus is this. So if you are using these needles, be careful, because some patient may have hepatitis B or C previously, and if he goes to the hospital, he will be detected and he will sue in the court.
So this is very important. Second thing, if possible, do the test of these patients for hepatitis B, hepatitis C and HIV before you treat. Sujok with the needles, no matter if you treat with the magnets and CDs, doesn't matter, colors doesn't matter. But if you are using the needles, be careful, because in all the hospitals it is now mandatory. Before any surgery, you are supposed to do hepatitis B, hepatitis C, HIV, because patient may take you to the court. Now, so many court cases are going on, and they are with the you must bring the person. So this is very, very, very important. Okay. Now, second thing, I will not take much time because you all are tired, so many results. This point, correspondent point, maybe a layman's job, because whole pancreas. We want pancreas as an organ. We have to look at the entire intestinal system. Pancreas as an organ and its tissues and finally cells. If you can reach the cells, you can stimulate beta cells to produce insulin, alpha cells to produce glucagon, delta cells to produce somatostatin, and T cells if required for peptides. Okay. So these are rare clinical cases in Sujok in my practice. Before that, I just introduce you how from allopathy I went to Sujok. I stay in Mumbai, Salam Dombivli, and there was one participant who was read and said, how is it possible to cure the disease? Bell's palsy, and this patient has acoustic tumor. It's a tumor in the ear, and he got operated in one of the best hospitals in Bombay through the nasal route. And this was a new procedure. Surgeon came from France, and there was a workshop. The operation was successful, but the patient's facial nerve was paralyzed, and he became Bell's palsy. And he was working in one of the top job. And 3 months they tried electrical stimulation. I read this Sujok book. I used thumb and corresponding part, put the needles. To my surprise, in 10 days, his facial palsy moved. This was the first case. I got so much influence. I went to Sujok therapy, and by that time, Professor Park used to come to Bombay, and there I went with all his lectures, from Bombay to Kotaris, Jaipur. We have detailed all the courses. When we have the advantage to have basic, original, pure knowledge, undiluted. And that's how I started. Within 3 months of this my learning, I got another case. A child came, a child was brought to me. He was brought for the cough and cold. He said, I want to get this cough and cold cured because my son's congenital hernia has to be operated. We have got appointment, we have got 11 days with it. I said, if you have 11 days, give me some 10 days. I may try, I don't know whether I will be successful or not. There, my correspondence system, I gave to the child, and the congenital hernia disappeared. Now that fellow is now 35 years old man without recurrence. That was the magic power of Sujok. I utilized this faith and learned all the steps of Sujok,
with Professor Jung Park. And we used to meet, we had some dinner together, lunch together with Professor Park. If I missed one day, he used to ask me where Dr. Acharya. It was so much we were friends. He gave me a job. Why don't you spread this knowledge to the people? Then I started taking classes in my clinic. And every Sunday, I used to teach Sujok to the people. And there was one seminar arranged by Mr. Chandni. And he said there are 300 people. We have arranged a seminar, 116 other things. So I accepted the job, and in my whole career, I taught 5,000 students. Then I was called in Nigeria to teach this Sujok, especially Siski. There I was for 1 month, and in 1 month, I taught 100 students in Nigeria. This is how the journey was going on. And Sujok became very famous to me. And I slowly started my allopathic practice to acupuncture. I am a student of TCM, Chinese medicine. That also I am treating. But Sujok I was paying more attention. Now my daughter is also in this field. And she is helping me in doing Sujok practice, Sujok Siski and other things. And what I want to tell you, I done the course with, recent course with Ashok. And his profound knowledge has helped me to find the mistakes I have done while teaching. So much so details. I appreciated his efforts. And the efforts he has taken, the time he has given, so profound. We have never given the time. Frankly, I am admitting. And the knowledge which he has got in the correspondence system, I will be utilizing again. My whole correspondence system was revised. Thank you, Ashok. Right. Going to the cases, these are the rare cases where there was either no cure or less further. See, this lady had come to me with a relative, and she came for allopathic medicines. Allopathic medicines, I just asked, why is eyes are drooping? She said, it is from the 17 of years my age. These eyelids are drooping. I said, what happened? So she had an infection of the eyelids, and there was a mucopurulent discharge. The discharge got cured, but she was not able to lift her eyes. I said, give me 15 days. I will try, but I don't promise 100%. Now in this case, this lady, because this was a surgical case, if you do the surgery, the worst part of it, she will not be able to close the eyes, and the eyes will become dry, and for the whole of your life, you have to put the drops because there will be infection, dryness, etc. So this is a magic which you see at the triology. These eyelids became not able to lift, so sedated. Now this is a recent photograph. She said she was 40, when she came she was 41 years, and this problem was persisting since 17 years of her life. You can imagine how chronic it was, and see the improvement. And the important part, her children become very happy. Because what they say, mother said, when I used to have the photo session, my children say, lift your eyes, lift your eyes, lift your eyes. She was unable. She could do it. Now this is a recent photograph, we have 15 days.
Last 2 years, we have followed these patients either on the WhatsApp, direct communication, or she comes to me, no relapse. So the lady was 40 reversed clinical with the complete job, inability to lift both the eyes. Since her 17 of her age, no history of diabetes, hypertension, paralysis, myasthenia gravis, no such family history. And past history at the university suffered from infection of eyelids, and there was mucopurulent discharge from both eyes. She got treated for the infection, developed drooping eyes of blood called ptosis. It remained to the age of 41 years, you can imagine. And she also treatment 15 days. On the 1st July 21, she recovered within 15 days. Her recent photographs at the age of 43, as I was showing you, she has no recurrence, patient and family both are happy. She was treated in the trilogy as follows: homo, neutro. That is actually you may be doing. The eyes are considered as neutral organs because what I thought and I get it right. Eyes were considered as neutral organs because they are in the place in the cavity, homo, and they are protruded, hetero, and they have the hetero functions of transferring information from outside to the brain. Thanks to originator, Professor Jupar, for technology. This is another case, 28-year-old lady, and she had the psoriasis for 8 years. Hands as well as legs, I have not taken the photograph of legs. And we know, in allopathy we don't have permanent treatment. Whatever we need, skin applications is different. So when she came on the first day, you can see the lesions. In the 15 days, lesions disappear, and this is a recent photograph. She is free of psoriasis. Wonderful result. So 23 years, having psoriasis for 8 years, on the dorsal aspect of forearm and legs. She has tried every possible treatment for 8 years, but without any success. We have given her treatment 2 years back, and she was treated with 60 treatment. On lung meridian, sedate heat, sedate humidity, 25 coldness, plus brain sedation. Psoriasis vanished completely with 2 settings of 15 days each. And she was followed for 2 years without any recurrence, thanks to 60 visit of Professor Ju. This is another case. This is psoriatic keratitis. Psoriasis plus cracked feet. And this we did one day. Since the 15 days, the sore has become almost normal. So 20-year-old male student came for instead of cracked skin on both hands and the feet more than 1 year, and he was diagnosed with keratosis, second to psoriasis, and he was given 15 days trial method. He recovered in 15 days and followed for 2 years without recurrence, thanks to trial. These are the unusual cases. And last one is, this lady had 43 years, history of chronic myeloid leukemia for more than 10 years. And the WC count used to be 80,000 per cells, and she was on the tablet called Hyderabad TDS. Even then the WC count drop did not come below 80,000. And she was treated with 6 on lung meridian, dilation, lung heat tonification, lung wind tonification, and WC trained on 10,000. When her pathologist saw this report, he immediately rang me. What have we done to this patient? Because this patient I am following for last 10 years, and the WC count was never below 80,000 even after taking Hydra treatment. And she remains with this count till the end of the life. Oh, something what I found, I will be wrong. Professor's son is there. I may be wrong, you will correct me.
This theory combines drive gene produce with correspondence system. That's very important. 4 forces: hetero, homo, neutro. Basic process of practice of creation, maintenance, dissolution, and recreation of existence. In correspondence study, we have standard corresponding homo, insect corresponding neutro, min corresponding hetero, and micro min corresponding neutro. This I say neutro, hetero, as per principles. The geometry, 3 parts: trunk, neck, head, neutro, neck, neutro, thorax, hetero, abdomen, homo. Now the upper extremity, you can homo arm, forearm neutro wrist, and hand is neutro. In the thigh, in the lower extremity, your homo thigh, leg is hetero, ankle is neutro, and foot is neutro. Our hand is similar to body and foot is similar to hand. So in hand and foot, there is a corresponding thing for the whole body. Hand and foot, we have standard corresponding thing: hetero, insect, neutro, mini neutro, and mini micro is neutro. In many correspondence, we have undifferentiated correspondence of the whole body. If you see the mini system, last part of your finger, we can imagine mini hand in the hand correspondence. Mini hand in the hand correspondence. And that forms the base of micro-mini correspondence system. You can imagine there is a hand, there is again insect correspondence, there is another hand. Now this is the imaginary. The micro-mini correspondence is just single cell or point which represents metaphysical whole human body. See, now correspondence system gets over here. Now metaphysical system starts in terms of 4 points: hetero, neutro, and neutro. This point is called ECO. On each tip of finger there will be 4 points. The meaning is each cell contains information of the whole organism. That is what is DNA or the cell. 1 point will represent the whole body or DNA. That is why the dolly has been made from one. Now you have 0, neutro, hetero, neutro, homo, and neutro. Represent whole body as neutro, homo, hetero, neutro. There is many corresponding in insect correspondence system. We have the insect corresponding. This system, this point, you can put it here. Now we have pre-proximal phalanx, that is here and where your finger waves. This is a neutro-mini correspondence system. Proximal phalanx, homo-mini correspondence system. Middle phalanx, neutro-mini correspondence system. Terminal phalanx, hetero-mini corresponding, and nail part, 0 neutro-mini correspondence system. So you see terminal hetero and 0. This can be seen in the finger. The pancreas point on each phalanx will represent many micro correspond, which is nothing but each type of hormone cell of the pancreas. Now we have come to the cellular level. For example, pre-proximal phalanx, gamma cells feel peptide hormones. Proximal phalanx, alpha cells, they produce glucagon. Middle phalanx, delta cells, they produce somatostatin, and terminal phalanx, beta cells produce insulin. So now it is possible to go to the cellular level to have the corresponding point for particular hormone to produce particular hormones. For example, if you want to say produce insulin, go to the terminal phalanx, find out corresponding point for the pancreas, that is nothing but beta cells, stimulate, give insulin. Produce, if you stimulate say middle phalanx, that is somatostatin. Somatostatin will control both insulin as well as glucagon. And proximal phalanx alpha cells will produce glucagon.
So these are beta cells. For example, diabetes mellitus is a disease of insulin secretion, action are the both. Insulin secretion from beta cells, hetero cells, glucagon secretion, alpha cells, homo cells, somatic secretion, delta cells, neutral cells, and peptide secretion, P cells of the gamma cells. This new hybrid system, which make use of correspondence system and tridimensional, it is possible to reach at the cellular level. Now you can have both the things. You can give correspondence point by homoelectric principles. You can because we are using these C peptides. So now they are C peptide preparation has come to the market. To prevent neuropathy, they will put C peptide because the insulin, artificial insulin, they don't have C peptide. Now we have combination of C peptide. Combinations down will become, along with insulin, combinations down will become, along with insulin, this product will be added. Because the natural secretion from the beta cells. By selecting particular finger toe, it is possible to influence at each part of insulin secretion. So if you are giving insulin to have C-peptide, give corresponding to midiphalix. Now to have amylin, give corresponding point out pre-proximal phalanx. This is a part of insulin and diabetes. Why? Because I am in the diabetic field. I have more than 1,000 patients with diabetes with me. And we are finding it's very difficult to control by, say, insulin. The cost is a big problem. And second is hypoglycemia. If you give too much insulin, the patient gets fainting because the sugar comes below 70 and then we treat it. So we can make use of this system, and we are trying. We are so far not trying. The papers presented before this, I would like to have a suggestion. Unless you have double-blind study, the people at higher level do not accept your science. For example, even for the correspondence system, you give correspondence in the organ, and some patients give some haphazard, and they see the difference. Tesla, Nikola Tesla was a genius man who brought electricity to the world, alternating currents, Tesla's coils. He had 300 patents on his name, very genius person. And he used to believe in these numbers. Now when he goes to the hotel, he has to have 3 rounds around the hotel. He used to select the number which will be divisible by 369. And he used to watch his... On Dr. Suresh Acharya to receive a token of love from Dr. Minjul Park. And last but not the least, I would like to call SGT Tapan Pandya to receive his token of love from Dr. Minjul Park. Other than this category, one very important moment. This is how we hide our mistakes. Actually, Momento was not ready when will be best in the world, which is comparably with other medicine and other organizations. Thank you. Before I start my
So we will be having a short break. Just a minute, please. So we will be having a quick break. High tea ready hai. I know it is a high tea, but I recommend all of you to finish as early as possible. Meantime, we will rearrange the venue over here while you are taking your high tea. And after a high tea, we have organized very interesting quiz session for you. And we don't want that anybody miss that. Okay. So kindly take your high tea. By that time, I request the Naivedyam team to rearrange as discussed, and then we will start the quiz. And following to the quiz, we will be having our closing ceremony. मजेबाजी कर रहा क्या बोले आपके मतलब मेरे को क्या करना है सर मैंने एक बार चेक किया चालू था मैं हट गया उधर अंकल मैं यहाँ बैठा हूँ कहाँ गया यहाँ से नहीं बैठा था ना मैं वो बस वही मी काय करू सांग अभी क्या मतलब है तो हो गया अभी खत्म सब खत्म हो गया अभी आया अभी खत्म होगा बहुत सर यहाँ पे क्या होने वाला है सर सर आम्हाला पण तुला थांबते आम्हाला का नाही घंटा ना आता सांगतो बोले वरतं घेऊन चल वरतं घेऊन चल वरतं वरता प्रोग्राम तिथे खाली नाही आहे ठीक आहे बंद करत आहोत सांग बंद करतो म्हणून
बंद करू का कॅमेरा? काढू का? काढू? धवल भाई कल से खाने की बात कर रहे हैं और आज ये 7वां खाना हम खा रहे हैं। तो क्या हुआ? प्लेट छोटी थी, प्लेट छोटी थी और पेट भी छोटा पड़ गया। यह संगम हमने यहाँ देखा। प्लेट छोटी थी और पेट भी छोटा पड़ गया, यह संगम यही देखा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन चारों दिशाओं का संगम भी यहाँ देखा। There are all therapies from east, west, north, south. और ज्ञान, परिवार एवं खाने का त्रिवेणी संगम भी यही देखा। ज्ञान, परिवार एवं खाने का त्रिवेणी संगम भी यही देखा। भागीरथी की गंगा का ज्ञान प्रवाह भी यही देखा। एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी व नागपुर की स्त्री शक्ति का बल यहां देखा। युवा व स्वस्थ भारत के सपनों को साकार होते देखा। 100 मर्द और एक दवा, 100 मर्द और एक दवा, ट्रीटमेंट थ्रू सुजोग थेरेपी का सपना साकार होते यहां देखा। नागपुर में स्त्री शक्ति का जीवंत उदाहरण देखा। दिस इंटायर प्रोग्राम इज अरेंज्ड बाय ऑल लेडीज ओनली। डॉक्टर मोहन और डॉक्टर पटोदिया के सामने डॉक्टर मोनिशा का मंत्रा भी देखा। कोटा की डॉक्टर श्वेता व बड़ौदा की डॉक्टर रेशमा को सुजोग का कमाल बताते देखा। यहाँ पर भी स्त्री शक्ति का दबदबा देखा। कल पेपर प्रेजेंटेशन में सिर्फ 2 लेडीज थी और 2 स्पीकर्स के सामने एक लेडी स्पीकर भी थी। 50% एंड 100%। और दिल्ली की स्माइल भूपेंद्र जी में देखी और जयपुर के मिश्री मावा व घेवर का मिठास अशोक जी में देखा। आजकल उन्होंने खाना बंद कर दिया है, फिर भी पहले वो दूध के बूंदी के लड्डू सबको खिलाते थे। खाना बंद कर दिया, लाना बंद कर दिया। ये तो सही बात है, अगर खाएंगे तो लाएंगे, नहीं खाएंगे तो क्या खिलाएंगे। मोदी जी के सपनों का गुजरात के नागपुर में, मोदी जी ने जो सपना देखा था गुजरात के लिए, तो मोदी जी के सपनों का गुजरात की नागपुर नगरी में, अहमदाबाद नहीं, अक्खो गुजरात नागपुर में सबसे आगे देखा। कैसे आगे देखा? 17 थेरेपिस्ट गुजरात से आए हैं। धवल भाई के लिए आपको क्रश करना है उसको, क्यों? ही इज गिविंग फेवर टू गुजरात। 2 स्पीकर्स गुजरात के, पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 स्पीकर गुजरात के। क्विज भी गुजरात खिला रहा आपको। और 3 सैमन डाउन, 4 में से 3 सैमन डाउन के सर्टिफिकेट भी गुजरात के। मोदी जी के सपनों का गुजरात को नागपुर में सबसे आगे देखा। ढोकला, थेपला, फाफड़ा, जलेबी का जलसा नागपुर के इस एस्टॉन हॉल में देखा। तो कल से वही सब खा रहा है मैं। डॉक्टर प्रभु को धवल का कान पकड़ते देखा और सभी यंग
हार्टेड स्माइलिंग बुजुर्गों को युवा शक्ति के साथ मिलते देखा। नागपुर टीम का एवं ISA का स्माइल मेडिटेशन और सेमिनार को कैसे ऑर्गेनाइज करने का चमत्कार सीखा। सभी को खुले मन से फिर एक बार गले मिलते हुए देखा। डॉक्टर मिंचुल को इतना मैच्योर्ड और इतना सीरियस पहली बार देखा। ये मेरी भावनाएं थी और शायद आप अगर इस सबसे सहमत हैं तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजा करके ISA के लिए समर्थन करें। स्माइल थैंक्स टू ISA एंड स्माइल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you, Balaji, for beautiful poem. Now we will start the quiz. It will be, I think, wonderful session for learn and fun. Quiz is based on anatomy, physiology, pathology, dietetics, and Sujok. We have 6 groups to play the quiz. The more front, this is wind. पवन जी आप जहां पे बैठे वो हीट, उसके पीछे वो हॉटनेस, वो सिर्फ नाम रखे हैं। यहाँ पे फ्रंट में ह्यूमिडिटी, उसके बाद जिज्ञासु भाई आपका वो यस ड्राइनेस, वो लास्ट में कोल्डनेस। ठीक है, मेरे बिल्कुल सामने फ्रंट में विंड, उसके पीछे हीट, उसके पीछे हॉटनेस। माय लेफ्ट साइड मोर फ्रंट ह्यूमिडिटी, उसके पीछे ड्राइनेस, उसके पीछे कोल्डनेस। ठीक है, each 6 groups will be asked individual question. Any one candidate on behalf of the group will give an answer. You decide who will. आप पहले तय करो आपको में से कौन आंसर देगा, कोई भी एक को आंसर देना है। There will be 10 round of questions. We will get 5 marks for right answer, 0 marks for pass the question, and -5 marks for wrong one. We have minus marking also. If unable to answer, pass the question. New group will be asked new questions. In the situation of same marks, ये जब क्विज खत्म हो जाएगी तो कोई भी 2 या 3 ग्रुप के सेम मार्क्स होंगे अगर, तो फॉर एग्जांपल विंड और ड्राइनेस दोनों के सेम मार्क आएंगे, तो दोनों ग्रुप में से एक कैंडिडेट स्टेज पर आएगा और के सेम मार्क आएंगे, तो दोनों ग्रुप में से एक कैंडिडेट स्टेज पर आएगा और दोनों ग्रुप में से कोई भी एक कैंडिडेट अपने अपने ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट करेगा। उसके ऊपर से वी विल डिसाइड द विनर। The aim of this quiz is learn and fun. So we expect honesty. No one will use his or her mobile instrument during this session. We have very short of time, so we will immediately start the quiz. Pancreas, C, both, D, none of. Pancreas. Wrong one, C, both. Coordinate. Which organ is having S a node? A, kidney, B, heart, C, lungs, D, brain. B, heart. Yes, it is sinoatrial node. Correct. Which part is called second heart? A, lungs. We will change the question. ये टेक्नोलॉजी की बात है। We will ask lastly new question.
bladder can hold a urine average up to A 350 to 400, B 400 to 450, C 450 to 500, D 500 to 600. D. Obviously को याद है गुजरात में भी correct. How many pairs of nerve in spinal cord? A 30, B 31, C 32, D 33. Wrong answers are negative marking. You can pass also if you don't want to answer. Pass to humidity? No. Question is asked 31 pair. There will be a new one. Which hormone influences gallbladder to secrete bile? A. CCK, B. leptin, C. glucagon, or somatostatin. Which one? 51. पास वीट वाले को पास कर दो, उसके पास एक आंसर, एक क्वेश्चन कम का। हाँ वीट करो, पास इट टू द वीट। Wrong one. This is CC क्या है? बोलो पास में आया वो भी नहीं हुआ। Next, ovum and sperm meet at A. fallopian tube, B. ovary, C. cervix, D. vagina. fallopian tube, कह रहे fallopian tube। Correct. Seminal fluid is produced by A. testicle, B. prostate, C. urinary bladder, D. kidney. They are saying prostate. Correct. Tympanic membrane is a part of A. ear, B. skin, C. brain, D. nose. Yes. A. This is actually eardrum. कान का पर्दा जो बोलते हैं. Hit no baba. Retinol is vitamin A, B, B, C, C, D, D. Anybody to answer? Huh? No. We have arranged limited questions. Hello, no faster questions. Correct. You pass the question. अरे लेट नहीं है. Either pass the question or give an answer. A option. A maximum. Correct. Humidity. How many thymic lobes are there? A1, B2, C3, D4. Front. Komal, jaldi. चलो. Yes, correct. B2. 230 lobes are there. Answer थोड़ा जल्दी देना. Which gland is responsible for calcium balance in the body? A. thyroid, B. pituitary, C. hypothalamus, D. parathyroid.
Correct. Tocopherol is the vitamin A, B3, B, C, C, E, D, B12. Wrong one. चलो जल्दी आगे आ जाओ. Niacin is vitamin A, B1, B, B3, C, B5, D, B7. Fast. Fast or answer? Confirm? Okay. Must be adrenal, C pituitary, D ovarian testis. अरे भैया जिसको बोलना है उसको बोले. B adrenal. Before C, D, B12. D, B12. Correct. आगे smallest bone in body is correct. Please get it. चलो जल्दी. Scapula is also known as A, thigh bone, B, shoulder blade, C, clavicle, D, sternum. Shoulder blade. Middle layer of skin is epidermis, dermis, hypodermis, or none of above. Hypodermis. This is dermis. Lunula is a part of A, nail, B, lungs, C, liver, D, heart. चलो जल्दी. जल्दी. पास और आंसर जल्दी. कंफर्म नेल. ओके करेक्ट. हमारे पास समय बहुत कम है. प्लीज पीछे. Treatment of sense organs are preferable in A, standard correspondence system, B, insect, C, innate, D, mimic. Please pass or answer. Please, be quick. Shravani say D, insect. This is innate. Or say animal head correspondence system. Animal head, very good senses. Buckbeat is suggested on which organ correspondence? A, liver, B, pancreas, C, lungs, D, heart. D, heart. चलो जल्दी आ गया. Only meridian having a poietal soul. How many types of energy equilibrium between these harmonized symmetrical meridians? 1, 2, 3, 4. जल्दी.
Pass or answer? Answer 4. D. Right. 4 probabilities are there. Left lung meridian deficient, right excessive. Left excessive, right deficient. Both deficient and both excessive. 4 probabilities. Mafia is a word used in Sujok 4. Cross constitution, wooden fight constitution, sagittal axis, vertical axis. जल्दी करो. Vertical axis is dominant. This is for cross constitution. उसको सुजुक में माफिया कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. Greater curvature is a shape of A. spleen, B. stomach, C. small intestine, D. large intestine. चलो जल्दी करो. बच्चे ने राइट आंसर दिया था. 12 is the right. 12 is right. ठीक है. भैया मैडम ने दिया था आंसर. ये व्यास मैडम ने आंसर दे दिया था. हेलो. हमारे पास क्लियरिफिकेशन के लिए समय नहीं है. प्लीज. हेलो. पास हुए हिट. पीछे पीछे हिट में. Alpha cells are found in A. liver, B. pancreas, C. skin, D. brain. Tick 1, 2. Pass or answer? Pass or answer? चलो जल्दी. कोई भी एक आंसर दो. कोई भी एक. ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप आप डिसाइड कर लो. कोई भी एक आंसर देगा. B. pancreas. Mitral valve is situated between left atrium and left ventricle, right atrium and right ventricle, left atrium and right atrium, right ventricle and left ventricle. किसकी बारी? उसकी है. चलो जल्दी करो. जल्दी. जुगाड़ लगा लो कोई भी, लेकिन जल्दी करो. पास हो रहे. गुड डिसीजन. चलो humidity. Most outer layer of meninges is biometer, durameter, osmometer, none of above. Pass or answer? Please pass or answer. जल्दी. A. pyometer. B. durameter. Gallbladder sends bile via hepatic duct, portal duct, gallbladder duct or common bile duct. Common bile duct. Common bile duct. CBD. Yes. भाई देखो ये गेम का इंटेंशन क्या है पता है? हेलो. एक्सक्यूज मी. ये गेम का इंटेंशन क्या है पता है आपको? है ना? आपका नॉलेज क्या है उसके ऊपर से हमें एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना है और अंडरस्टैंड करना. गूगल का नॉलेज जानने की जरूरत नहीं है ना? सो प्ले एथिकली. ठीक है. देन वी विल एंजॉय मोर. ओके. अदरवाइज वी कैन ओके जस्ट क्विज करने की हो गई. गिफ्ट लाया हूं, दे देते हैं, बात खत्म करते हैं. प्लीज. थैंक यू. कॉल बाय. Gestational word referred to menarche, pregnancy, menopause, menstrual cycle.
D. Pregnancy. Very true. A. Weak. Cerumen word referred to earwax, brain, seminal fluid, covering of spinal cord. Questions बहुत सरल भी नहीं है, ज्यादा कठिन भी नहीं है. ये वो लेवल के क्वेश्चन जो हम सब रेगुलर प्रैक्टिशनर है तो हमारे पास होने ही चाहिए. पास और आंसर. हेलो, पास और आंसर. हेलो. समय बहुत कम है, आप जल्दी करो. करेक्ट. Vitreous body word referred to pineal body, nervous system, eye or adrenal gland. चलो ओके, जल्दी करो. Which gland secretes calcitonin hormone? Pituitary, thyroid, pineal, hypothalamus. जल्दी, पास और आंसर. गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी. हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका है. प्लीज पास और आंसर. चलो जल्दी करो. ए पिट्यूटरी बोल रहे. रॉन्ग आंसर. चलो जल्दी आगे आगे. यहाँ पे ह्यूमिडिटी में. Which gland secretes luteinizing hormone? Hypothalamus, pineal, pituitary, ovary. क्या बोल रहे हो? Which gland secretes thymosin hormone? Thyroid, thymus, thyroid, pineal. चलो जल्दी. D. Thymus. Correct. Cephalalgia is pain in bone, head, chest, nerve. Head. D. Head. We have some more interesting questions, but हमारे पास समय नहीं है. हम लोगों को जाना है. So we are ending over here. फ्यूचर में कभी भी मौका मिला तो इसका भी इंटरेस्टिंग क्विज करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, अभी क्विज का रिजल्ट डिक्लेयर होना है और उसके बाद में अगर किसी के बीच में टाई होती है तो उनको और एक राउंड का क्वेश्चन पूछा जाएगा और फाइनल रिजल्ट बनेगा. और जो टीम जीतेगी उनके लिए क्या गिफ्ट्स वगैरह है वो ऑर्गेनाइजर ही बताएंगे. विंड टीम ने टोटल टोटल 20 मार्क्स 20 पॉइंट्स उनको मिले हैं और
उसमें से 3 आंसर गलत होने की वजह से 15 मार्क्स माइनस में गए हैं एंड दे गॉट 5 पॉइंट्स। हीट टीम को 25 पॉइंट्स मिले हैं, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 10 मार्क माइनस हुए, 15 पॉइंट्स उनको मिले हैं। हॉटनेस टीम ने 10 पॉइंट्स उनको मिले हैं और 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, 15 माइनस हुए तो उनको -5 मिले हैं। ह्यूमिडिटी को 15 पॉइंट्स मिले हैं और 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो -15 हो गए तो 0 पॉइंट्स मिले हैं। ड्राइनेस टीम को 30 पॉइंट्स मिले हैं, 1 क्वेश्चन गलत हुआ है, 5 मार्क्स गए हैं तो 25 पॉइंट्स मिले हैं। और कोल्डनेस टीम को 20 पॉइंट्स मिले हैं, 3 क्वेश्चन गलत, 15 माइनस, ड्राइनेस टीम इज द विनर। और चलिए देखिए, इसके पीछे का इंटेंशन ऐसा था, वी हैव चेक्ड अवर नॉलेज, वी हैव चेक्ड अवर इंफॉर्मेशन and we have checked our sportsmanship. Okay, so next time we will be having a more sportsmanship. और इसको क्या तपन जी क्या गिफ्ट देना है? तो सबको देना है। ड्राइनेस की पूरी टीम स्टेज पर आ जाए और ड्राइनेस वाले ही आइएगा, आजू बाजू के तो वो भूल रही है। दादा अरे ये Now please take your seats. Now, I would. May I please request Ashok Kumar Kothari on the dais, please. Asha Sarda on the dais, please. Sharda ji Rathi, Shubha ji Maheshwari, Dilip Chauhan, please be on the dais. All the participants are please requested to take your seats. See, we have, excuse me, Ashish, please take your seats. ISN Nagpur team tirelessly worked to make this event successful. And now it is a closing time. At that time, our behavior means a lot for them. Is it or not? Yes. Please take your seats. Seema ji, may I please request you to take the seats? बाहर जो लोग भी हैं जो अभी जा नहीं रहे हैं, उनको मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर आ जाए। See, closing event is always for the thanking the host, है ना?
So now it is just a time, another 5-10 minutes. Please have a patience. Sharda ji, Shubha ji, Dr. Minchul, Ashok ji, please come on the dais. Chauhan ji, आशा जी निकल रहे हैं. आई होप कि आप सभी लोगों ने 2 दिवस का यह सुजोग क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर की 10th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हमने ये जो एक छोटा सा प्रयास किया है, उनको आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा. ये 10 साल की जो यात्रा है, इट इज नॉट अ जर्नी ऑफ अ पर्सन, इट इज अ जर्नी ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन. और उसके अंदर when we talk about organization, the contribution from each and every member is very important. और मैं आप सभी लोगों को ये सोविनियर मिला क्या? All of you got this? इस सोविनियर के अंदर एक आर्टिकल है 10th पेज और 9th पेज के ऊपर, जिसमें आशा जी और शारदा जी ने 10 वर्ष के उपलक्ष्यों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं. पेज नंबर 11 के ऊपर एक इमेज है जो ISA की और सुजोग क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर की 1st एनिवर्सरी की इमेज है. ये इमेज R&D सेंटर के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम लोकल लेवल पर किया गया था, उसकी इमेज है. और आज हम यहाँ पर एक अच्छे खासे एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हैं, अपने बहुत सारे विषयों पर चर्चा करी. दैट इज शोइंग अवर ग्रोथ साइकिल. और जैसे मैंने मेरे इनॉग्रेल टाइम पर जब मैं बात कर रहा था तब बताया था कि 20th ईयर की इवेंट मैं चाहता हूं कि वापस उसी जगह पर हो, बट वहां पर अपना प्रीमाइसिस नया हो, वहां पर अपना इंस्टीट्यूशन नया हो. जो सुविधा आज हमें यहाँ मिल रही है, ऐसी ही या इससे भी बढ़कर सुविधा वहां पर हो. इसी विजन के साथ हम अगले 10 साल का कार्यानुभव शुरू करने को जा रहे हैं. इस मौके पर मैं ISA नागपुर की पूरी टीम, शुभा जी महेश्वरी, शारदा राठी आंटी, आशा आंटी, जिग्नेश भाई जो आज हमारे साथ नहीं है बट ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ इनिशिएशन, दिलीप जी, उसके अलावा वंदना तिवारी जी, नेहा पाटिल जी, शोभा चांडक जी, जयश्री पटेल, नीना मोदी, रचना अग्रवाल, नीतू अग्रवाल, वंदना व्यास, ज्ञानकला सारड़ा, सरोज सावंत, उज्जवल अग्रवाल, मनीषा कारमोरे, प्रिया महेश्वरी, रीतू जवर, अनामिका मालपानी, मीना बुल्ले, दिलीप चौहान, ये सभी लोगों का मनपूर्वक धन्यवाद करता हूँ. उनके बिना ये 10 साल की यात्रा संभव नहीं. मुझे बराबर याद है वो दिन 1 अगस्त 2013 जब मैं नागपुर में आया था और मुझे सबसे पहले आशा आंटी ने बताया था कि कौन सी जगह पर हम R&D सेंटर करने वाले हैं. अनफॉर्चुनेटली उस दिन वहां पर लाइट नहीं थी और जो सेंटर आपने देखा वो एक बंगलो था और बंगलो के अंदर सब फर्नीचर उनका पड़ा हुआ था, लाइट थी नहीं, उसके ऊपर सफेद चद्दरें बिछाई हुई थी. इट वॉज लिटरली लाइक सम हॉरर सीन विच वी हैव सीन बिफोर. पहले दिन तो मेरा निवास आशा आंटी के घर था, दूसरे दिन से मैं उधर रहने वाला था क्योंकि वहां का काम शुरू करना था. और 10 साल के पहले वो काम की रोड उतना डेवलप भी नहीं हुआ था, पानी ढूंढने के लिए 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ता था. तो लिटरली पहले कुछ दिन मुझे ऐसा लगता था कि ये कैसे संभव होगा.
बट फॉर योर सरप्राइज 1 अगस्त से 12 अक्टूबर यानी तकरीबन 2-2.5 महीने के समय के अंदर वो पूरा घर हमने रिनोवेट किया, रिक्वायरमेंट के अनुसार रीडिजाइन किया और उनको एक रेसिडेंस में से एक रिसर्च सेंटर के अंदर कन्वर्ट किया। और तब से लेकर आज तक वहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं जिनका एक डिटेल आर्टिकल भी ये सोवेनियर के अंदर है। तो ये जर्नी नागपुर टीम का सक्सेस है, ISA इंडिया का सक्सेस है, ISA ग्लोबल का सक्सेस है और आपका और मेरा हम सबका सक्सेस है। इस सक्सेस के सभी लोग भागीदार हैं। इस उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले आदरणीय शारदा जी को विनती करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए अपने विचार प्रस्तुत करें। 10 वर्ष की उनकी यात्रा में उन्होंने क्या महसूस किया, उनके सहज भाव क्या रहे, अगले 10 साल के लिए उनके भाव क्या है और आज के ये कार्यक्रम के बारे में उनके भाव क्या है वो व्यक्त करेंगे। शारदा जी रहते हैं। Good evening, everybody. Pinchu sir, Kothari ji, Shubha जी, चौहान जी और उपस्थित मेरी नागपुर प्यारी सी नागपुर टीम और यहाँ एकत्रित मेरे सभी सुजोग भाई बहन, इन सबका मैं तहे दिल से आभार भी प्रकट करती हूँ और कि आप लोग ने आके यहाँ बहुत अच्छा सहयोग हम लोग को दिया है और आगे भी जब नागपुर में कोई भी कार्यक्रम हो या कुछ भी हो तो आप लोग इसी तरह अपना पूरा सहयोग देंगे। जैसे कि धवल ने बोला कि जब ये सेंटर स्टार्ट भी नहीं हुआ था 2003 लास्ट प्रोफेसर का लेक्चर था। आशा दीदी को और मेरे को बुला के प्रोफेसर बोले कि नागपुर में कुछ होने वाला है बहुत अच्छा और बहुत सारे फॉरेनर्स वहां आने वाले हैं। शारदा और आशा, मैं तुम दोनों को बोलता हूँ कि कुछ तो भी बहुत अच्छा होने वाला। हम लोग तो बस प्रोफेसर बोल देते थे, हमको तो एक बोलते ना अंधा विश्वास, प्रोफेसर ने बोल दिया अरे वो चीज होनी है, ये हम लोग को था। मास्टर बोले 100%। उसी हिसाब से मैं आशा दीदी बड़े खुश हुए कि चलो नागपुर को प्रोफेसर ने बहुत पसंद किया है। जब यहाँ पिंचू सर, जिग्नेश जी और धवल ये लोग ने आके ये सेंटर के बारे में हम लोग की बातचीत हुई तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मास्टर ने जो चीज बोली है वो 100% देखो सही हुई है। इसका मतलब मास्टर आज भी यहाँ है, मौजूद है और मैं तो हर चीज का एहसास करती हूँ कि मास्टर आज भी है। और पिछले 10 सालों में पिंचू सर के अथक प्रयास से साथ ही साथ में धवल, मेरे सामने तो बच्चा ही है, मैं धवल जी बोलूंगी तो धवल जी का अथक प्रयास ही नहीं, रातों की नींद भी नहीं लेते हैं वो कई बार जब ऐसे काम होते हैं तो। साथ में चौहान जी, शुभा जी, माहेश्वरी और साथ में जब कोठारी जी को बुलाओ तो हमारे साथ सहयोग देने के लिए भी तैयार रहते हैं। और सभी के प्रयास से आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि नागपुर में जब सुजोग स्टार्ट किया था तो मैं किसी को जानती नहीं थी। 2001 में नागपुर आई
मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं सोचती थी मैं कैसे यहाँ चालू करूंगी। मुंबई में तो मेरा बहुत अच्छा खासा चलता था, मैं खाली 2 घंटा प्रैक्टिस करती थी, उसमें ही मुझे कितना अच्छा था। अब यहाँ कौन मेरा करेगा। बट सहयोग ऐसा हुआ कि आशा दीदी फर्स्ट स्टूडेंट मुझे मिली और उन्हें मिले हुए फायदे के कारण उन्होंने पूरी तरह से समर्पित हो गए वो। और आप लोगों को सबको मालूम ही है कि उन्होंने मतलब क्या किया है। साथ ही साथ आज तक जो 10 साल कंप्लीट हुए बहुत अच्छे से हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि आगे के जो 10 साल हो ये आप लोगों के सहयोग से। अभी ये हॉल में इतने लोग दिख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप लोगों के भी कई स्टूडेंट यहाँ दिखने चाहिए क्योंकि टीटीसी काफी लोगों ने किया है और बहुत बड़े पैमाने पे हम सब काम करें ऑल ओवर इंडिया वाले नेशनल लेवल पे और हम मिलजुल के काम करें। कंटिन्यू धवल के साथ कांटेक्ट में रहिए, धवल भी आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहेगा और इस सभी के प्रयास से मिलजुल के काम और अच्छे से अच्छा होगा आगे के 10 सालों में, जो कि धवल का कहना है। और अभी ये 2 दिन जो मेरे गए हैं वो मैं अवर्णनीय है वो, मतलब मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। इतने सुंदर ये 2 दिन है। आज का दिन तो मेरे लिए समझ लो सुवर्ण दिन रहा क्योंकि स्माइल मेडिटेशन का जो शुरुआत मैं चाह रही थी वो आज शुरुआत हुई और मिंटू सर आगे स्माइल मेडिटेशन का बहुत कुछ करने वाले हैं। ये मुझे उनकी सब बातों में से समझ में आया। तो मुझे खैर स्माइल मेडिटेशन तो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आज मैं जो मतलब बोलती हूँ ना, आज तो मुझे आंसू आ गए कि जो प्रयास मैं कर रही थी, जो चीजें मैं सोच रही थी मुझे मिल गई। तो आगे के 10 साल और कितने सुंदर जाने वाले हैं। बस इसी तरह मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया, आप लोगों का भी सबका डायस पे बैठे सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू शारदा जी। मैं विनती करना चाहूँगा IAS से नागपुर के सेक्रेटरी दिलीप चौहान जी को आकर वो अपने विचार व्यक्त करें। दिलीप चौहान जी। मंच पर उपस्थित डॉक्टर मुचुल पाल, अशोक जी कोठारी सर, शारदा मैम, शुभा मैम, आज हमने प्रयास किया है 10 साल के बाद इतने बड़े प्रोग्राम को ये करने का, जहां हम सेंटर से बाहर कर रहे हैं। SIC का हमने किया था, लेकिन ये हमारा नेशनल प्रोग्राम हम कर रहे हैं जो इस सेंटर से बाहर है। जो हमारे बारे में कहा गया नागपुर की टीम के बारे में, वो सही में ऐसा कि इन्होंने इतना प्रयास किया, प्रयत्न किया कि इसे 100% सक्सेसफुल करें। उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, हमें हमारे सहयोगी कुछ एडवर्टाइजर्स हैं, कुछ हमारे पेशेंट्स हैं, कुछ हमारे जो भी पहचान के हैं, उन्होंने भी हमें इसमें यहाँ तक लाने के लिए बहुत बहुत मदद की है। तो मैं सभी की ओर से और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जितने भी थेरापिस्ट हैं उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और हमें ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा उसकी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। मैं विनती करूंगा शुभा जी से कि वो आकर अपने विचार व्यक्त करें। शुभा जी। I think we all agree
this was a wonderful show. Thank you so much, Prabhaji, for making this possible. Minchul sir, ever grateful to you for continuously upgrading us, raising our consciousness. And thank you all for coming at such a short duration and making this a huge success. Thank you. It's been a wonderful journey, and I think I can only say we have a lot of responsibility, all of us, and many more miles to go before we sleep. Thank you so much. अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अशोक जी से कि यह कार्यक्रम के बारे में खास करके उनके क्या विचार हैं। वैसे उनको एक दिन ही ये कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला है, तो ये कार्यक्रम और ISA की जो गतिविधि है उनके बारे में उनके क्या विचार हैं वो आकर बताएं। अशोक। Our global president, Dr. Minchul Park, organizing secretary Dhawan ji, Shubha ji, Nagpur president, शारदा जी, दिलीप जी और मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, दो बातें हैं जरूरी। पहले बात बाद में करेंगे कि ये शो कैसा रहा, क्या रहा, नॉन प्रिजुडिस तरीके से बात करेंगे। हालांकि बीइंग पार्ट ऑफ फैमिली नॉन प्रिजुडिस होना बहुत मुश्किल है। अपनी फैमिली की कौन बुराई करता है। लेकिन सबसे पहले ये बात करना चाहूंगा, ये 10 साल की जो जर्नी हुई है उसमें रोलर कोस्टर होता ही है ना। हर जर्नी कोई सीधी रोड थोड़ी होती है। इट इज नॉट ए स्ट्रेट रोड। वी हैव लॉट ऑफ पिट्स, लॉट ऑफ फॉल्स, रोलर कोस्टर जर्नी, बट वी अचीव दैट सक्सेसफुली, कीपिंग अवर एम इन फोकस। हमारा एम के साथ फोकस किया और हमने इस अचीव को जर्नी किया, और इट हैज बीन वेरी फैंटास्टिक एंड प्लेजरफुल जर्नी। इसमें कोई दो राय नहीं। जर्नी का जब मजा ही जब है, जब थोड़ा ऊंचा हो, थोड़ा नीचा हो, कभी पहाड़ हो, कभी नदी हो, कभी पहाड़, सब तरह की जर्नी है। लेकिन आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द सेंटर। आई एम हियर फॉर द 10th एनिवर्सरी एंड मे बी आई एम देयर फॉर 20th एनिवर्सरी। I feel really blessed. I was no bigger personality, but because of blessing of Professor Kanju, I feel blessed that I have the opportunity to work with Professor Kanju. I had the opportunity to work with Dr. Minchul Park. I had the opportunity to work with all of you. ये 10 साल की जर्नी बहुत अच्छी गई उसमें, लेकिन ये जर्नी अच्छी गई, अच्छी बात है, लेकिन इट कुड हैव बीन बेटर। ये और अच्छी होनी चाहिए थी, और अच्छी हो सकती थी। लेकिन ये जर्नी की बात बाद में करेंगे, तो सबसे बड़ी अप्रिशिएबल बात है टीम नागपुर। 2003 से लेके जब से सेंटर खुला, 2013 से लेके 23 तक, जिस तरीके से टीम नागपुर, और वो भी नारी शक्ति, पूरी टीम नागपुर में तो नारी शक्ति है। एक बेचारा दिलीप जी चौहान करते कहीं से, ये तो सारी नारी शक्ति का कमाल है। और जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से इन्होंने काम किया और सारे कामों को अंजाम दिया। पिछले 10 साल में बहुत सारे प्रोग्राम हुए। ये अकेला प्रोग्राम नहीं है, ये तो 10th एनिवर्सरी का प्रोग्राम है। आपने दूसरे प्रोग्राम भी अटेंड किए। ऑल प्रोग्राम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड सो सक्सेसफुली विद ड्यू केयर एंड लॉट ऑफ लव एंड स्पाइस। सबसे बड़ी बात है फैंटास्टिक। तो नागपुर टीम के लिए सबसे बड़ी आपकी एप्रिसिएशन और उनको ड्यू एक्नॉलेजमेंट हमारी तरफ से। बात करूं जिसके बिना ये शो होना संभव ही नहीं था। हमारे सारे ऑर्गन बॉडी के स्वस्थ हो, सारे काम करते हो, और रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो क्या लगता है आपको? इफ यू डोंट हैव स्पाइन, व्हाट डू यू थिंक? एवरीथिंग इज फाइन, वी हैव लीवर, ऑर्गन, एवरीथिंग इज फाइन, बट यू डोंट हैव स्पाइन, सो व्हाट डू यू थिंक? सो मुझे नाम लेने की जरूरत है, आप समझते हैं? कोई जरूरत समझते हैं? मेरा वासी बनता है, मैं नजर है हमको कठिन चीज में काम करते हैं।
सूत्रधार, असली काम करने वाला परफॉर्मर, असली लीडर, असली वर्कर, असली वॉलंटियर, जिसको कहते हैं वन इन ऑल, वो कोई अगर व्यक्ति है तो खुले दिल से मैं कहता हूँ धन्यवाद। उसके बिना ये ऑर्गेनाइजेशन आज इस तरीके से देख रहे हैं, ये इस ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोग्राम की बात करूं तो इट इज क्लास फ्रॉम द एम्बियंस, class from the point of view of the organization, setup, food, everything, and the most important, content of the workshop. It has been much better than the previous. Quality of content, जो भी lectures हुए, guest accessories हुई, लोगों ने अपनी talks दी, including myself also. मेरी भी बात कर लेता हूँ। कहने का मतलब है, from all those point of view, it has been a wonderful show from, और मैं तो ठीक है मैं एक दिन लेट आया, लेकिन लेट आया तो ट्रेलर देखने के लिए पूरी फिल्म देखना जरूरी नहीं है, ट्रेलर से पूरी फिल्म की कहानी मालूम पड़ती है। और लेट भी कहा है, लेकिन मौके पर आया कल शाम को आपके सामने आया कि आया सारा क्या आपके सामने एंजॉयमेंट किया। सो इट वॉज फुल ऑफ फन एंड फ्लेवर। फन भी था, एजुकेशन भी थी, एकेडमिक्स भी था, अरेंजमेंट भी था, कैरिंग भी था, लव भी था, स्माइल भी था। क्या बचा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक चीज बची। मैंने बोला ना, ऐसा नहीं है कि सारी चीज अच्छी है। I have expected much more presence for this program. Even the time period was short, but it is no excuse. We are family. हमारी फैमिली में अगर शादी हो, सेरेमनी हो, फंक्शन हो, शॉर्ट नोटिस में हम जाते हैं या नहीं जाते? जाते भी जाते। तो सुजोग is our family. Sujok is more than family even. So therefore, in spite of all of excuses, our presence should be much more. Because it is 10th anniversary, it is a very important milestone in the history of our center, R&D center. तो मेरी एक जो गिला लगे, जो सबसे पहले मुझे कल लगा, मैं जब आया, yes, good presence, लेकिन जब मैंने धीरे से पूछा, तो उन्होंने कहा सर आज तो सारे गेस्ट भी हैं दूसरे, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील हुआ। बट एनीवेज, नंबर डजंट मैटर मच, अगर क्वालिटी अच्छी है तो ठीक है, बट आई वॉन्ट दैट नंबर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। We should carry this message that whenever our ISA is organizing any program, our strength should be shown. It should be felt by other people also. The other communities should feel that it is a big show. कितना भी अच्छा शो हो, अगर क्वांटिटी नहीं है, उसमें मेजॉरिटी नहीं है, उसमें मास नहीं है, तो उसकी स्ट्रेंथ ऐसी अच्छी लगती नहीं है। और when we are in the process of getting recognition with the government, strength and our पॉपुलेशन मैटर्स। तो आप लोगों को हो सकता है आपके कनेक्शन में भी बहुत से लोग हो, बहुत सारी आपके कनेक्टेड लोग हो, तो उनको आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के साथ में हम मोर इंटरेक्टिव बने, मोर खाली लिसनर नहीं, सुने, शेयर करें, लर्न एंड शेयर। ये सुजोग का मूल मंत्र होना चाहिए। हम सीखें, शेयर करें, आप सीखें, मेरे से शेयर करें। तो लर्न एंड शेयर, ये स्पिरिट हमारे सुजोग में और बढ़नी चाहिए, हमारी पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। और एट द सेम टाइम वी शुड गिव मोर प्रेफरेंस टू ISA एंड वी शुड कंसिडर दैट ISA इज our organization. It is not your, it is not mine, it is our organization and we should try our best to make it more strong in the times of come. और I hope धवल जी ने तो 20वीं एनिवर्सरी के लिए बात कहा, मैं कोशिश करूंगा कि मनाऊं कि वी आल्सो सेलिब्रेट 15th एनिवर्सरी। वी ट्राई तो 15वीं एनिवर्सरी में मुझे कम से कम आज से 10 गुना लोग वहां से दिखने चाहिए। तो आप सब लोग टीचर हैं, आगे लोग टीचर्स है ना, तो आप टीचर्स बनाएंगे, अपने स्टूडेंट बनाएंगे, वो स्टूडेंट्स आएंगे। आई नीड मच मोर प्रेजेंस इन दी 15th एनिवर्सरी। सो थैंक यू वेरी मच। I love you all and you are my inspirations. Actually आपकी वजह से मुझे एनर्जी मिलती है। लोग पूछते हैं कहाँ से एनर्जी आती है, कहाँ से आती है? आपको पता है कि मैं आपसे चुरा लेता हूँ, तो ये एनर्जी आपकी इधर से आती है। So thank you so much. Thank you Dhawan. Really I am really grateful and thankful to you for putting all your efforts, all your mind, body and soul in development of Sujok and ISA. And thank you Dr. Minchun for your visionary leadership. Thank you everyone. थैंक यू अशोक जी। बट निश्चित रूप से
मैं ये कर पा रहा हूँ, उसके पीछे कोई और भी जवाबदार है। एंड दिस क्रेडिट गोज टू माय वाइफ कोमल। हर रोज रात को ऑफिस में बैठना अलाउ हर एक वाइफ नहीं कर सकती है। सो थैंक्स टू कोमल फॉर बीइंग माय जॉइंट पार्टनर। कंक्लूडिंग स्पीच दे उससे पहले मैं आप लोगों को विनती करता हूँ, अगर आप में से कोई आकर अपने कोई व्यूज शेयर करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक फ्यू वर्ड्स ऑन दिस ओकेशन, यू आर वेलकम। एनीबडी? नमस्कार। मुझे धवल जी ने यहाँ कुछ इन्वाइट किया है और मेरा दिल बहुत खुशनुमा है और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है आईए से कितना आगे जा रहा है। नागपुर में हमारे आईएसी कमेटी, हमारे आईएसी मेंबर, हमारे लेक्चरर, हमारे स्टूडेंट, और मैं कुछ 2-3 शब्द कहूँगा कि धवल जी ने नागपुर में आईएसी इंडिया की जो नींव रखी है, हमारी जो माता जी हैं शारदा राठी जी, इनका बोलने के लिए कोई शब्द नहीं कि मैं क्या कहूँ। हमारे जो कोठारी जी है, एक हमारी आईएसी की नींव भी है और इन्होंने बहुत सारे कुछ ऐसे कुछ लेक्चर बनाए हैं, कुछ डॉक्टर बनाए हैं जो इस सुजोग को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। और मैं हमारे मृत्युंजय सर जी के लिए एक मैं स्वागत नहीं कर सकता हूँ, मेरे में कोई शब्द नहीं है, कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन आईएसी इंडिया में हमारे यहाँ आकर मृत्युंजय जी ने जो हम लोगों को इतना मान सम्मान, इतना लेक्चर दिया है और इतना ऐसे डॉक्टर बनाए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि तय दिल से हम कुछ दे तो सकते नहीं है, लेकिन तालियों से स्वागत होना चाहिए। जवान जी के लिए भी एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, क्योंकि नींव के एक पत्थर सदियों तक चलते रहते हैं। हमारी शोभा जी के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। आप सबों के लिए एक जबरदस्त खुद का सम्मान है। मेरा दिल ये 2 दिनों में इतना खुश नसीब हूँ जो मैं यहाँ आया हूँ, और धवल जी ने मुझे यहाँ बुलाया है तो मेरा दिल अंदर से खुश भी है और मैं अंदर से रो भी रहा हूँ। तो मेरी एक आदत है, क्योंकि हम जब एंजॉय करते हैं तो सभी जाते टाइम सभी का दिल दर्द करता है, कुछ अंदर से कुछ रुआसी आत्माएं हमारी निकलती है। तो मैं 2 शब्द एक शहर में बोलना चाहूँगा कि हमारे आईएसी की टीम क्या काम कर रही देश के लिए। कुछ ऐसा मरना तो है, ये सत्य है कि कोई अमृत खा के नहीं आया है, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी में मरने के बाद भी कोई याद करे। तो मैं हमारे धवल जी के बारे में एक शेर कहूंगा और हमारे जो स्टेज पे बैठे हुए सभी मेंबर के बारे में मैं कहूंगा कि जिंदगी है एक तूफान। क्या है? जिंदगी है एक तूफान, न तुम शांत बनकर जियो। जिंदगी है एक तूफान, न तुम शांत बनकर जियो। जिंदगी है एक संघर्ष, न तुम मौन बनकर जियो। जिंदगी है एक आग, जिंदगी है एक आग, न तुम राख बनकर जियो। तुम जिंदगी में कुछ काम ऐसा करो कि मरने के बाद भी जियो।
बातों की याद आती है। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। आप जब सब चले जाओगे तो हम सब एक दूसरे के प्यार मोहब्बत में जीने की अब तमन्ना नहीं, जीने की अब तमन्ना नहीं, दर्द की भी कोई सीमा नहीं। मिंजू जी का प्यार ऐसे मिला जैसे दिया बाती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो केवल और केवल मेरा कर्तव्य है, वही कर रहा हूँ। तो मुझे अप्रिशिएट करने की बजाय आइए से आपको जो काम करना दिख रहा है उसके बारे में आपके कुछ कहना चाहते हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ सुधार के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, तो वो हमें और आपको भविष्य में ज्यादा उपयोगी होगा। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे अप्रिशिएट करना ठीक है, आपने किया और मैं आदरपूर्वक उनका स्वीकार करता हूँ, बट मेरी वाह करने की जगह आईएसए के कार्य को हम सम्मानित करें, ये ज्यादा उचित रहेगा। To express my thoughts on ISA and today's gathering. I should speak in Hindi because I am not much comfortable in English. So जब मैं यहाँ पे आने वाली थी मेरा कुछ भी फिक्स नहीं था एंड मेरे जो मेंटर थे उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप एक बार आओ, आप देखो कितने सारे लोग वहाँ पे आते हैं, आपको नॉलेज मिलेगा। एंड आई जस्ट केम हियर। मैंने यहाँ पे आके देखा, जब मैं अहमदाबाद में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सुजोग की दुनिया छोटी है, पर जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे लोग आ रहे हैं और कहाँ से और कैसी कैसी जगह से आ रहे हैं, वो देख के मुझे मतलब इतना सारा इंस्पायरेशन मिला। एंड पहले से मेरे मन में एक ऐसा था कि मुझे कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, क्योंकि पैसे के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। बट जब मैं आईएसए के साथ में कनेक्टेड हुई तो मुझे पता चला कि आईएसए एक ऐसी चीज़ है कि आप एक भी रुपया खर्चा बगैर भी लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हो। वो एक ऐसी चीज़ है कि आप लाखों रुपया खर्चा करके भी नहीं खरीद सकते। आप लोगों को उनकी हेल्थ दे सकते हो, जो लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं फिर भी वो ठीक नहीं होते हैं। लेकिन ये सुजोग ने जो नॉलेज मुझे दिया है उसने मुझे काफ़ी सारे लोगों को ठीक करने में हेल्प किए। मैं अभी छोटी हूँ बड़ी हूँ ये तो नहीं कहूँगी, बट मैं अभी एक मुकाम पे हूँ जहाँ से मुझे अभी और आगे बढ़ना है। आप लोगों का नॉलेज देके मुझे ऐसा ज़रूर महसूस हुआ कि आपने कितना मेहनत किया है। अशोक सर की वर्कशॉप में वो कभी डांटते थे, टोकते थे, तो पर मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो हमें ठीक करने के लिए, मुझे इम्प्रूव करने के लिए वो हमें ये कहते थे। आज हम हाई मेडिटेशन करने गए तो जो ये भूपिंदर मैम थे वो जिस तरीके से झूम झूम के कर रहे थे, तो मतलब ये हुआ कि खुद के साथ कनेक्ट होने के लिए मुझे ये देखने की जरूरत नहीं कि मेरा बाजू वाला मेरी ओर देख रहा है कि नहीं, मुझे खुद को फील करना है। एग्जिस्टेंस के बारे में जब उन्होंने समझा, इट वॉज रियली गुड एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ मिंचू सर इट रियली इम्प्रेस मी। लाइक मेरे पीछे मेरी फ्रेंड थी एंड शी वॉज नॉट मूविंग मच एंड वो फटाक से उसके बाजू में बैठ गए पलाटी लगा के एंड उसको समझाने लगे। तो मतलब ये भी एक सीखने को मिला कि आईएसए प्रैक्टिशनर को कैसा होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। नॉलेज मिलने से उसको बहुत आगे, मतलब ऐसा कोई एटीट्यूड भी नहीं रखना चाहिए, कॉमन पीपल को कनेक्ट कर पाए वैसा बनना चाहिए। सीमा मैम जो मेरे मेंटर हैं उन्होंने मुझे इंस्पायर किया यहाँ पे आने के लिए एंड एवरीथिंग इज रियली नाइस एंड आप सब लोगों ने बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया। थैंक यू सो मच। एंड जो कोठारी सर का रीज़न है कि 15th एनिवर्सरी पे हम लोग इसके मतलब मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब 1000 पीपल होने चाहिए। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू
achieve to that direction and to that goal. Thank you so much. Malik uncle is one of the oldest in terms of his experience also and in terms of his age also. Thank you very much, Dhavalji. It is indeed a great pleasure for me to attend this seminar. I joined Suzhou in 2001 and attended the first seminar of Professor Park in Delhi, and that was level 1. And since then, I have never looked back. So all this